costume, right? And it's actually really nice. They actually have modernized versions as well. I think you can look good in it. What about you, Tasteless? I'd probably say Hanbok if I had to guess. Oh, come on. You know what? I'm going to guess that he's going to come in as tteokbokki, which is spicy rice cake. He's going to just be dressed as a bowl of spicy rice. What if we're all He's going to have a bowl all around him like a UFO. Right? It's actually really nice. He's going to have someone pouring the sauce and stirring the bowl, and they're going to cook some tteokbokki over on stage. This is really elaborate. You know what? I'm going to guess that he's going to come in. He's done crazier things. He's actually going to dress up like an He's going to just be dressed as a bowl of What if we're all we still have the traditional markets out here. There's going to be a real plot twist here, and he comes out dressed as a pro gamer, and we're going to go, oh no, no, we weren't ready for that. The New Jerseys do look sick, though. The jerseys do look sick. They are a costume in and of themselves. Well, ladies and gentlemen, that's enough from us for now. We're getting ready for the first match of day 2 here at VCT Pacific. It's going to be Paper Rex going up against Detonation Focus Me. What's up, guys? Welcome back to another stream, and we are live with VCT Pacific Watch Party. क्या हाल है? क्या हाल है? Welcome. Good afternoon, morning, evening, night, जो भी तुम्हारा है. मेरा तो गुड नाइट हुआ नहीं है, तो मेरा सब कुछ ही है फिलहाल. आज हम नहीं सोए गाइस. आज हम मैच देख के आराम से रात में सोएंगे. मिरेकल चाचा, मिरेकल तो मतलब देखो, मैंने बोला था आज आऊंगा मैं, आज आऊंगा तो आ गया मैं. वो कल वो दिक्कत हो गया ना यार. परसों क्या ट्रैवल करके आए थे, लंबा दिन था, ऊपर से ट्रैवलिंग, ऊपर से उस दिन रात में स्ट्रीम हो गया, तो और टायरिंग. कल हालत टाइट था, फिर कल एकदम ही नहीं हो पाया. But we are back. क्या हाल है भाई? रात भर स्ट्रीम देखा फिर से, क्या बात है? क्या तुम ही लोग हो गए? ओए होए, ये एस वाला साउंड अलग ही है. एंट्रेंस हो रहा है. और गाइस हमारे साथ डिस्कॉर्ड पे गेस करो कौन है. एक हिंट दे सकता हूं मैं, बहुत गंदा प्लेयर है. बताओ गाइस कौन है? क्या इस बार कुछ स्पेशल एंट्री नहीं दिया यार? क्या स्पेशल एंट्री चाहिए अगर को अभी इसमें? नहीं, कुछ ना कुछ तो करता है ना ये आते टाइम. काफी टाइम बाद वैलोरेंट का ऑफिशियल मैच नहीं, ज़रफ भी नहीं. अभी तो पहचान लिया होगा आवाज से. क्यों तू ये नहीं देखा था क्या? देखा था, बस एक ही मैच देखा था पूरा, वो भी तेरे स्ट्रीम पे. अच्छा. Thank you for being my dedicated audience, Kai Sopi. KO 2 kill main Kai. Yes, you are correct. वाह, PRX का मैच है रे. हाँ बे, मजा आने वाला है बे. मजा आएगा यार. Guys, आज का prediction. PRX 2-0. PRX 2-0. भाई, Paper X का 4 second और XKF का पैरो भाई सेम लगते हैं बे एकदम. एकदम. दोनों मारते भी कुत्ता है. ये देखो कैसा बेचारा एकदम ये बन के आया है. ये भी भूत बना देता है. ऐसा लग रहा है स्कूल में अटेंडेंस ले रहा था वैसा. मैं यहाँ कमीन हाथ पीछे रख के आया था एकदम. और वेलकम बैक #2 किल गंदा. बंगाई भी इसमें ही है ना, PRX में ही है ना? हाँ, उसी ने तो एंट्री मारी पहली. अच्छा, वही तो मैं बोला कि उसने कुछ किया कैसे नहीं. एक बार देख रहा था मैं, आइसक्रीम वाला बन गया था. हाँ ना, तभी तो मैं वही बोला. हर बार कुछ ना कुछ रहता है. चैट में स्कोरबोर्ड डाल, देखते हैं चैट को क्या चाहिए.
That's right, and we do have the possibility of some pretty crazy stuff. Obviously, रे दूसरी टीम का नाम ही नहीं सुना होगा तो एक ही होगा ना ये तो. Possibly a new agent. I would welcome that. The question is, you know, have they come up with something like that here for Paper Rex? And if they have that, is this the appropriate time to use it? I mean, again, I feel like it would. Granted, this is Poll also maybe one of the teams that you don't have that good of a read on because you don't know what they're going to have workshop coming out the backside of lock-in. Obviously, you won't have been scrimming them because you know they're your first-round opponent. So, yeah, I'm curious to see what this is going to lead to. A little bit of a spoiler there on the map. Yeah, but, sometimes we get a little sneak peek. All right. Spoiler alert. We'll get into that in a little bit. This is how we know who in chat is high rank or not. If you're fast enough to catch on your screens, we know that you've got some good map awareness. अरे ऐसे कौन लिखता है? ये क्या बोले? I'm not even gonna have to glance at the screen almost upside down and see what map that is. भाई वैसा है. Yeah. भाई पोल में रहना चाहिए था first match. ये heads आया तो तू जीता, tails आया तो मैं आ रहा. उल्टा बोल दिया मतलब heads आया तो मैं जीता, tails आया तो तू आ रहा. Cool, man. Yeah, it's been very fancy. So exciting to have these two teams come out here again. दोनों साइड मेरे को हार. Everybody in Asia is now finally together. This is the time for them to break themselves in on this stage. रात में खेलोगे? रात में डिपेंड करेगा आज का दिन कितना लंबा रहता है, कितनी नींद आती है उस पर डिपेंड करेगा. कितना मैचेस है? 3. बेस्ट ऑफ 3 है ना शायद ये तो. दो है ना पर तो लंबा चलेगा. For that 6th place for the playoffs, and first off, it's going to be Paper Rex taking out the Icebox that Detonation Focus Me had played over at. हमारे साथ सिर्फ काइस है guys आज. They were able to put up the strongest fight versus Giants. We saw them taking 7 rounds, so granted, still not nearly as close as they would have loved to have had it. They did RP खेलोगे खेलेंगे ना. Damn decent there compared to on their map pick of Haven. So unsurprising to see that taken out. It's going to be a set ban किया रे. taken away here from the side of Detonation Focus Me. खौफ बे भाई मेरे को समझ नहीं आता, इतना अच्छा मैप है बे. ये लोग फ्रैक्चर एक्चर खेलने को एकदम रेडी रहते हैं, ये सब क्यों नहीं खेलते? पर मेरे को समझ नहीं आता. If he's feeling comfortable and you know really starting to find his groove, but it seems like they're going to steer us in a different direction. You know, we talked yesterday about how a lot of the Korean teams, they tend to be a little bit conservative with new agents and with new maps, but seeing 2 of our pretty, at this point in time, old maps taken out is exciting. Our first map is going to be Pearl भी ban हुआ. This was one of the most ठीक है, Pearl को ban करो that चलेगा. we had at Lock-in, which was really shocking to ban see. होने के लायक है. You know, just given the time Pearl आज बोर हो गया. and that event in Sao Paulo, so many आज teams सुबह लोगों पे लास्ट खेला और मैच भी Pearl का ही था. was one of the teams that was just perma-banning it over in Champs. Said, you know what, actually we feel quite well suited to this map, and we saw it yesterday from them versus Zeta. So we do get that one as the first and nice. पिक हुआ बैन नहीं. electing to take पिक हुआ? to Lotus. And this is a little bit puzzling. I mean, पिक हुआ है बे भाई. काइस क्या बोल रहा है? मैं सोया नहीं हूँ. तू तो सो के उठा ना भाई, तू तो सही पढ़. But now DFM are picking into the map that PRX looks stronger on in. मेरे को इंग्लिश समझता नहीं, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं. सही बात. नहीं बात करने में. हाँ, वो स्क्रीन पे पैसे पिक भी लिख के आया था इंग्लिश में, वो भी हिंदी में लिखना चाहिए था ना. हाँ, लोटस पिक हुआ है. हाँ, लोटस मजा आएगा देखने. लोटस शुरुआत में ऐसा बवासीर लगता था, पर फिर धीरे धीरे थोड़ा ठीक लगने लगा. पहला पर्ल पिक हुआ, उसके बाद कौन सा? लोटस ही तो हुआ उसके बाद. नहीं हुआ क्या लोटस इसके बाद? के बीच में कुछ हुआ क्या? नहीं. पर्ल और लोटस पिक हुआ है. ओके. more some bare bones good plays that they think they can have pan out correctly. Very exciting. आज नींद पूरी हुई? हाँ भाई, ऐसी पूरी हुई है कि सोया ही नहीं हूँ मैं. हर्षित भाई, welcome to Kantal fam. Do join our Discord server. Quite confident about it going for it, but PRX Split as well ban. to go for the pearl that they kind of got Fracture decider. As this all bleeds out, we see that Fracture is going to be the last remaining map, and I mean that could lead to some absolutely wild stuff. I mean, who's got the neon ready? We're gonna go neon-less. Teams do both. We could go neon-less. I mean, especially for these. आजा भाई. यार बाइंड को मिस कर रहा हूँ यार मैं. Honestly. बाइंड मजा आता है यार. खेलने भी देखने भी. So we'll have to wait and see, but all right. Well, if we do go to a map 3, और फिर अगर बाइंड और ब्रीज आएंगे तो क्या लगता है कौन सा मैप जाएंगे? मेरे को लग रहा है अगला हेवन जाएगा और एसेंट जाएगा. ये दो जो है, जो पुराने मैप है जो अब तक गए नहीं है. हो गए ना तीनों मैप पिक. अरे मैं गेम का बोल रहा हूँ, मैं गेम से बैन होंगे. गेम से मैप भी बैन होते हैं? अरे बैन मतलब यार अभी जैसे ब्रीज और बाइंड नहीं है ना यार, वैसे रोटेशन में. क्या यार तू क्या गुंडा
मतलब नहीं। भूल गया मैं वैलोरेंट क्या होता है। I'm just happy. Do it again, William. I'm just happy because whenever I pick Phoenix, all of you guys always make fun of me. Phoenix and Jet, No, just kidding. वो लोग सिंगल डुलिश खेल रहे हैं। Jing TFM Phoenix on the other versus side, Jet. going for the loud cop. You know, this has kind of been standardized now on Pearl. माइंड डबल पर भाई अबे ब्रो डबल ये क्या बोलते कंट्रोलर डेंजर है भाई वाइपर और आर्बर Jess is going to play on this Jet. भाई कुछ भी साले लोग वॉल नीचे जाता ही नहीं है पूरा टाइम मुंह के आगे वॉल एक रहेगा ही रहेगा पूरा टाइम पूरा राउंड में पूरा टाइम रहेगा एक वॉल मुंह के आगे वो पुश करके ही मारना पड़ता है वही ऑप्शन है बस तेरे तुम लोग भी ऐसा कुछ सेटअप बनाओ ना 5v5 के लिए हाँ भाई अगले क्या इतना कोऑर्डिनेशन होता तो VCT ना खेलते हम नहीं इधर 5v5 के लिए बेसिक कॉल का भी बनाओ बस वो नहीं है बे कोऑर्डिनेशन अरे वही तो बात है उसमें ऐसे पिक लेने के लिए फिर कोऑर्डिनेशन भी वैसा चाहिए ना बोलेगा कि मेरा बॉल डाउन जाने वाला अब तू कर फिर वो बोलेगा मेरा डाउन जाने वाला अब तू कर ये सब भी नहीं होता है रे इधर दोनों का सेम टाइम पे बॉल जाएगा दोनों का सेम टाइम पे डाउन होएगा बोलेगा अब तू कर बोलता है मैंने तो कर दिया on his debut here at the VCT Pacific. Are you excited, my friend? Super excited. Woke up like bright-eyed, bushy-tailed. I mean, it's Paper Rex coming in. You know, I'm like kind of biased towards First them, match है आज का against Detonation, Yes. and this is going to be Pearl. Things are heating up. वो एटलीस्ट अभी से या आपको भी 15 दिन बाद एक्सेस हमको भी 15 दिन बाद Hey, I mean, this is what you want, right? Out of this team, out of this matchup with Paper Rex here, always bringing out new and interesting stuff. It's what has really endeared them to fans across the world. That's right. I mean, you know, I think what they're trying to go for is. क्या आज की वॉच पार्टी का ये इशारा है कि आपका शेड्यूल ठीक हो गया है टू अर्ली टू से ये रात होते होते पता चलेगा कितना ठीक हुआ है कितना I नहीं mean, this is going to be really curious to me. Like, कल आपने अपन खेले try 5 करते हाँ हैं यार आज कल ये। मैं खेलना तो था वही था पर थोड़ा सो गया ना अपन कुछ तो सेटअप्स लर्न करते हैं और वैसे खेलने को ट्राई करते हैं अरे रहने नहीं हो फाइव पाएगा मैन स्टैक लर्न तो सब कर लेगा तू you don't have as much range. पर सबसे बड़ा दिक्कत ही मेरे एंड पे ये आता है कि भाई मेरे को 4 लोग के साथ खेलना पड़ता है ना Tiny extension. A little bit, yeah. तो 4 लोगों को मैं अगर बोलूं कि ये करना उसमें से 3 लोग तो इसे मुंह पे इग्नोर मारते हैं और जो एक सुनता है वो भी सुन के उल्टा करता है बट एक चीज देखना किल जॉय जो साइड पे खेल रहा है उधर सिर्फ अकेला है और यहाँ पे 3 लोग हैं इधर वो लोग एक्चुअली कॉन्फिडेंस है ब्रो कॉन्फिडेंस Already setting up for it. आ जाए It's only a matter of time, but they're way too वॉल्यूम close अप for किया Jake जाए to pull that out. क्या बात है क्या बात है मारा एक मारा Flashes out. Teammates come in. अरे 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 हो गया खत्म Picks हो up a couple more. Yeah, great खत्म start बोल here रहे for तुम Paper लोग Rex. अटैक Have a डिफेंस good lead, डिसाइड gets कर लो spiked भाई down. Let's see any more damage can be done. भाई Beta दिया gonna find a headshot and a kill. Takes quite a डुएबल bit of डुएबल damage हो गया बे हम्म उस तरफ मार दिया था वो लोग ने Well, there's so much pressure. They know there's a lot of बन कई कई गेम है ये अगर middle. दोनों का एक एक बंदा लो है Benkai hiding right around the doors. They know that they're on the other कैसा side. क्ला They know एकदम the उसके spike ऊपर has एम not लगा been picked अरे up yet. अरे Unfortunately, that's not going to quite do the wall bang पड़ी। that you want, my friend. He is really low, but you have to be so वॉल बैंक careful पड़ा about ना this. उसको डैमेज Get पड़ा a कि little नहीं bit curious. नहीं, Peeks नहीं out, पड़ता क्या? and that's going to be a नहीं, headshot from पर Taki पड़ता तो है ना Jake, वॉल but Benkai बैंगेबल है fights ना the वो तो trade. क्लासिक Back to पड़ता है क्या हाँ। उसके थ्रू पड़ता है ना And you just जाएगा have गोली बहुत तो आर कम पार लगेगा गया बट to work with. हाँ Yeah, they might be crossing paths here just in a second. दोनों एचपी वाले बंदे Yeah, he's going to be let कम है इसका कम है बेंकाई का पर निकाल देगा उसको एडवांटेज मिल गया ना अब पता है उसको वहीं पे वो बैठा 125 एचपी है वो देख हक मैं दिया बोला अभी, ना मैं बोला हक दिया एकदम तेरे से खेला इसने करना था तो है तो पूरा फेक कर स्टिक कर रहा तो पूरा स्टिक कर भाई ये बीच रास्ते में माइंड चेंज हुआ और एकदम से जंप मारा उसने आसमान में। ऐसा नहीं करने का रे बाबा ये अमन वाला गेम है front yard and just throw down. Like everybody come out, you know, the gloves are off and let's just see how it goes. And just barely, Paper X comes out ahead on this. So I'd say some, you know, some good. Face cam some नीचे good क्यों कुछ indicators cover हो for रहा है क्या? Detonation Focus me here that they're able to put up a good fight in the opening round. You know, they're able to hit some big PRX shots. का बाय अभी भी देख going forward. फुल Let's नहीं see how है they wanna केजे का play और this. माइंड किल फीड का फीड के वहां से You know, हटाओ now on the back foot here, some frenzies being किल invested फीड कहाँ आ on रहा the है side of Detonation. देखो So फिर ये नाम हट looking to see जाएंगे if maybe they can बाद get, में you know, बोलना a नहीं cheeky convert here. I mean, the frenzies are super powerful, particularly on land. मैप के ऊपर मत इसको डाल इस तरफ डाल So देते हैं much so, especially when they're grouped up together like हाँ this. It's clear, like you said earlier on, Clinton. They have strats, but right now it's just a देखते matter किल of फीड timing. कहाँ आ रहा है Everyone एग्जैक्टली rushes in. There's a good flash, but Benkai's only ओ भाई able to get पूरा the इधर ही scoop. आ रहा है Spectre's on the ground for them ठीक है to pick चलो up यार right now. प्लेयर का नाम तुम कवर Not कर bad लेना at थोड़ा all सा here, though. I mean, DFM takes some समझ damage, जाना but प्लेयर का they नाम इधर feel देखो it नीचे से almost दिख रहा है पैकेज right back to the side of Paper ठीक है Rex. I mean, DFM takes a little bit of extra damage ठीक from है the players that are still alive, but overall, that's not a bad trade.
I like the way they overstacked this. They're able to kind of cut through. And they kind of play off the beginning round here, right? Where they all kind of went mid. You don't necessarily expect them to do that again. So I really like the stacking here. They have the turret to watch their back. It's going to be tough to get forward now as there's quite a bit of, not utility, but people in place here waiting for them. That turret is going to confirm that they're being flanked. Maybe that's the go signal. Your predictions 2-0 और ऊपर लेना फेस कैम और ऊपर फिर वो हो जाएगा किल फीड नहीं देखेगा बच्चा हाँ तो वही तो बात है वही तो देखना तभी तो ये करने बोल रहे तेरे क्या लगा प्लेयर का नाम देखना उनको ताकेज भाई का वाइपर का मुंह देखना देख लें दो एक बार फिर चेक करता हूं further, but it just went right past each other. 10 well seconds remaining, and TakeJ is going to find one headshot plus the spike plant. He's able to scoop up that Spectre and put it to good use. ठीक है इतना भी वे Still that Marshall and a Bulldog for Device. So फेस कैम हटा दो ठीक है भाई gun favor slightly for Paper X, right? Just a little. Still dangerous. 2v2 छाती से काटो फेस कैम छाती से भी काटेगा यार छाती Hiding right around Seeker, right around Flowers. It's up to Divide to kind of flush them out of the corner. They're vying for time right now. Chalo the snake bite out on the spike. It's forcing the fight. Forsaken goes in for it, takes a hit, 6 HP, and that puts the pressure onto Divide's shoulders. He's able to get one more, but he's pretty darn low. Thankfully, quite a bit of damage. So close for मेरे को ओसीडी हो जाता है ऐसा भाई गन किधर पड़ा और वो नहीं उठा ना They're able to once again almost take a round. It comes down to the last player for Paper X. 2 rounds in a row. So I tell you what, I'm feeling pretty good about this DFM squad. What I've seen so far, it seems like clutch है बे clutch तो नहीं भाई throw था मतलब ये तो भागा था बाय राउंड था इनका kind of trading off of each other, the backing each other up, the team play. बाय राउंड में उल्टा नहीं माइंड फ्रीक ने और उसने बाय नहीं किया था पिस्टल पे खेल रहे थे लोग तो वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो गया ना यार थ्रो हो जाता ना उस वजह से सामने वालों को तो इको था ना पॉइंट ये है ये वेंडल लेके ना वो लोग नहीं लिया रे वेंडल अभी तक नहीं लिया वो एटीट्यूड है ब्रो वॉल बैंक से आधा कम कर दिया उसको बोनस ही मिल रहा है Yeah, and I mean, this is going to be one of the things that is going to come into play, I think, for DFM is having this harbor, having that extra ability to create space for yourself. You know, like we talked about, the Phoenix gives you a pseudo variant of that, but it isn't going to be quite as effective as what you're going to have out of DFM. So a lot of what Paper X is going to have to do is kind of, wait things out. ये क्या आधा अधूरा भाई कर रहे हैं? हाँ तो यार बोनस राउंड है ना. DFM setting the tempo sometimes. 4 बंदे मर गए थे, 5वां भी मुश्किल से जिंदा था. क्यों ये लोग इन्वेस्ट करेंगे जब पता है सामने वालों पे वैंडल फुल शील्ड है? It's just a little wall, but they're going to go with उड़ते हुए गए बाजू से. Dashing straight into Paper X is going to be suggested. And right now, holding halls, there's so much space created. Paper X, they want to counter flash this, but they can't. पहुंचा नहीं था flash पूरा. Out and suggest is able to do a little bit more. Paper तो X मार दिया on the नसीब अच्छा other था side. The toxic screen goes up yet again, and the pressure is on. Divide, unfortunately, isolated out. Suggest is online for the ace right now. 3 kills already. That guy tries to deny it. He's able to take Zenfree out. Eco fragger is. And a little bit more peeks into halls. One more player down, and that leaves Benkai alone. Benkai might want to consider just potentially saving this. Benkai एक और kill लेगा तो उसका buy हो जाएगा. मारेगा तू 2 और मार. He's got a couple players weak in the halls. Finding a little bit of value. Oh, भाई लाइन अप हो जाते हैं ये दो. Steps out, but Reita quick to trade him down. दो लाइन अप होते तो निकाल लेता पता है. I mean, नहीं निकालता तो नहीं. I'm super impressed here, Quack, with both teams, but DFM I think coming out with a strong start like we saw from Zeta yesterday, but now I want to see DFM continue this. This has been overall really good rounds from DFM, even though they lost. I couldn't agree more. I mean, it's just a simple strat, kind of classic. You have the toxic screen up. Suggest just dashing straight into the back of halls. Paper X knowing that they would not have the gun, so they're going to play a little bit more reserved, a little bit more in defensive positions. Please use Got English the flash fonts coming only. in from support, and that's just going to tear Paper X apart. Absolutely. Yeah, just really well. क्या? Chinese वाइनीज कौन सा भाषा कोरियन वोरियन में लिख रहे हो बे? Now shifting over towards the A side, seeing if maybe they can put a little bit of pressure. Spike is right out front here with Zenfree, just kind of pushing through. They are going to sneak the orb in Areta. He's got the lockdown as well now. Schedule ठीक हो गया. अरे ठीक ही तो है. This might be sort of a
they're expecting aggression. You can see by the way they're positioned on the map. Oh, yes. And let's see how they play off this lockdown. Let's see if they're going to be able to get into the site. Kind of waiting for it, though. The counter lockdown. They're just kind of playing around this as well, trying to leave up a lot of that space. There is a flank coming in from behind, and that's what I'm worried about. Walking straight into it now is going to be Forsaken. The tip of the spear. And TAKJ kind of senses something, but it's going to be headshots for Paper Rex. It's delicious, like crunchy cereal right now, and you hear the skull fall apart. That's another headshot. Race has the भाई अटैकर वाले डिफेंस में डिफेंडर वाले अटैक स्पॉन पे आ गए क्या कर रहे हैं भाई a little bit of crouch, and Jin cleans it up. I mean, this is W Key gaming at its finest. It's a delayed W Key, but they find the perfect time for it, right? Like I was watching and I thought, okay, I feel like DFM is a pretty good read on the fact that आधा राउंड खत्म हुआ डिफेंडर अटैकिंग स्पॉन पे थे अटैकर डिफेंडिंग स्पॉन की तरफ जा रहे ये देखना ये कहां से निकला है Exactly. That is the biggest factor right now, I think. The fact that it's delayed W key gaming. I love that keyword because the timing of things just kind of puts this offbeat rhythm that DFM can't quite expect. Exactly. Yeah, I really impressed with. ये क्या वॉल मारा है? Something that I've always और been impressed with for the most part with them is they have decent mid-rounding a lot of times. They're really adaptive. You know, it isn't just these kind of aggressive plays at the beginning of rounds where they're going to try to challenge you with duels. Sometimes they do get pretty spicy, and they kind of roam around the map a bit. Today 5v5 पता नहीं भाई आज का प्लान कुछ Obviously, we know what Jing and Forsaken are capable of on the wings of the map in particular. Jing और Forsaken भाई this is a scary team. That round there is kind of like to me क्या कहना चाह रहा था quintessential Paper Rex. Yes. भाई पुश करके मारते डिफेंडिंग पे I mean, off of what you're saying, Clinton. देखा नहीं कि पहले राउंड क्या किया दोनों ने पर ये लोग का बहुत अजीब प्ले स्टाइल है मतलब वर्क करता तब करता है वरना उस दिन बीच में जब इनका एक मैच हुआ था जिसमें जो तोड़ा था वो लोग ने सामने वालों ने कौन सा किसके सामने था याद नहीं मेरे को उसमें ये लोग जितना एग्रेशन बता रहे थे सामने वाले उतने ही पैसिव खेल रहे थे ये लोग ज्यादा के पिक्स दे रहे थे वैसा हारे बोला इतना भी भाई अच्छा नहीं है A nice try here by the side of DFM again. I like what they're doing. C9 तो अभी recently हुआ मैं तो और पहले का बात कर रहा हूँ. Try to make a flash play. They're able to get a trade off Lock-in का नहीं बोल रहा हूँ मैं. Lock-in वाला तो मैंने देखा भी नहीं था PRX वाला मैच. Once you get stuck by the मैं mid पहले का बात कर रहा हूँ. As you get further towards the site. Mind map था मेरे को इतना याद है. Mind map में लोग डिफेंस में पुश कर करके अटैकिंग में उनको स्पॉन पे जाके पिक्स दे रहे हैं. और लोग हर टाइम स्पॉन कैंप कर रहे हैं पूरा बैठ रहे हैं मस्त होल्ड कर रहे हैं स्पॉन पे. उनको पता है एक बंदा तो आएगा ही. और हर बार एक बंदा जाता था 4v5 करवाता था. FPX हाँ FPX था. Back in hometown, escape building. Love everyone there. And it's going to be a timeout for DFM right now. दो कंट्रोलर है भाई अटैकिंग साइड पे नहीं निकालेंगे तो कहां पे निकालेंगे डिफेंडिंग साइड पे दोनों में ही भाई एडवांटेज है कंट्रोलर होने का भाई डबल ड्यूलिस्ट से बेटर डबल कंट्रोलर में ज्यादा एडवांटेज है भाई it is everyone it's like a util bro so they do a lot of programs for youths back home. Oh awesome. Game तो देख अल्टीमेटली तेरे को किसी भी एजेंट पे तेरा एम अच्छा होगा तू मार ही देगा. And everything I believe that's like esports workshops. Yeah, esports workshops. पर वो टीम गेम डबल कंट्रोलर पे बेटर बनता है. DFM is in a little bit of trouble. डबल ड्यूलिस्ट पे सिर्फ तेरे लिए बेटर बनेगा अगर तू ड्यूलिस्ट है तो. ऐसी बात है. तू मारा तो मारा मर गया तो तेरे पीछे वाला भी कर नहीं पाएगा कुछ. They're not really doing that. Right. No, it's a pretty mostly measured pace here from exactly. Double controller better unless you have two crack. Other than that one round, but again, it was a delayed aggression. Head advantage है Paper X को. When the lockdown came through, they knew that they either they were going to have to back out into spawn or they were going to have to push it. Exactly. Yeah. And that's why you feel that uneasiness, like you just don't feel good. फिर सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है पर इन जनरल ऐसे. अरे बट वाइपर भी है हार्बर भी है दो साइड से एक साथ पुश करना चाहिए लोगों को ना. वही कर रहे थे कभी केजे मिड होल्ड कर रहा है वाइपर एक साइड पे वॉल करके बैठा है. That is just a really good kind of bait. एकदम देखना ऐसा लग रहा है स्केल लेके काटा है वो वॉल मैप पे. ये लोग ने ट्राई करा फेक करने को बट एक भी बंदे ने रोटेट अभी कर रहे हैं एकदम हाफ में डिवाइड किया साइड को. Get a little bit aggressive on one of these right rounds. Just do, try to out. मरेगा भाई मरेगा. Going for a bit of set play maybe. Spam that W. मरेगा गया. Bug. Forsaken.
is able to मरा मरा Anthem wants to go off of this, so अरे एटीट्यूड वापस पिक क्यों किया पागल है क्या अल्ट भी तोड़ा उसका वो कुत्ता भी तोड़ा oh my god bro he's so good it doesn't land it Jing is here to Jing आ गया receive पीछे and off of the run it एक और मारा value Forsaken still alive still online the 5 अभी मरा हो पर वो तभी मर जाना था ब्रो वो स्पैम में बचा कैसे सेकंड शॉट लेने के बाद बचा कैसे वो अल्ट तोड़ा कुत्ता तोड़ा अल्ट कुत्ता तो चल फिर भी पीछे जाके तोड़ा हो तब मारने का चांस एक मिला था जब वो उड़ के जा रहा था किसी ने पीछे से स्प्रे कैसे नहीं किया मैं ऐसे भागने जाऊं मेरे पे ब्रह्मांड का स्प्रे आ जाए अब पहला हेडशॉट पड़ जाता है मेरे को उसमें वो पिलर से जैसे निकला वो भाई क्या अनलकी वे पीछे आ रहा स्काई को मार रहा था पीछे वाइपर मर गया वे उसका दर्द मैं समझ सकता है मेरे साथ ऐसा बहुत होता मैं तो फाइट लेने को आया भी नहीं था ऐसे मर जाए बोल रहा था यार ये कैसे मैं तो तेरे को सपोर्ट देने आ रहा था भाई एक बंदे का नाम सजेस्ट है उनकी टीम में अपने को सजेस्ट करना है उसका नाम हां वही दोनों वो कहना चाह रहे हैं क्या है तुम लोग अच्छा नाम सजेस्ट करो ना भाई क्या मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ मेरे को नाम सजेस्ट करो कोई अच्छा जिससे मेरा जेट कोरियन जेट गेम प्ले देख के लोग डर जाए ऐसा नाम सजेस्ट करो बहुत खराब लगता है भाई खराब तो लगता है भाई ये लोग वापस कल यार कल मैं थोड़ा सा हालत थोड़ा खराब था यार ओ भाई टपली one of those players who's got great aim. Still going straight into it. हाँ मेरे ऐसा चक्कू चला इसने He's getting the first hit. The refresh on लास्ट में तुक्का लग गया मेरा भी कभी-कभी लग जाता है Benkai though wants to apply the pressure, wants to deny the spike. प्लान मिल गया चलो. Of course Forsaken coming in from behind. जय माता दी बोल के चक्कू चलाए थे उसने पर ध्यान से देखोगे स्लो मोशन में तो ऐसा पहला गया राइट फिर लेफ्ट फिर ऊपर फिर नीचे फिर एक माथे पे चिपका पांचवा As soon as the plant comes down Paper X puts their foot on the gas. That's the go time for them, and they want to punish the, gun disadvantage. हार्बर का अल्ट कितने टाइम से यार कभी-कभी थोड़ा रिलेटेबल गेम प्ले भी लगना चाहिए ना कैसा लगना चाहिए कि यार हाँ ये हमारे से खेल रहे हैं हम भी खेल सकते हैं. He's already got the blade storm, so it's kind of he doesn't have enough time even to toss that gun over to someone else. So it is a bit unfortunate, but that's a good play, a good recognition of the situation by Paper X. One of those things just so happens. You think you got it. But Paper X already has the site surrounded, and I think that's great calling from Bankai because they know how to play that retake game. क्यों ये चिड़िया वेस्ट करता है? यूसेज बहुत प्यारा है बेटा इनका. Despite the early kind of punches that DFM वेस्ट नहीं वो लोग मतलब पुश ना करे इसलिए डाल रहा है वो. बढ़िया है. To Paper X's side as they're up 6-1. Still have the op in Jing's hands. You still have a couple. हार्बर अल्ट यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से ये राउंड एटलीस्ट. in the cosmic divide here, so a lot of tools, a lot of powerful tools in Paper X's pocket. साइड लोग छोड़ के You do have the reckoning and the Viper's bit still, but Suggest finds an opening pick over towards Secret. देख करे हार्बर अल्ट यूज कर. Your controller's gone. You lose a little bit of that delay Wall unless बेचारा हीलर खुद ही लो है बे इसको कौन हील करेगा इसका दर्द भी मैं समझ सकता हूं बाबा pushed all the way मैं सबको हील करूं मेरे को कौन करेगा and that's where he gets so much information. Paper X गलत बात they are anticipating सेज भी रखनी चाहिए सिर्फ इसके लिए सिर्फ पर भाई देख हार्बर अल्ट ये यूटिलिटी बहुत यूज बहुत प्यारा कर रहे हैं ये DFM. They're going off flashes. There is a bit of a defender killjoy lockdown from Bankai. So buys a little bit of time. तेरे पे भी चिड़िया है भाई उड़ा तू भी. अरे एटीट्यूड बे. ये चिड़िया है. For a bit of a flank. Meanwhile, everyone else is up around dugout. And they're just holding the angles. Paper X, the onus is on them to push this. Suggest online for the ace. I feel like he wants to go hunting. Of course, when you're down 6-1, you just want to end it as soon as possible. You want as many rounds as possible. Dundo, ace, मारना नहीं, knife. What are you gonna do, buddy? सोच रहा है ऐसा कौन सा A little bit of a peek. He's not giving up yet. मारा बंगा. Time is ticking though, and he's only got about 10 seconds remaining now. At this point, the best you can hope for is just more frags, but DFM knows this, and they are running away, letting him die to that spike explosion. Nice round, yeah. No ace for Suggest, but it's an ace at heart. It feels like an ace with how well he played that round. So hats off to Suggest, really doing the heavy मैं ऐसा अपने इनिशिएटर के साथ कोऑर्डिनेट करूं. जब तक टीममेट्स तुम्हारे जैसे कैसा गेम नहीं जब तक ड्यूलिस्ट तेरे जैसे होंगे तब तक देख वो जेट देख कैसा टाइम पे घुसा उधर फ्लैश दिया उसके बाद हो गया देख चमकने के बाद
इधर साला अपने में मैं ऐसा हाथ में चिड़िया लेके बैठा रहूंगा कि मैं मेरे कॉल पे जाना, आगे डैश मेरे गुज चुका होगा, फिर बोलेगा यार कोई डॉग वॉक तो कर दे, फ्लैश तो कर दे। अरे पागल, रुकते हो क्या? रुकना भी पड़ता है उसके लिए। और हर चीज हर राउंड वही कर रहे हैं बट वो लोग। गाइस भाई केओ कैसे खेलते हैं बता दो। हाँ भाई गाइस भाई एक केओ गाइड केओ का गाइड वीडियो बना दो यार गाइस भाई। कितना मेहनत से 2 किल निकाला, उसका हाईलाइट बना यार, मैं तो बोल रहा हूँ। कौन सा मैच था याद है क्या, कब का था? अबे पीछे वो भाई, पीछे फिर बेचारा वो किसको मार रहा था, वो कौन मर गया? ये भी लोग आए, इसको हिल भी नहीं कर सकता कोई। अमन से जेड भी सीखना पड़ेगा। हाँ भाई ये अपड्राफ्ट क्यों करता है हमेशा, देख बुलेट डॉज करने को। अरे मतलब स्पैम पोजीशन पे ना, तो अपना हेड पागल है क्या भाई? पुश कर रहे हैं लोग, वो बोला पीछे से इतने लोग आ रहे हैं तो आगे चले जाते हैं। अरे आगा ये क्या बॉल बना है, पागल है क्या? 4 सेकंड को हील कर रहा है। हाँ फुल एचपी है खुद तो, क्या बॉल बना है? ओह बॉय, मेरे को लगा दोनों खेलता 1v2, 2 डुएलिस्ट वैसे एक कंट्रोलर। देखते हैं यूटिल यूज कैसे होता है। नहीं बेचारा गरीब है, 3 डुएलिस्ट का फाइट है गाइस। पूज भी चला गया, पूज भी चला गया। 3 डुएलिस्ट का फाइट है। फ्लैश नहीं है इनके पास। हाँ हार्बर पे फ्लैश है, रुक जा, गया। Yeah. लो था रे ऑलरेडी। 7-2 now, and PaperX are still in the lead. Yeah, some signs of life here from DFM, some rounds that are really close. So I will say, even though the score line is 7-2, I'm at least happy to see that a lot of these rounds it comes down to the very last player for PaperX to finish the job. So just small things to clean up here. Like if Takajay gets this kill on the Jing, if he's able to keep that flank at long B open for the side of DFM, this round probably goes into their hands. I mean, they had Forsaken on the ropes at the beginning of this. They were corralling the side of PaperX, but सोई नहीं उठे हो, सोई नहीं बे और उठाऊं। तूने वो वीडियो देखा 4 सेकंड के छोटे भाई का? हाँ वो छोटे भाई का उसने डाला था यूट्यूब पे वीडियो एक। किसका छोटा भाई? 4 सेकंड का एक। अच्छा उसका छोटा भाई भी है क्या? यूट्यूब चैनल पे है उसके। रेडिएंट हाउस में खेल रहा है उसका भाई। कैसा अच्छा खेल रहा है शायद। हाँ सोचना क्या प्रेशर होगा उस पे भी भाई। भाई बोलेगा भाई 4 सेकंड का भाई है, खेलना पड़ेगा। क्या मारा है बे? टांगों पे एकदम मेरे ऐसा नाइफ मारा है, मजा आ गया भाई। नाइफ तो है भाई। 5 चक्कू कम है यार, पर ऑनेस्टली कम से कम 10 चक्कू मिलना चाहिए जेट को, कम से कम पे। अगर एक रिलोड में 25 गोली देते हो तो कम से कम 10 चक्कू तो दे ही सकते हैं यार। ठीक है फिर 10 चक्कू दे देंगे बट फिर वो रिलोड नहीं होगा। अरे रिलोड मरने पे रिलोड चाहिए यार, 2-4 चक्कू का तो 5 चक्कू का रिलोड चाहिए। चल ठीक है ज्यादा नहीं, 5 चक्कू का तो रिलोड दे, पर शुरू में 10 दे दे भाई, है ना भाई? सही बात है कि नहीं? कितने लोग अग्री करते हो? एक पोल डालू क्या इसके लिए? बताओ एक बार चैट में यार, होना चाहिए ना ऐसा भाई, वरना जेट लोगों को मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा अल्ट यूज करने का। क्योंकि भाई 7 ऑर्ब के बाद एक अल्ट आती है, वो एक अल्ट के चक्कू ऐसे 5-1 सेकंड में सारे बह जाते हैं लेफ्ट राइट। क्या फायदा अल्ट का? उधर रेस का अल्ट देखो, इतना बड़ा रॉकेट दिया है, ऐसा जाग के टांगों पे मारो उसके। वो अल्ट कर दिया भी वो अलग बात है, पहले तो आंख बंद करके मारो, किसी के टांग पे मार दो मर जाएगा। मारा पहले को मरता दूसरा है, वैसा अल्ट है उसका, इतना ब्रह्मांड का अल्ट है। और इसका बंदे के बगल से ऐसे जुप 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 निकलता है बे चक्कू। कैसे भाई? थोड़ा तो यार, थोड़ा तो नियॉन यूज करे। अरे यार नियॉन भी को उसका अल्ट भी तो कौन सा अच्छा है भाई, उसका अल्ट भी बेकार है। ऐसा ज़ूम करके भागते रहो बस, माथे पे नहीं लगा तो वो भी डेड है। उसका बॉडी शॉट का डैमेज बहुत कम है।
enough for DFM. They're trying to seal ऑफ off नहीं कर some रहा of these ये spaces along with the tide from Harbor. पड़ी टपली पड़ी. At the very least, it's Paper X. They've got the game sense. They've got the right reads. And 10 knife or 5 knife and 1 spear that follows and kills. हाँ ये सही है. एक ऐसा हवा में फेंको जो पीछे पीछे जाए उसके. वो स्काई कैल्ड जैसा उसके पीछे पीछे दौड़े. प्रिसीजन है. प्रिसीजन स्ट्राइक. Oh my god, shot मारा बे. ये क्या मारा? तो दोनों को मार दिया तो मजा आ जाता. क्या बोलता है क्या पे एंड होगा गेम क्या स्कोर लाइन पे नर्व हो गया रिजल्ट चाहती है हमारा फिर भी. हाँ वही अभी ये हुआ ना पर मैं पहले का बात कर रहा हूँ. कैसा था वो? कुछ भी मारो भाई उड़ता हुआ लग ही जाता था. इधर साला जेट के अल्ट में बहुत प्रेशर रहता है बे. कि क्या पहली बात तो यार 4 5 6 राउंड लग जाते हैं उसका अल्ट आने में. और वो भी ऐसे कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई तू अल्ट पे खेल ले मेरे को गन दे दे तो और प्रेशर बढ़ गया कि भाई गन तो इसको दे दो. अब सिर्फ नाइफ है फुल शील्ड है मारना ही पड़ेगा 5 चक्कू में एक बंदा तो मारना ही पड़ेगा. और उसमें भी 5 चक्कू पहले तो 50-50 एटलीस्ट डैमेज था प्रॉपर. अभी टांग पे लगा तो वो भी नहीं है. 3 टांगों पे मार दो तो भी भाई नहीं मरता है भाई. तो एक करे चीज क्या? पता है तेरे को ये पीआरएक्स के बंदों ने ना ये चीज रीड कर ली है कि डीएफएम पहले वॉल करता है और फिर स्प्लैश करता है और मेन पीक नहीं लेने का. तो एक भी राउंड अभी मेन पे पीकने आया पिछले 9 राउंड में. वो लोग एमेन पूरा छोड़ ही दे रहे हैं. देखना रीटेक पे खेल रहे हो लोग. ये साइड एक फ्लावर भाग जाता है एक डगआउट भाग जाता है. और ये लोग ए लेने के लिए हमेशा हार्बर का अल्ट यूज करते हैं. मारा मॉली मारा बच गया पर थोड़ा लेट. अरे रे रे बाबा अल्ट में 2. अरे स्काई डिफ 1v2 फिर से. और सेकंड भाई थोड़ा लेट हो गए भाई. यार ये एंगल तो एक्सपेक्ट करना चाहिए भाई. ये एंगल पे कैसे मतलब वो प्री पिक क्यों नहीं रख रहा है? क्राउच क्योंकि क्राउच बैठा है ना. प्री पिक रखा था हेड लेवल नहीं फिर भी नहीं किया था उसने. वो स्विंग किया और फिर वापस अंदर गया फिर रीस्विंग किया उसने. वो प्री पीक वाला वैसा सीधा प्री फायर आता है. मैं पीक करते प्री फायर 2-3 बार वहीं पे तो आया वो हर बार पुश करके. एक बंदा तो आता ही है क्लोज. बट हार्बर के अल्ट पे मस्त मिला ये लोग को 2 बार ये साइड ए वाला. Like you said, Quentin, the curse has been invoked. There definitely is quite a bit of pressure for DFM. You know, कौन है ड्रॉप स्ट्राइकर ये लोग की टीम का अभी? They passed that flag. Zeta passed that flag over on DFM. They really want that spot. 9-3. It might be the first 9-3 girls. बेटा में रेस खेला है 5 नीड मिलते थे अल्ट में एयर स्ट्राइक होती थी. पागल क्या 5 नीड थोड़ी था 2 नीड थे. और एयर स्ट्राइक कौन सा एयर स्ट्राइक पागल है क्या? तू खेला था बेटा? नहीं पर सुना तो है ना वीडियो में देखा है. 2 नीड होते थे उसके बाय डिफॉल्ट. 2 नीड कि उसका जो अल्ट था ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल था वो टाइम पे. और मतलब ऐसा नहीं जैसे अभी अपन मारते थे बाजू में लगता है. हां तो पहले तो था ही ब्रो. That's the other thing. You can see that in some of these rounds, Paper X are starting to feel themselves. ये बाजू में रॉड क्यों रखा है? Confident. जीतने के बाद क्या मारने का क्या डांडिया खेलेगी क्या? क्या है ये? अच्छा लाइट है वो. क्या डम हो यार मैं. क्या लाइट है उनके फेस के लिए. I think ना कैसा लग रहा है डंडी लग रहा है बाजू में रखा हुआ. Obviously you would expect Paper X to be a pretty good attacker side of team. Generally speaking, a lot of interesting 9-3 कर्स है क्या गाइस? क्या लग रहा है? We didn't see too much of that here. तेरे को क्या लगता है क्या स्कोर पे एंड होगा? 13 एक सेकंड अभी किसका अटैक होने वाला है? पेपर एक्स का अटैक है ना? 13-5 यस. क्योंकि ये लोग डिफेंस में जो हिसाब से घुस रहा था अटैक में तो ये लोग उनके स्पॉन पे पहुंच जाएगा. मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा ना 13 नहीं ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलना है. बोलना है तो एग्जैक्ट बोल भाई. ये ज्यादा से ज्यादा वाला ये सब नहीं भाई. 13-4 भाई 4 अच्छा. हाँ, एक और कम किया. अच्छा हाँ सिर्फ एक ही राउंड हारेगी पीआरएक्स. ठीक है. और ज्यादा से ज्यादा 6 होगा. ठीक है. मेरा ज्यादा ज्यादा 13-7 है. ठीक है ठीक है ठीक है. You've got Harbor, you've got Viper. It kind of works out well.
आइए आए आए भाई फट गए पीछे भाग गया भाई वो पागल हो गया तेरा तो 13-4 फेल हो गया यही दिख रहा है मेरे को 13-4 तो तेरा फेल है कैसे फेल है पहला राउंड हार के दूसरा राउंड नहीं जीत नहीं होगा होगा ही नहीं नहीं होगा ही नहीं आई डोंट or hey, we've got a moment here to kind of breathe and start fanning out and start finding some more information. So some pings came through because this part of the map was left open for DFM. They're curious if somebody went in towards connector. So they're 39 हारेगी PRX. They don't know for sure. I don't think they saw all three players. I think one is अभी क्यों 39 हो गया PRX हारेगी बोल रहा है get it Anthem trying to go for the wall bang through the Zenfree there, yeah, trying to bait out. ये गेम अगर पेपर एक्स हार गई गाइस तो क्या 10,000 क्या 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 रुपया और क्या होता है कहाँ रह रहे तू हाँ और अगर जीती तो तू मेरे को अच्छे से बोल अच्छा जीती तो मैं तेरे को दूं हाँ ठीक है 39 पेपर एक्स जीती तो 39 ना बट नहीं क्या वो जीती तो अच्छा पेपर एक्स जीती तो तू मेरे को That was really nicely handled. DFM जीती तो मैं तेरे को अच्छा ठीक है ठीक है चलेगा देता हूँ तेरे को बराबर बिलीवर्स यूटिल बहुत ज्यादा है पता है बट आई थिंक क्या वॉल बनाया यार हाँ ना बहुत मैं बोल रहा हूँ यूटिल बहुत प्यारा यूज कर रहे हैं लोग But that's where Forsaken can sneak past अरे some of these smokes. स्टिक कर गया वो भाई यूटिलिटीज आर एट पॉइंट 13-4 बोला था गाइस ने इसका मतलब ये है कि एक भी राउंड अब पेपर एक्स नहीं हारेगी पेपर एक्स सारी तो ट्वर्क यार हाँ यार 10,000 ये क्या शौक है भाई ये क्या शौक है अच्छा और अगर जीती तो तू करेगा तो बोल मैं क्यों करूं भाई नहीं तो भाई दो तरफा होती है ना यार बेटे ब्रो एक तरफा थोड़ी होती है यार तू है भाई तेरा चैनल है तू कर तो तू अपने चैनल पे लाइव आके करियो ठीक है चलो अभी क्या अभी आज क्या आज ही ठीक है वेबकैम नहीं है मेरे पास तो मैं वो क्या भाई फोन से लाइव आ जाइयो इंस्टा लाइव पे आके करियो ठीक है इंस्टा पे तो क्रेजी हो जाएगा तेरे दोस्त लोग देखेंगे ये क्या कर रहा है भाई OnlyFans OnlyFans Art, of course, a little bit left open, but Zenfree is just going to deny this connector play. Come on, PRX. Kind of what we saw on the other Win the side. Zico. In a similar position where you've got just that long range, better weaponry. बहुत प्यारा यूज कर रहा है भाई They're trying to do, man. They're like, अरे यार और लोग है ही नहीं अभी यार they're going through connector. सब लोग का स्लीपिंग टाइम है अभी रात भर तो गेम खेलते हैं सब So if they tried to go through water, he was going to be ready. सो जाता हूँ भाई And pings are coming down to just kind of check the way here for Paper X. Benkai, I think, just kind of guiding मेरा भाई आज फिर पीसी क्रैश हो गया मेमोरी मैनेजमेंट बोल के वो आया एरर अब उसमें क्या बीटी है पता नहीं ब्लू स्क्रीन पे हाँ ब्लू स्क्रीन पे मेमोरी मैनेजमेंट तो फिर एसएसडी का होगा कुछ तेरे को बोल रहा हूँ नया एसएसडी ले ले रैम तो है नया एसएसडी ले लेना वही करना पड़ेगा पर वही ना एग्जैक्टली पता नहीं ना क्या है क्योंकि हर बार अलग अलग एरर आता है ये आज का आया है कल जो हुआ था उसमें कुछ और आया था तो पहले जो हो रहा था उस पे उसने बोला था कि सॉफ्टवेयर इशू है 90% हार्डवेयर का इशू नहीं और अब ये भी आ रहा है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली इशू क्या है सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था काफी टाइम से तो इसलिए अब मैंने सब पार्ट्स नया डाल दिया इसलिए पहले तो विंडोज रीइंस्टॉल करूंगा पूरा रीसेट करके पर वही यार फिर वो करने के लिए पूरा रीसेट होगा पीसी तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ ना उस अबे फिर एसएसडी का भी मेमोरी का आया ही है ना तो ले लेना है एसएसडी 1 TB का ले ले फिर खत्म हो गया फिर जो एसएसडी का इशू नहीं आएगा रैम का मेरे पास एक्सटर्नल पड़ा है हार्ड डिस्क तो मैं सब ट्रांसफर तो करके रख दिया हूँ Paper X, it's up to them to break this, but
ये लास्ट बाय है ना PRX का, इसके बाद एक बाय देखते ये बाय अगर PRX मेरे को तो ओटी चाहिए बे गेम में नहीं भाई अटैकिंग में अगर PRX नहीं जीत पाया ना तो दिक्कत हो जाएगा PRX को दिक्कत होगा ना नहीं जीत पाया ये क्या मॉली मारा है किधर का लाइनअप है अटैक पुश बाप रे आग लगा दी इसके नीचे 3-3-4 मॉली जल रही है देख अब ड्राफ्ट करके जो बचा है ब्रो ये एटीट्यूड वे झूल रहा था हवे में तब कोई पीक कर लेता सोच बैक साइड से ये वाइपर का डैमेज खा रहा है ओ बेचारा क्या ही करेगा बेचारा पुश आ रहा है उसमें मारा मारा वे बोले ब्रो ये तो निकाल लिए ये लोग ने तो मैं बोल रहा हूँ यूटिल यूज एक बस वो टीम का DFM का पर मुश्किल है डिफ्यूज मुश्किल है ये लोग पोजीशन अच्छा अल्ट खोल के टाइम वेस्ट करा दिया और फ्लैश भी है इसके पास रोक सकता है ले भाई क्या एम है बे एकदम क्रिस्प एम बे गया जी अकेला राउंड निकाल दिया बे पर हेवी वीडियो होगी भाई ऐसा गेम देख के पता क्या लगता है एक तरफ लोग यूटिलिटी यूज कर रहे हैं एक तरफ लोग पूरा रॉ एम पे गेम खेल रहे हैं पुश कर करके वो फ्लैश पीक वाला किल बहुत सही था बे यहाँ पे देख वाइपर ने कुछ कर ही नहीं सकता था वो 2v1 था ना तेरा 13-4 तो गया मेरा 13-5 होता है या नहीं देखना पड़ेगा दोनों चिड़िया उड़ रही है सामने वापिस और ले रहा है बाप रे 2-3 अल्ट से 3-6 बस अरे उधर का भी लेगा ना और वही तो इधर का So many of these this has got to be the 4th or 5th round. रहा है लेने को जा रहा है होगा 1v1 at the end क्या बंदा है ये it has to be a clutch अगले राउंड तक अल्टा जाएगी win, so you know really impressive फोर्स सेकंड यहां पे ट्राई कर रहा even though the score line is you know 2 times सही है ऐसा ही खेलना चाहिए डिफेंडिंग साइड पे थोड़ा पेशेंटली ये जैसा नहीं W दबा के मेरे जैसे मेरे से ज्यादा शांत बंदा कोई है ही नहीं तुम साले सुअर लोग सुनते ही नहीं मेरी बात ये तो दिक्कत है मेरा मन को मत बोल सुअर अच्छी बात नहीं है potentially in some ways you know just based on the history that and the kind of caliber of these players देखो वापस मॉली लाइन अप कर रहा है वो you know everybody knows Paper X everybody knows how अरे डैमेज का किया पागल वल्नरेबल होके अरे कहां भाई बंकाई को बोला उसने एंगल देखने देखा नहीं क्या मिनी मैप पे मार्क किया उसने एग्जैक्ट पर क्या भरोसा ही नहीं है भाई पर मार दिया ना उसको मर गया क्या फायदा एंगल देखने का He is alone though, and that's where I kind of get nervous. But he's able to sneak past, and this gives Paper X the sight. Everyone has already made their way past. वो देखो वहाँ से पीछे चले गए दूसरा बैठ गया. Look at this, they switched to Jing over there. He doesn't have any utility. ये सही है भाई. Want to make sure that मॉली तोड़ने के लिए अपना मॉली डाल दो. हाँ भाई विफ किया था almost. That's good too because he gets that information. He buys down and burns down that timer. Proper trades, why? And they don't quite clear halls. Mind Freak able to come up from the side. मेरा 13-5 हो रहा है guys. And put those thorns straight through DFM. 11-5. We are one round away. भाई पर बहुत शांत बंदा है वो तो यश सुनिए जो गुस्सा आता है सही बात. True. Loss of thought about the angle. That makes sense. They might have 3 साल से देख रहे हो तुमको पता ही होगा बहुत शांत है. कभी देखा मेरे को रीच करते हुए. And they had turned the other way and Mind Freak found the perfect timing. They were really well handled here by Mind Freak. I don't think they. I think they thought he was onside. I think this was just a misread a bit from DFM. They've been good about clearing that halls. I actually saw that they were throwing utility in previous rounds on those retakes. करके मरवा दिया बेचारे. Giving themselves good opportunities for those retakes. So I think maybe we might be seeing another time out here for DFM, and I think this is a great time for one. Still, there's hope for DFM in my mind. Yes, Sunny only exclusive on local. That they can run some more rounds together. They can make this a really competitive map potentially. I have to agree, and that's hacker वाली clip याद आ जाती है yes. needs to do right now is to find ways to apply that pressure. Right now, they are feeling that heat. Every single time it comes down to a bit of a clutch situation. It's a little bit tougher for them. You start to see some of these. 2 सेकंड का भाई 10 साल का है वो वीडियो देखना एक बार वो वाला अमन से 100 टाइम बेटर है वो शूट. मतलब वो ये तुम नहीं भी बोलते तो भी अंडरस्टूड था मतलब
अमन से तो कोई भी 1 किल वाला जेट से क्या तुम कंपैरिजन करेगा? 1 किल मैं भी उसको मस्त ट्रिगर कर रहा था, किल वाला जेट छोड़ के चला गया गेम। अबे जेट लेके 1 किल। गाइस का तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल, 2 किल था केओ के साथ था बे, केओ के साथ था, कुछ नहीं कर सकता था उसमें। मैं मस्ती कर रहा था यार मैं। जेट लेके वो 1 किल भी डेस्परेशन में मारा था उसने, मुंह पे डैश मार के गया था उसके एकदम कि इसको तो मार के जाऊंगा मैं। लेजिट मारा और अगले ही सेकंड मरा है। 2 लोग के मुंह के आगे जाके उसके। भाई इसका तो अल्टी खत्म नहीं हो रहा है भाई। बैक साइड क्यों नहीं जाता है ये? ओ भाई मेरे से चक्कू मारा इसने, देख फिर से 2 3 4 चक्कू आगे, 1 लग गया। वो देखा ना क्राउच करके लेके बैठा था भाई। 1v1 कैसे बंकाई निकाल देगा बे। खाने वाला है। ओ भाई बंकाई निकाल देगा। 1v1 के लिए तू कभी भी वोट कर सकता है बंकाई। ओ भाई नाइफ भी तो चमक रहा है उसका, गनवन चमक रहा है अलग ही उसमें जोश में। Dude, I mean, great rounds here on both sides. I mean, again, suggest gets these blaze storms. He has been really good at this entire map. Very accurate all around. Gets shut down by the Sky utility momentarily, and that gives just enough breathing space here for Paper Rex to regroup, reset, go. एक चीज नोटिस कर रहा, सब लोग कैसा क्राउच करके बैठ के पीक के ले रहे हैं। Huge win. Some big laughs there. They're starting to feel pretty good. This is the Paper Rex that we've been wanting to see, right? Like towards lockdown, you know, they felt so much pressure from Cloud9. It wasn't so good, but here they go. Now they're starting to peak out. It doesn't even matter anymore. आगम भाई, thank you for the 110 भाई। आप सेरी मॉर्टल अमन को बहुत सपोर्ट करते हो, पर कुछ लोग अमन को बहुत बोलते हैं और अगर वो आपस बोल दे तो इशू हो जाता है। जैसे अमंगस यार देखो, अमंगस का मैं ऑनेस्टली बताऊं, अमंगस गेम ही ऐसा है जिसमें बसड़ होती रहती है, वो दिल पे लेने वाली बात नहीं है। और ऐसे ट्वेल में है आपस में रोज खेलते हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे खेलते हैं, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आपस में भी होनी चाहिए कि पर्सनली ना ले एक दूसरे की बातों को, और ले भी लिए अगर लग भी गई है तो आपस में सॉर्ट कर लेना चाहिए। ऐसे तो मेरी कितनी लड़ाई हुई है ऑन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम हर जगह पे, पर फिर जितनी लड़ाई है उतना भाईचारा भी है। हो गया 13-5। तुम्हारे भाई का प्रेडिक्शन तो था बे, क्या बोला था भाई, क्या बोला तो हूँ बे। मेरे को लग रहा है मेरे को पंडित बन जाना चाहिए। उस दिन भी भाई बोला था फैनेटिक और वो वाले गेम में कि ये ओटी तक जाना चाहिए, लास्ट गेम ओटी तक गया, बोला था कि 2 ये जीते फिर अगला 2 जीते कमबैक हो जाए, ओहे लास्ट गेम ओटी, ओहे मजा आ गया था। अबे हो गया अभी, मेरे को समझ आ गया, मेरे को अभी वैलोरेंट का कोच बन जाना चाहिए, कोई अच्छा टीम। इफ यू आर लुकिंग फॉर हायरिंग अ कोच, Soul_Viper thank you. Minimum salary 10 lakh per month plus bonus। प्लेयर का भी नहीं देता तो प्लेयर को जिताएगा कौन? कोच ही ना भाई। तेरे सैलरी में 5 प्लेयर आ जाएंगे, 10 लाख रुपए पर मंथ। अबे पर 5 गंदे प्लेयर अमन जैसे लेने से अच्छा एक मेरे जैसा अच्छा कोच ले लो, है कि नहीं? जैसे नहीं आएंगे ब्रो, है कि नहीं? बताओ। अरे ऐसे तो अमन भी इमॉर्टल, तो बात तो समझना यार, पहुंच चुका है वो भी इमॉर्टल, तो बात समझ यार। बताओ गाइस, 5 अमन जैसे प्लेयर या 1 वाइपर जैसा कोच, बताओ तुम लोग ही बताओ क्या चाहिए, बताओ जीतने का है कि नहीं? एक 5 जैसे अमन जैसे प्लेयर होंगे, फायदा ही क्या जब कोच का सुनेंगे नहीं, है ना?
Zenfree, you know, he tends to play that list bonus per win के हिसाब से controller once or twice, but we haven't ठीक है He's been all over. I know. We haven't quite seen him on the Harbor, but this is where the meta is starting to shift towards, especially on a map like Pearl. You got Viper, you got Harbor. He's using it to seal off some of the spaces, especially. पांच अमन जैसे प्लेयर ज्योति प्रकाश नायक so much like his style. खत्म है फिर And तुम्हारा that's fair, yeah. हो गया When I think of Zenfree, I think of KO sometimes because it's kind of that Yes. pseudo. Viper replacing Eraser soon. Yeah. Yeah, but I'm a pencil. I like the ideas. I saw some good things from DFM. Again, so many of the rounds came down to 1v1. They just couldn't quite get it done. Quack, but that's gonna do it for our कोचिंग भी क्यों प्रेडिक्शन के लिए ले लो पैसे हाँ मतलब वो भी पर यार देखो यार ऐसे करना तो वही अल्टीमेटली कि मैं ऐसा कोचिंग दूंगा किस ऐसा पहली प्रेडिक्शन कि मेरे प्लेयर ये स्कोर से मैच जीतेंगे ऐसे समझ रहे हो वो प्रेडिक्शन ही तो है पांच अमन जैसे खेलेंगे तो गेम बंद हो जाएगा बात तो देखो सही है पर पंडित जी बीजे में कब आ रहा ये मेरे को नहीं पता भाई अब अभी वीसीटी चल रहा ना पहले मोबाइल कब आ रहा है ये पूछो वो भी नहीं पता पर मेरे को पर मेरे को ये पूछो कि अगला मैच कौन जीतेगा ये मेरे को पता है अगला गेम पेपर एक्स मैप कौन सा है वो देख के मैं स्कोर लाइन बताऊंगा हाफ टाइम देख के स्कोर लाइन बताते पता है हाफ टाइम देख के तो मैंने बता ही दिया वो तो हुआ ही ना पर मैं तो मैप देख के शुरू में बता दूंगा देखना बस मैप और अटैकिंग साइड किसका है PRX अटैकिंग में 2 राउंड हारा है yes. वो दूसरी टीम अटैकिंग में 3 राउंड जीती है बे बाबा डरावना टीम है भाई PRX योर वर्स्ट फकिंग नाइटमेयर लोटस है अच्छा पेपर एक्स वीकेस्ट मैप वीकेस्ट तो मैं नहीं कंसीडर करूंगा यार क्योंकि यार देखो लॉक इन जो लोग के सामने खेला था वो अलग लेवल की टीम्स थी अभी ये अलग लेवल की टीम है वो भी मैटर करता है किसके सामने खेल रहे हो उस बेसिस पे आप बोलोगे ना वीक है स्ट्रांग है इस ग्रुप में पेपर एक्स काफी स्ट्रांग टीम है अमन का जॉब ले लोगे क्या अमन का तो वैसे भी यार कौन सा कोच रहा था वो टीम सोल का हट ही तो गया था अमन को तोड़ते रहते हो यार बताओ फिर हम भी निकालेंगे सोल वाइपर 2.0 कोचिंग क्लिप्स अमन से गाइस तुमने कभी कोचिंग क्लिप्स नहीं मांगी यार कोच था तो उसको कोचिंग क्लिप्स मांगते क्या कोचिंग दी उसपे थोड़ा क्लिप्स थोड़ा दी होगी तो बनाएगा वो कोचिंग कुछ दी होगी तो क्या रैंक चल रहा है वाइपर तेरा मेरा असेंडेंट 1 हो गया अब तो अभी डायमंड 3 जाऊंगा इतना डी रैंक करके क्या मिल रहा है तेरे को ए डरते है क्या उससे अच्छा आजा कोई और गेम खेलते हैं नहीं यार तो वैलो में जो मजा है वो नहीं है यार किसी और बात ही खेल वैलो और डी रैंक वो अलग बात है रैंक ऊपर नीचे चलते रहता पर मजा तो है फिर भी रहेगा आईजीएल अमन कोच हाँ भाई खत्म है टीम का बेड़ा कर And perhaps it is the expected result, but PaperX takes it in PaperX fashion here on Pro, coming in with a double duelist comp, utilizing the Jet and then the Phoenix as their second duelist, and they make it work against that Nation Focus Me.
It was an impressive game overall. I mean, I loved the Phoenix coming out there. They're sticking to that originality while still being consistent. हेलो का नशा है एक बार खेलने बैठो 5 घंटे कहाँ गए पता नहीं चलता. They delivered. They looked great, and I'm a little bit. रोज रात को हमारा ही देख लो 6 7 8 9 10 घंटे निकल जाते पता नहीं चलता भाई. I'm curious to see how they're going to open up with that, but I do क्या बोल feel रहा like है this may very well be a 2-0. I mean, it seems like it's trending in that Chair direction, कुछ तो बोला which is, तू. again, kind of the anticipated result. I do think Detonation are making some good adjustments, though. And while this is a 13-5 scoreline, so many तो पर rounds इसमें तू throughout बोलना क्या the चाह रहा था वो तो that पता है वो initial तो. half were dangerously close. It seemed like Detonation consistently were getting Paper X down to that final player. They just weren't able to convert those. कॉल into कॉल wins. लगाता महंगा नहीं है. राइट वालों कॉल This लगाता could have हूँ. been a significantly closer game. I हमारे mean, गाइस भाई you're को एक चेयर basically चाहिए probably सीक्रेट looking लैब like a का. 13-10, maybe even a 13-11 if Detonation could just get some of those rounds, and obviously with economic impact and whatnot, और that could कुछ have eventually टेबल led to them winning this out. But Paper X, they still managed to hold fast. इसको They मिला get the है win in the end. किसने दिया है ऐसा I है love that ये. you made a point of that because even मिला looking at the obviously first मिला skills, right, if दिया Detonation क्यों होगा is ब्रो actually starting दिया to वाले go का स्टैट्स क्यों off बताएंगे वो in लोग. terms of pure duels. It's अमन not है that क्या they were भाई that far behind. कितनी They बार just जाके closed it दिए out a couple times. Of course, just putting up some respectable numbers, right? And he's part of the first skill stat that Detonation Focus Benkai had. top He has rack 4 किया है first bro. skills to his name. Really रहेगा ओपोनेंट making में sure आया that he can तो prove that he सबको can फ्री play this फर्स्ट ब्लड duelist मिलता है. entry बात role तो here ये for भी सही DFF. है. Yeah, and it's exciting. I mean, we don't normally see Suggest going for. आज ही खेल रहा था मैं भाई स्काई खेल रहा था रहेगा हमारा रेस खेल रहा था. ऐसा लगा क्या वेस्ट है मेरा स्काई खेलना. क्या वेस्ट है. मैं डॉक करता हूँ और डॉक के बाद मैं फ्लैश करूँ उसके पहले तो साइड घुस चुका होता है. मैं क्या करूँ मैं फिर ये 2 फ्लैशेस का जो मेरे हाथ में. मैं हाथ से चिड़िया खोला और मैं देखा रहेगा घुस के अंदर उसके साइड के एकदम बैक साइड घुस चुका है. और मजे का बात तो ये कि उसके सर के ऊपर से बंदा हमको मार रहा है और ये अंडर हेवन जाके छुप रहा है एसेंट में साइड पे. क्या बोल रहा है तू. अपन उस दिन रैंडम के साथ खेले थे ना. उसने रहना लिया था तो अपन डॉग से पहले रहना लेके भागे जा रहा है साइड पे. हाँ बे अबे बहुत दर्द होता है बे. मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी रैंडम्स को भी रेगा से यही दर्द होता होगा जब ये सोलो क्यों करता होगा. रेगा मैंने कल देखा रेगा का रैंक क्या है. असेंडेंट 3 है. असेंडेंट 2 हो गया आज वो भी. This also allows the entire team to then open up totally different strategies. हम लोग का यूनिटी तो है ऐसे ट्वेल्व में सबका एक होता है तो उसके साथ सब होते हैं वे. सब होते हैं जितने इमॉर्टल गए सब एक साथ नीचे आए उसके बाद कोई एक नहीं है जो अब तक रहा है. ज़ेरेफ है ना. ज़ेरेफ भी गया ब्रो नीचे. ज़ेरेफ भी नीचे गया. असेंडेंट 3 आ गया वो भी. आ गया वो भी. हाँ आ गया बिल्कुल. कैसे कैसे मेरे बिना रहेगा वो. पता नहीं क्या कितना प्यार करता है मेरे से वो. चलेगा वाइपर है असेंडेंट बन गया. मेरे को 3 तक तो जाना ही पड़ेगा भले कब खेल रहा हूँ. अकेला रेड में अच्छा नहीं लगता है. सब गए भाई. रेगा भी गया अमन भी गया. रेबल तो पहुंचा ही नहीं. स्नैक्स का भी पहुंचने का ख्वाब था वो भी नहीं पहुंचा अब तक. I don't think that was a bad game for them. I think they put up a good fight, especially in the second half. But yeah. I like I said, I like the trend here. If Suggest is going to continue to kind of be the duelist player, because we were curious, you know, Soldum's not in. Who is going to end up playing the duelist? Because we hadn't really seen that from Suggest over at Lock-In. I thought maybe Rada was actually. Imagine Aman Rega Rebel Zeref playing BGMI scrims. Most played, Selva being his second, which is what we saw pretty much exclusively from him in Sao Paulo. Aman Rega तो फिर भी ठीक है say, you know what? Suggest एक टीम बनाओ Rebel Zeref. So now he can start to fulfill these duelist roles. I don't know how that works when you start getting into things such as, you know, Neon and whatnot. When those things come into effect, maybe we'll find out if this can in fact go all the way to Fracture. But I like this setup. I just need to see a bit more of it. But now with them getting ready to go over to Lotus, I'm curious to see how things are going to be drilled out. And I'm kind of anticipating this just is going to go back to playing the Rays. That could very well be it. But of course, now they have to play their own mind games against Paper Rex. Because if Paper Rex is putting आदि भाई पता नहीं क्या आदि ने भी भाई 1v4 मार दिया था उस दिन स्क्रीम खेल के भाई. बिंग्स और जोकर भाई. हाँ ये लॉबी बनी है. जोकर भाई. रेबल और ज़ेरेफ. Third time that he's actually played Phoenix, which is surprising just given the Sid भाई भी Sid भाई. You would have anticipated that he would have had a hand in this. But it's also the first time that they have Sid भाई का ट्रेनिंग ग्राउंड वीडियो है. अमन ने इतनी कोचिंग नहीं दी होगी जितना Sid भाई के गेम प्ले से मोटिवेट हुए सोल के लौंडे. But previously when they were running Phoenix on Pearl with a double duelist setup, it was with a Raze and it was Forsaken who was playing the Phoenix with Jing on the Raze. But
he decides to pick it up for the third time, and by God, did it look impressive. Yeah, you know, it's one of these things where you look at it and you go, you know, are you just trying to be out there? You're trying Back to be room great hoga, at what we pata know nahi this bhai. before, or are we going to see more and more of a pattern of this? I think if you're going to be a team that's going to have success here, and Paper Rex is one of the ones, if you were going to be honest and try to predict who could really go far, this is one of those teams, but it does seem like they are so able to rotate different comps constantly and really keep the other team guessing. अरे हाँ, अपने तो बात हुई थी ना एक बार, इसने भाई चैलेंज दिया था, क्या बोला था, कौन से रैंक तक पहुंचेगा 24 घंटे में? बोलता है इजी गेम है, बोलता है शुरू में तो बॉट्स ही आते हैं, इजी एक दिन में रैंक अप। हम लोग तब एस वेस में थे ना, ऐसे शायद तब वैसे कुछ बात हुआ था इसका। फ्लैट वेट पहुंच जाएगा उसमें एक दिन में। भाई पहला ही दिन जो मार खाए बॉट से पिट रहा था बे, फिर गिव अप ही कर दिया इसने। बोला अभी तो एक दिन पहले बात कर रहा था बड़ी बड़ी यार, रैंक अप ये का वॉच पार्टी करोगे, उसका नहीं होगा शायद। allowing detonation to get themselves back into those rounds, which is why it मेरे को was so मोबाइल very पे ना close. कैसे But I गेम think अच्छे that लगते once हैं, they पता है, swap क्लैश sides, ऑफ क्लैन you हो have गया, Phoenix back up now या where फिर it can क्रैश go all रॉयल out हो गया, aggression, या on the फिर attack अभी तो निकला ना वैसे ही, ये रूट वालर खेला तो नहीं वो नहीं खेला अभी तक, क्लैश रॉयल जैसा ही है। मेरे को वैसे गेम अच्छे लगते हैं एकदम, मतलब सब कुछ, मतलब बेसिक उसका सब कुछ सिमिलर है कि 2 टावर है, तेरे पास कार्ड्स है। हाँ वो देखा मैं स्ट्रीम करा था, वो बढ़िया। Do you think their improvements can still maybe help them hold their ground here on map 2? Well, you know, there's a lot of question marks. मेरे को ना ऐसा एक्शन गेम मजा नहीं आता मोबाइल पे खेलने को, क्योंकि फिर मॉनिटर चाहिए, हेडफोन्स चाहिए एकदम बराबर से, एक्सपीरियंस चाहिए बढ़िया वाला, पता है मजा आता है। What is your game plan here, and what are you going to try to pull off? But the truth is, I think Paper Rex looks very comfortable. They seem relaxed over on the stage, and they're delivering the kind of results we expected. That's really not surprising at all. वो तो वो नहीं We रहते were से। surprised a bit by T1's preparation. Hadn't seen Lotus from them until just yesterday, and they looked quite strong on it. So it's going to be very much the same here for the side of Detonation. We कल need to क्रू see एस इन how they एसिडल look, because 5v5 they're है। electing to go here. Obviously, they feel मैं होता confident चुरा on this लेता। map pick. They could have gone मेरे back जो to हिसाब से something उसने like चुरा Haven, है which ना, they had elected to go into, मैं नहीं मारने देता। back in lock-in, but they decided to go for this one. So clearly, they have to have something workshop. So I'm hoping that they're going to be able to put on a strong performance here, if not take this map and extend it all the way into Fracture, because again, तेरा हाईएस्ट रैंक इमॉर्टल 1 है कि 2 है? comps look like. What is he just going to be playing if we can go over हाईएस्ट to that रैंक का map? इमॉर्टल 1 या 2? I'm more curious about Paper Rex. What have they rectified? What have they मेरा fixed immortal 1 ही है। since lock-in? Because granted, they did have a stronger performance versus Cloud9 on Lotus. ये मंथ एंडिंग के बाद मैं 2 वीक के लिए नहीं, 1 वीक के लिए फ्री रहूंगा 11 तारीख तक। Do we still have this Sage in the बहुत Valorant competition? खेलूंगा दिन There's a भर lot of रात questions that I have. क्या Going into Lotus, then next just month, quick question before we get ready here for the agent selection. 10 तारीख तक या 8 तारीख तक हम लोग को कॉलेज नहीं है। again? I mean, अच्छा। Lotus does lend मेरे itself कुछ to काम है। chaos. हो जाए फिर रोड टू इमॉर्टल। I mean, I keep saying like I think they need to tighten Let's up the go. play a little bit. They need to play a bit more standard, but that is just not Paper कल Rex. पायल ने मामा को नाइफ किया। Granted, I Oh think my god। Phoenix here wasn't as out of left field मामा as, शॉटगन you know, लेके some रिलोड of the कर रहे other होंगे things that तब they've तक done. मेरे So I I think can that imagine pro that. map somewhat नहीं fairly मैं standard. तो We do see पायल नहीं गया things तो there from time to मोस्ट time. प्रोबेबली The वो duelist makes it a फ्लैंक little पे bit more होगा, unique. And obviously it was क्योंकि a bit शॉटगन के brutal, सामने but तो they भाई played- मैं they खुद ended नहीं up करता playing भाई, really well, पायल and का it तो looked strong. मैं तो डर जाता हूँ भाई, Paper Rex, मेरे को yes, अगर पता है सामने वाले के हाथ में शॉटगन है, मैं सामने से ना जाऊँ मुंह के आगे, रिलोड हो तब भी ना जाऊँ मैं। यार पता शॉटगन वालों के अगेंस्ट खेलने में ना एक चीज है, गुस्सा बहुत आता है यार। भाई गुस्सा मेरे को ओडिन और शॉटगन दोनों भाई, टिल्टिंग गन से ये दोनों, कि भाई मैं इतना टैक्टिकली शिफ्ट वॉक कर करके एंगल क्लियर करके जा रहा हूँ और एकदम से एक बंदा आता है जो सिर्फ लेफ्ट क्लिक स्पैम मार रहा है दोनों गन में, और मैं बस उसके क्रॉस एयर के बीच में वो टांगों पर मार रहा हो, कहीं भी मार रहा हूँ, डिटेन में डिटेल वाला देखो, डिटेन वाला नाइफ को नाइफ नहीं गिनता यार, मतलब वो तो होना ही है। नाइफ का तब मजा आता है जब वैसा हो जाए कि अनएक्सपेक्टेड नाइफ हो जाए। मॉर्टल एंगल्स क्लियर नहीं करता है, मॉर्टल को बहुत बार नाइफ करने का ऑप्शन मिल जाता है मेरे को। मॉर्टल क्योंकि जब भी कहीं निकलता है कोई एंगल से वो लेफ्ट राइट चेक नहीं करता, मेरे को उसमें पूरा डिप्रेशन हो जाता है मैं चेक ना करूँ तो। मैं भले ही चेक करते करते आगे से मर जाऊंगा चलेगा, पर मैं
बिना देखे पीछे से नाइफ नहीं होना चाहता मैं। वो नहीं होगा भाई। मैं सारा चेक करते हुए जाता हूँ तभी। अरे वैलोरेंट की इतनी बातें करके खेलने का मन कर रहा है अभी। Undergoing its evolution and Gecko being added into the mix, you know, kind of elongates that evolution now because teams have to experiment with him and say, okay, is there room for this to also be a very strong and superior pick on Lotus? We'll have to just wait and see. But I don't think we're going to have a solid meta for this map until maybe midway through the league play. यार बहुत सही बंदा है, बहुत चिल बंदा है, शांत बंदा है। Yeah, I thought you were going to say maybe even into Masters Tokyo, right? Because it's still very new, and because of the way the map functions, I mean, we're seeing all. I was hoping, I thought about mentioning it, and I was like, maybe I'm going to look like a freaking huge Yoru fan. Okay, well, we get the suggest raise, which is what we were anticipating, is what we were hoping for. Raid is going to be going for the Cypher, and I think crucially that is going to एक बार जैसे आप चेंबर से टीपी किया मॉडल के मुंह पे टीपी हां भाई भाई साला लाइफ पे थोड़ा शॉकिंग वाला नहीं कि भाई ये क्या हो गया यूरू लिया अब मजा आएगा भाई अब भी मजा आएगा यूरू है ना और कौन सा मैप है प्रेडिक्शन टाइम है गाइस भाई यूरू से क्या प्लेस बनाते पर ये लोग And now with the Sky and perhaps the Astra as well with something like the gravity wall, what new strategies, what new set plays do they have to make? भाई जो चीज लोग कॉम्पी रैंक्ड मैचेस में करते हैं वो ये लोग टूर्नामेंट में करते हैं ये देखने में मजा आता है। They've got the Omen, they've got the Viper. They need to be able to slow up the entries here and anticipate where Forsaken is going to be coming from if they want to have a shot of closing this one out, because you know that PRX is going to come at you hard and fast. एक duelist slow it up if you सामने वाले फिर डबल that the FM put together to really shut down the aggression, they absolutely can take this. मेरे को लगता है सामने वालों को ना डबल सेंटिनल खेलना चाहिए। नहीं बे डबल सेंटिनल से बेटर डबल कंट्रोलर है। I think PRX के अगेंस्ट खेलना चाहिए क्योंकि डिफेंडिंग का सेंटिनल एक टाइप से अरे सेंटिनल एक टाइप से कंट्रोलर ही हुआ बे मतलब साइड तो उसको होल्ड ही करना ही है अल्टीमेटली। अरे बट यूटिलिटी कंट्रोलर पे बेटर कर सकता नहीं होते ना। अरे क्या बात कर रहा है वाइपर पे भाई मॉलीज है वो अकेला सेंटिनल जैसा ही हो गया एक वॉल एक और दो मॉलीज मॉली डालने के लिए मॉली डालने के तेरे को उस जगह से निकलना पड़ता है। अरे तो वही बात है यार साइफर के पास कैम है क्या तो फिर डबल इनिशिएटर खेलना चाहिए। Oh my god I'm a kid in a candy store right now. I am so excited to see this. When was the last time you saw Forsaken play Yoru? I think it was like Forsaken playing Yoru चलो ठीक है। It's been a little bit, yeah. Bind, I think, is the last time I remember him playing it, and I think he's really talented at this agent. One of the best that we've seen in the world. आप लोग इसी तरह की तरफ से वैलो स्क्रिम्स खेल क्या बोल रहे हो भाई वैलो स्क्रिम्स क्या कॉम्पिटिटिव टीम्स के साथ हम वैलो स्क्रिम्स खेले पागल हो गया। Monster, and we are all very excited for this Lotus. Paper Rex versus Detonation Focus B. I'm thrilled. I mean, this competitive is players the और FM's content map creators pick, में though, फर्क so है। I'm expecting them to be able to temper Paper X's जैसा मेरे और वाइपर में फर्क है मैं कॉम्पिटिटिव प्लेयर हूँ और वाइपर एक कंटेंट क्रिएटर है। मैं वो हूँ जो कंटेंट क्रिएटर होके भले ही कितना सिंगल डिजिट या 2 किल वाला गेम प्ले मेरा नहीं रहा वो कॉम्पी प्लेयर है केवल लेके 2 किल मार के झूल रहा था बस ये जिंदगी भर एक ही चीज अभी तेरे को याद हो गई है। ये तो भाई कैसे ये भुलाने वाली चीज ही नहीं है। देख अब अमन कितना अमन 50 किल भी किसी दिन मार देगा ना तो 50 किल लोगों को उतना याद नहीं रहेगा जितना 1 किल रहेगा। फैक्ट वाली बात है that the FM Fact try to exploit, and also where this double controller kind of comp can play out. But that said, this is a map with 3 sites, so there's quite a bit of room to work with, and not a lot of map control for Paper X right now. छोटी सी प्रेडिक्शन हो जाती तो 1 सेकंड ना देखने दो लोटस है ना ये मेरे को लग रहा है ये 11 क्या बोल रहा मैं 13 ये 13 4 13-4 13-5 तक जाएगा ये भी मेरे बहुत बड़ा मैप है पर ब्रो अटैकिंग साइडेड है और अटैक किया इनका पहले तो ये लोग शुरू में ही राउंड अगर 10 राउंड निकाल दे तो बड़ा बात नहीं होगा। देखना क्या पागल लोग है ब्रो सी से ए तक भागे वो लोग पूरा उनके स्पॉन से घूम के क्या खेल रहे देखना बे अबे गोल गोल घुमा रहे वे पागल लोग हैं ये देख अबे मजे ले रहे हैं लोग तो बारी पड़ गया पर उनको अब पागल लोग हैं वे क्या कर रहे हैं quite a bit. Spike has already been planted. तेरे वैलो खेल रहा डीसी बुला लो Bit of a journey here to go for DFM. Good reactions from them.
see if they can finally convert on one of these close rounds. All right, you've got util. You already sent out the Hawk. He clears out the hut backside, but can't quite use the Trailblazer and walks straight into the crosshairs of Dubai. Let's go, Paper Rex. C2A from spawn. हाँ भाई ये तो mid to A वाला call हो गया. Really interesting round here from Paper Rex. ये लोग ने सही में C2 mid किया है. C2 mid to A. Spawn जाके गए. ये अमन के call से bro C side जाते हैं फिर B side जाते हैं फिर A side जाते हैं. अबे क्या सोच के गए थे? So that they can मैं तो घर पे ही नहीं हूँ. किसने बोला ज़रा खेल रहा है? Value. वो तो बोल रहा मैं तो घर पे ही नहीं हूँ. It's so well choreographed here. Choreographed is the right word. You know, like with a dance from Benkai. So freaking smart. Brain decides to do galaxy brain stuff. ऐसा ही कॉलता है गैफी का कॉलता है. On to the next round. I mean, Alex the coach must have been cooking. ये गेम का देखो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हम फर्स्ट हाफ के बाद बता देंगे, पर अभी के लिए मेरे को लग रहा है ये भी वैसा लास्ट गेम जैसा ही रहने वाला है. मे बी उससे भी ज्यादा गंदा हरा देख. अरे 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 पागल हो गए क्या? ऐसे क्यों भाग रहे पीछे? ओए होए होए शॉट मारा बे. Divido with the Phantom, they've got that firepower, they just have to make sure that they don't throw it away. A bit of a guiding light onto the side to disperse them just for one more second, and that means just has to be फिर से 1v1 पे बे. ये लोग क्या करते हैं मेरे को समझ नहीं आता. बाय राउंड में कितना मार खाते हैं. A single whisper is all it takes. He jump peeks it though, and now he's running Phantom out save of कर. time. Gets the head, and that's all he needs. Again, another clutch has to come through here for Paper Rex. Another 1v1, and by the way, I went and looked it up. 6 clutches for Paper Rex during Pearl. 6. I mean, that shows you, first of all, how deep this team is, how good this team is for Paper Rex. But also, again, I want to say this, you know, for a lot of DFM fans out there, you should have some faith. They look pretty solid, despite the fact that the scoreline didn't look so good. The fact that they're forcing them into these clutch situations, am I right? Like, yes, they've got that individual skill. प्रेडिक्ट फायर इतना ऑन पॉइंट कैसे होता है? वही तो फर्क है ना यार. एक कॉम्पी प्लेयर में एक कैजुअल प्लेयर में ये फर्क है. But DFM certainly need to find some way. They have सारी चैट इग्नोर करो. पढ़ तो रहे यार क्या बात. Got the toxic screen up towards A as well. That's interesting. Yeah, no, I agree with you here. And I wanted to बेचारे की तुम वो चैट पढ़ा जिसमें उसने लिखा सारी चैट इग्नोर करो. कितना फनी है ये चीज. It is kicking off. It's going to be Reita. He's got the trap plays, playing around the cyber case. This is so smart. Even hit with the Seekers, it doesn't quite matter. He swaps the classic. And just has enough. Takage up top, Forsaken below. Chamka. I don't think Paper is going to come out of this one alive, not unless they can do something. Divide, able to fight 2, but here comes Reita again. Come back हो गया. There you go. A good stabilizing round once again for DFM. Only losing 2. कोई बात नहीं बोनस था. कोई बात नहीं. पर वो लोग ने बाई किया था अभी. They do have suggest alt available. अगर लोग ने बोनस में फुल बाई किया था. कॉन्फिडेंस आ गया था ना फर्स्ट गेम. आदित्य कुमार सिंह, वेलकम टू कंट्रोल फैम. दूसरा डिस्कॉर्ड सर्वर. On the backside, a really kind of well set up defense here from DFM. Reita playing really cagey. Oh, Raita. Got backup from Taka. Raita. बिरयानी के साथ भेज दे घर में. And I wanted to get to Yoru a little bit there for a second. The way he played it in a link. I thought that was really interesting 2 rounds ago. भाई वुमेन का नाम क्या है? एक्सन फ्राई. To put it as they were coming through that broken with the door you have to break to get through in A-Link. Well, forget it. There's another flash. भाई क्या सब चमके. Oh my god! That is going to be fastest round ever. Completely blown up. I mean, you have the utility, and flashes but of course the paint cells and everyone बहुत अच्छा लगा ये टीम पता है. ये क्या किया भाई? This is what we need from DFM. Utilities really good bro. I mean, I'm just tickled. That was just a great setup here. All the flashes all over the place. He has to dodge the fake out flash, and they just swing in, and Suggest is fired up. Everyone just happened to bump into each other at the right moment. Surely, ये expected है वैसे ये round पे लोग ने. Paper Rex doesn't push C again, and of course they're going to head towards the A site. Okay. Yoru ने किया है for second. Zenfree's on the other side. गया खत्म. Marshall कर रहा है वो. He has been stunned. He has been concussed. Marshall कर रहा है वो. Peek out right now. Body दिया. Gets the first one. Suggest here with a showstopper. हो गया. And this is big value for DFM. Huge. I mean, this और ये टपली.
pretty effectively. बॉल के इधर आया, बॉल के इधर आया था। ये लूज मोशन था। हाँ भाई, होता है कभी-कभी, कोई नहीं। Yeah, if I do say so myself. I think it's going very nicely. Benkai, you're 1v3 Benkai. They're reading Paper Rex really well right now. आज ग्रुप गेम या वाला 5 मैन अब तक तो नो आइडिया यार। With strong defense from Detonation. तुमने फॉरेस्ट खेला है ग्रुप गेम कभी? नो। I couldn't agree more. This is now Benkai. कैसे बैठे बे? खड़े हैं हाँ बे, एक क्राउच है, एक खड़ा है ऊपर। Impossible. ये अगर इसने तीनों को मार दिया अगर। At the best, he can get maybe one. But look at them. They're समझा है कि ये लोग कुछ बकचोदी कर रहे हैं। देखो हंस रहा है थोड़ा-थोड़ा। Describe this setup, this vertical lineup, and Benkai has no hope. No! At best, he can get one. He's trying to go for the wall bang. I don't know if you can get it. देखा उसको, तीनों दिखे। Good effort. Collapses. Yeah, it's. I like your commitment to the British bit, though. I appreciate that. Yeah, I'm gonna like wear a monocle at some point throughout the cast. Like, dude, who wouldn't want to wear one? I don't know how they keep them in their eyes. I haven't figured that out. Great question. Maybe we'll figure it out someday, and I'll bring it to the stadium. But back to the game, and this is DFM. Like you said, they क्या कर रहा है भाई? It's not C-side, it's gonna be A, and they play off of each other. भाई ये तो उल्टा हो रहा है बाबा। Of course, Forsaken trying to do the same thing as well. But that's where once DFM has that information, they know how to. ये तो डिफेंस में उल्टा निकाल रहे हैं। पेपर एक्स चौक गई है। It's really impressive the confidence and ये तो सोचा होगा अटैक में भाई 10 राउंड मारेंगे। अब उनको उनके really impressed with what I've seen so taste far. of their own medicine मिल रहा है भाई। सामने वो लोग पुश कर रहे हैं ना, एक्सपेक्ट नहीं किया वो लोग ने। हाँ। पर एक्चुअली ये मैप वैसा ही है, इसमें अगर डिफेंस में जीतना है तो पुश करके ही खेलना पड़ता है बे, क्योंकि अटैकर्स को जितना स्पेस दिया उतना एडवांटेज है। मैं तुम लोगों को समझा रहा था, तूने रेज लिया था, तेरे को बोल रहा था नेड कर, मैं ब्रीच से स्टन दे रहा था। अरे समझाने का बात नहीं है, मैं ही तो तेरे को बोला था वो करना है, तू मेरे को क्या समझा रहा था? पागल है क्या? तू नहीं कर रहा था साले स्टन वन, मैं बोल बोल के थक गया कि इधर चल मेरे साथ पुश कर। पागल, मैं रेस था, तू ब्रीच था, भूल गया इतनी जल्दी। मेरे को याद नहीं, पर मेरे को इतना याद है कि मैं पुश करवा रहा था, तू कर नहीं रहा था। नेड तेरे को बार बार बोल रहा था करने, अब याद आया, तूने याद दिलाया तो। अब याद दिलाया तूने जो हरकत करी थी पूरे गेम में। पूरा गेम निकल गया, इसने एक नेड नहीं मारा बे। मैं स्टन कर करके थक गया। सेम मैप था, बोलते बोलते थक गया मैं कि आ जा भाई ये पे आ जा। चलते चलते मार दिया भाई, आसमान में उड़ा है बे। अरे नाइस शॉट, नाइस रे, क्या मारा है बे। ब्रो पता स्किन भाई अकेला ही निकाल दिया बे। पूरा खेल स्किन का है, तू देख रहा है? अकेले ने निकाल दिया। हाँ स्किन क्या है, सामने वाले तो गन पे स्किन है ही नहीं ना। हाँ मैट ब्लैक पे खेल रहे हो लोग तो। नहीं मैं अपनी बात कर रहा था, अगर मेरे को स्किन मिलेगा ना सब तो मैं भी खेलूंगा। मैं बोल रहा हूँ वाइपर, मेरे को तेरा आईडी दे दे, मैं खेलता हूँ उससे। मेरे को पागल है क्या? फ्लैट तक थोड़ी जाना है मेरे को। सेनेट बना के बस ठीक है, वापस कर लेंगे। एक चीज पता है कॉमन है, स्काई एंड रेज दोनों टीम में। स्काई से बेटर ब्रीच है पर ये मैप पे। ये लोग ने क्यों नहीं लिया पता नहीं, ये लोग को हीलर चाहिए होगा इससे शायद। हाँ और अल्टी भी स्काई का थोड़ा अच्छा है। क्या बात कर रहा है ब्रो, ब्रीच के अल्ट से बेटर ये मैप पे है ही नहीं ब्रो, पूरा साइड कवर हो जाता है। ब्रीच का पूरा साइड कवर होता है ना, तो वही एक तो साइड, स्काई का तीनों साइड कवर हो जाता है। क्या कैसा बात कर रहा है पागल। राउलर देखना ए से सी तो जा सकता है। अबे तो उसका साइड कवर होने से क्या लेना देना, पागल है क्या? वो तो उसका काम ही चेस करना है। नहीं एडवांटेज ही तो है, ब्रीच अल्ट बेटर है पर साइड लेने के लिए ब्रीच अल्ट बेटर है। मुझे नहीं लगता साइड नहीं, तेरे को स्काई अल्ट पे तू साइड नहीं ले पाएगा, इन्फो मिलता है बस। राउंड से ना कितना फटफट खत्म हो रहा है, अच्छी बात है ना। 4 हो गया इधर, 4-3 स्काई अल्ट से साइड कवर। हाँ बे जस्ट गाइस थिंग्स। स्काई अल्ट से साइड कवर नहीं बोला मैं, तीनों साइड कवर बोला। टर्रेट ढक दिया उसने। नहीं अच्छा टर्रेट है पागल, उसने रिकॉल भी कर दिया। आगा उसने आगा था उसने, वो ऊपर वाले बॉक्स पे लगा रहा था, वो नीचे वाले पे लग गया। लेके जा टर्रेट जेब में।
pull back towards the A site here for Paper Rex. Ult करने वाला लगता है 4 सेकंड शॉटगन में था. Now you do have the Cypher utility there. ult है पे उसके बाद एक ult किया. Let's watch this. You got the dimensional drift. So the ult here is going to confirm that most of this site is clear. Go up to drop, check everything, and see if there's even a little bit of extra input. And just setting up for that retake play as well. Forsaken banking off of that shorty. Maybe he can find a rifle with it, but unfortunately his position has been given away. मार देता. So much. नहीं greedy नहीं हुआ. अच्छा क्या मेरे साथ. नेड में अटक गया. क्या पर अच्छा हुआ. गन ही नहीं उसके पास. पीछे जाके क्या फायदा है. एक एंगल पे सेकंड शॉट मार देता. अगर एक और बंदा मर जाता. एडवांटेज है ना. Just might be able to sneak a bit, but this lockdown पे खेल रहे देखना वो लोग एक एंगल होल्ड हो गया. ओ भाई दोनों अटके. नाइफ कर रहे हैं and Forsaken will be able to click heads. साइड पे अटका है भाई. पता नहीं उसको. Back out his rifle. Unfortunately, no more time to defuse though, so that is the round basically over. Mind Freak just looking for an additional BM kill. Yeah, why not? Just delay it just in case. Throw the gravity well in there just in case. You never know. Maybe he stuck it. Really well played there at the end. Overall चल रहा है that lockdown so crucial and Benkai. तेरे को पता है ये लोग क्यों जीत रहे हैं DFM अभी? क्यों? क्योंकि इनका यूटिलिटी यूजेज बहुत प्यारा है. Second behind being able to clean this out. Again, मेरे को ऐसा लगता है. DFM is playing aggressive for these lockdowns. अच्छा DFM सॉरी इनका नाम बोला था मैं. कोई नहीं अमन की संगत है. That's the worst feeling in Valorant. That's the word I was looking for. अमन उस दिन मेरे को बोलता है. Is there anything worse than वो थ्रो करना रहेगा तो मेरे साथ खेल मत. Feel helpless. There's nothing that you can do. भाई किस मुंह से बोलता है रे बाबा. I feel you, man. And that's what's so smart about that. स्कोरबोर्ड में मेरे से नीचे चिढ़ गया. They knew it was going to be an ultimate coming in from Paper Rex, but unfortunately it's not all it's made up to be, and they will maybe apply out a little bit. And this is what gives Paper Rex their confidence. दोनों का टूटा फूटा भाई है बे. Just hit the B site. You don't see this too often. 125 आर्मर. आर्मर अच्छा है बट एक टीम का. Got the turret to check for this, so again, EFM. ये देखिए इधर 4. ये लोगों को क्या लग रहा है मतलब हर बार यही आएगी. But the reinforcements are here for Paper Rex. Oh, and there's just walking straight. भाई ट्रेड हो रहा है. वाह. ओ भाई अकेला मार गया. पागल है भाई ये. चारों को मार गया बे. अरे एंगल बहुत चीप था बे. Nasty guardian shots there from Dubai. He's having मैटर क्या करता है देख. राउंड जीतना मैटर करता है. मैं तो बोलता ही हूँ ऐसे चीप एंगल पकड़ लो. राउंड जीत रहे हो पकड़ लो. 1v1 फाइट लेने का जरूरत ही नहीं है इधर. यही जगह अमन बैठा होता ना. अमन स्पॉन पे खुले में 4 लोग के सामने बैठा होता. सबके एम पे. अमन को इसलिए मैं भाई अमन को साइफर राइफर उसको एकदम होता ही नहीं उसको. भाई क्या मारा है. अमन को स्मोकर खेलना चाहिए मेरे. अमन को सेंटिनल दिया ना तो मेरे को सबसे मेजर प्रॉब्लम अमन से यही है कि वो सेंटिनल खेल के सेंटिनल जैसा गेम प्ले नहीं है. सेंटिनल बन के उसको ड्यूली जैसा 1v1 फाइट लेना है फेस टू फेस. क्यों लेना है. सेंटिमेंटल पॉइंट ही तो ये सेंटिनल का कि अगर लर्क कर रहा है तो टाइमिंग पे पकड़ो ओपोनेंट को. 1v1 में पकड़ो ही मत. जाओ ही मत तो फाइट लेने. सेम चीज रहेगा कभी है. रहेगा तो एकदम ही रहेगा. सेंटिनल में खेलना रहेगा तब अच्छा खेलता है वरना आधे से ज्यादा टाइम तो थ्रो ही करते रहता है वो. मूडी है रहेगा. बहुत मूडी है. उस दिन खेल रहे थे एक गेम. फर्स्ट गेम के बाद ही बोलता है यार मैं जा रहा हूँ. उसका उस दिन मूडी नहीं था. फुल थ्रो मोड में था. स्पाइक के कहां प्लांट किया वो लोग ने. यूसी हो गया. देखो इतने बड़े बड़े प्लेयर यूसी करते हैं तो हमारा तो ठीक है यार. अरे वो स्पाइक डिफेंड इसलिए किया था उसने. का एटीट्यूड डुएलिस्ट वाला है पर देखो बात एटीट्यूड का बात नहीं है यार. बात अपने गेम प्ले को उस हिसाब से ये करने की है. जब मैं ड्यूलिस्ट खेलता तो मैं भी वैसे खेलता. पर जब मैं नहीं खेल रहा हूँ ड्यूलिस्ट तब उस हिसाब से मैनेज भी करना पड़ता है. बात वो है. जब सेंटिनल हो तो सेंटिनल की तरह भी खेलना पड़ता है. जब घुसना है तब घुसना भी पड़ता है. जब रुकना है तब रुकना भी पड़ता है. This has been an attacker-sided map, right? At least so far in the meta. So if you can string together 2 more here, if you can make this 6-6. रेगा का रेज अच्छा. रेगा का रेज रेगा का एम भी अच्छा है. रेगा पर बहुत मूडी है और रेगा सुनता नहीं है. ये बस उसका वो ये 2 चीज अगर वो करने लग जाए तो रेडिएंट भी हो जाएगा.
टीम के साथ जिस दिन रेगा ने खेल लिया कोऑर्डिनेट करके, कभी उसके मुंह से सुना नहीं है। तुम लोगों ने नोटिस किया हो ना कि अगर टीम में इनिशिएटर है तो इनिशिएटर के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए मैंने नहीं सुना उसको कभी कि मैं इधर नीड मारूंगा, मैं इधर बूमबॉट करूंगा, ये एंगल मैं क्लियर करूंगा, तो ये फ्लैश कर दे, तो ये जगह पे अपना रिवील फेंक दे, तो ये जगह पे वो कर दे। On the C side, pushing towards the rock on the A side, trying to see if they can catch Paper X a little bit off guard. Maybe they go for something like that, maybe some set plays. रेगा मरने के बाद कॉल देता, हाँ ये बहुत साइलेंट खेलता है। जब गेम में फुल फोकस के साथ खेलता है, मर गया उसके बाद उसको सब पूरा एनालिसिस होता है कि क्या हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, फिर कॉल आएगा कि हाँ ये नहीं यार ये होना था वो। वो तब करता है जब पिट रहा होता। हाँ ये बात, जब पिट रहा होगा तब आज जैसे पिट रहे थे इवेंट पे, बार बार मार खा रहे थे, तो स्काई का डॉक कर दे भाई इवेंट पे। Zentry is able to pull off some of those, especially as Omen. Unfortunately, this time around, she's just going to be teleporting on top of the rubble. ओहो भाई ये क्या पागल है क्या? रीलोड आ गया वरना एक और ले जाता है। ये जिंदा कैसे है ये अभी भी? Able to maybe find a little bit more. He's stuck into that position, so Ching is able to delete him for the time being, opening up the door and pushing further on through into the A site. Potentially falling back as well. They have a spike and they want to make do with it. They don't want to drop to this thrifty. 10 गेम आ रहा हूँ कंटिन्यूस वैलो में, हद हो गई। वेलकम टू वैलोरेंट। Suggest that is shades of new turn suggest right there with the sheriffs. They were well known for their ability to use those sheriffs. Oh yeah, Paper X का comeback हो गया। Saw right there, folks, why they were highly regarded. 3-2 से 4-6 आए। Rotate over to C. You are able to use the neural theft to confirm the positioning in the location. You've got Taka J on point here. Needs to be a little bit careful. I can see Jing starting to reach out. No, they're going to both back off. भाई एक्स्ट्रा कैसे यार खेलते ब्रो, समझ नहीं आता है। इतना गंदा एजेंट लगता है मेरे को। कैसे कोई ऐसा एजेंट खेल सकते हैं जिसमें भाई तुम जब यूटिल यूज कर रहे हो तुम और कुछ कर ही नहीं सकते। अभी तो ब्रिमस्टोन का भी तो वैसा ही है। अरे पर ब्रिम के इसमें तो फिर भी डब्ल्यू करते हुए कर सकता है ब्रो। कंट्रोलर एजेंट चलते चलते दे सकता है ब्रिम का, फिर भी तू घड़ियाल खोल के चल सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है। एस्ट्रा का खत्म है, तू एक जगह रुक, ऐसा सेफ जगह ढूंढो स्पॉट जहां तेरे को कोई मार ना सके। बट एक्स्ट्रा का एक चीज अच्छा भी तो है, रेंज नहीं है, उसको कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। वो बात तो एक एडवांटेज के लिए एक डिसएडवांटेज रहेगा ही। पर फिर भी वो अल्टीमेटली उसको जो नर्फ मिला है कि सिर्फ 4 स्टार कर दी है, उसमें भी भाई वो लोड टाइम बढ़ा दिया था और वो सब कर दिया, तो वर्थलेस हो गया है मेरे हिसाब से। वर्थलेस तो एक ही एजेंट है ब्रो, सेज नहीं बे, सेज का भी ब्रो है। मेरे को वर्थलेस मैं बताता हूँ कौन सा है। रेना। वाह वर्थलेस बोलता है रेना को। वर्थलेस ब्रो एकदम, सोलो प्लेयर के लिए ही रेना बना है, टीम के लिए एकदम वर्थलेस। क्योंकि उसका यूटिल तो प्रॉपर एकदम यूजलेस बे। फ्लैश उसका 2 सेकंड में टूट जाता है, और भाई बाकी हील वील करने के लिए तेरे को पहले बंदा मारना पड़ेगा। लोगों का यूटिल ड्यूलिस्ट का होता है इसलिए कि तू एंगल क्लियर करे और अपने लिए प्ले बनाए। मैंने रहना इसका उल्टा है। मेरे को अरे यार अबे भाई वो अलग बात है यार। कॉम्पी ये सोलो क्यू में अगर एम अच्छा है, सामने वाले गंदा खेल रहे तो इजी है रहना खेलना। बंकाई देख घुस के मार दिया उसको। पर मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि तू टीम को कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है रहना लेके। सोलो गेम प्ले जय माता दी वाला है वो। लग गया तो लग गया, वरना लग गए भाई साला। कहाँ देख रहे हो भाई माइंड फ्रीक भाई? They're just not slowing down, Clinton. I don't know what's happening anymore. You've got the lockdown into play, and DFM आगा लॉकडाउन से डिटेन हो जाएंगे, हो गए डिटेन। He's able to dish out a little bit more damage and save his teammates from extinction. 2 on 3 though. Paper X are not done. The spike is still ticking away. They have the positioning, and Suggest has to peek into them. Benkai just holding up by the other side of Mound. All he needs to do is to find that shot. Oh, Wendell से shot नहीं लगा. Oh, हगा. It's going to be a kill for Suggest. No time for the defuse though. भाई Wendell से headshot है वो.
क्या? वेंडल से हेडशॉट। उसके टरेट का हेडशॉट होगा वो शायद। दिखता वैसा ही है ना, पता नहीं, मैंने एचपी नहीं देखा, पर होता है ऐसा। एनिमेशन हेडशॉट का दिखता है, पर वो टरेट का हेडशॉट होता है, बहुत बार ऐसा होता है। टरेट तोड़ दिया था। नहीं, टरेट बाजू में ही चल रहा था उसके, तोड़ा नहीं था। थोड़ा बाजू में चल रहा था, मैं देखा ना। वो जो फर्स्ट टाइम टैप किया उसके बाजू में चल रहा था। देख टरेट का हेड था, देखो हेल्थ इसका फुल है, 93 है। बोला ना अभी केजे में मैं भी जब खेलता था मेरे को भी ऐसा होता था कि यार ये क्या है बे, ये माथा उसका चमका तो है, लाल हुआ है, फिर डैमेज क्यों नहीं है? फिर मेरे को समझा टरेट है। मतलब टरेट तू ये बोल रहा है तेरे टरेट का एम तेरे से अच्छा है? तेरे से अच्छा है। तूने बोला तेरे से अच्छा है ना, मैंने तो बोला ही नहीं ये चीज। तेरे से अच्छा। नहीं मतलब तूने एग्री किया कि एक टरेट जो एक किलजॉय के साथ मैं किलजॉय खेलूंगा ना, टरेट से 2 किल के ऊपर ले लूंगा मैं टरेट से भी। हाँ मतलब यही ना, बस फिर उससे हाँ वही पता चल जाएगा, मैं वही बोल रहा हूँ, उससे पता चल जाएगा टरेट तेरे से अच्छा है। खेल वैलोरेंट तेरे को एक दिन डिप्रेशन देगा। तू तो देता, तूने कम डिप्रेशन दिया, और गंदा डिप्रेशन देगा भाई। कितना ही देगा, अब आदत हो गई है मेरे को। अब अमन का डिप्रेशन देख लिया, उसके बाद सब हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं है अब। 7-5 तो अभी हो गया, अब बता हाफ क्या एंड होगा, अब फुल क्या होगा? 7-5 है ना ब्रो, ये गेम DFM जीत सकती है। 5 राउंड डिफेंस में निकालना ये मैप पे बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वेरी अटैकर फ्रेंडली मैप है ये। 63% विन रेट था इसका VCT लॉक इन में, अटैकिंग साइड वालों का, जो लोग ने फर्स्ट अटैक किया उनका। ये हेयर स्टाइल देखना सब टिकटॉक। गाइस ने कब डिप्रेशन नहीं दिया है? हाँ ट्रू। गाइस 2 राउंड में ट्रिगर होता है बे, 2 राउंड में गाइस ट्रिगर हो जाता है, पर कभी नहीं हुआ। एक राउंड में कोई कुछ कर कभी दे, नहीं होता। माइक खोल के ट्रिगर होता है बे, जिससे खुद का मूड खराब करेगा, सामने वाले का भी खराब करेगा, और बाकी 3 जिनका कोई गलती नहीं होगा वो गेम हारेंगे। और वो 3 में से एक मैं होता हूँ हर बार। बाकी सब ठीक है भाई, ये लोग की टीम में एक बंदा सजेस्ट करके, उसको अभी तक किसी ने नाम सजेस्ट नहीं किया। एक गेम खत्म कर दो भाई, 2 गेम होने आएगा इस, कर दो एक बार। भाई कैमरा कहाँ लगा है उसने? And also you've got one ways and other things that you can set up with the Omen, so but the TPing has actually been really important here. It is अच्छा क्या है यार ये तो? ये देख वो लोग रुके हैं इनके पुश के लिए। Now they are playing smart, you see? को पता है ना यही करेंगे वो लोग। Back into it, look at how all these 4 positions that PaperX are holding. Oh. Pressure there, yeah. Divai has to piece out. They're almost able to catch him there with that snake bite. At least, you know. इधर वो फेक करना चाहिए था, ये लोग इंस्टेंट रोटेट कर रहे हैं ना। यही सी वाला फ्लैश फेक करके ये भाग जाते हैं ना वो लोग। होगा रे, टाइम पास ही कर रहे थे, ना भी टाइम पास कर रहे। नहीं अभी यहीं पे है ब्रो, वो पीछे गए। वाइपर को भेज रहे हैं अकेले। वाइपर भी तब जाएगा तब ये आधा साइड पूछे अंदर पहुंचेंगे। हाँ फ्लैश भी चमका है। You know, there was a decent commitment of resources on to see. अब ये कॉल दिया होगा, वाइपर पीक ही नहीं किया, क्या कर रहा है भाई? बैकस्टेप के लिए बैठा है क्या? 4 सेकंड आ रहा है मरने को, नहीं आया, सोचा 2 बार फिर चलेगा वापस पीछे। पोर्शन का 6 सेंस बोला रहेगा। बाबा जिंग के दम है भाई गांड में। That is true. A little bit more space too, but now this is where it gets a little bit tricky, a little bit dicey if you were. अरे ये कहाँ भाग रहे हो भैया? क्या भाई डिफ्यूज करना है, ये क्या कर रहे हो? किल के लिए मत खेलो प्लीज भाई। Just in the nick of time to fight more time. Side Reita still peeking in left and right, and मैं बोला ना ये कमबैक है, ये वाला गेम DFM DFM जीतेगा। पेशेंस से खेल रहे हैं। ये गेम DFM का है, कितना पता है? 13
second half pistol round win. 39 लग रहा है मेरे 10 लग रहा है मेरे को. Good for them in that sense that they're able to. अपन दोनों के इसमें एक का एक डिफरेंस रहता है. That's always a nice. क्योंकि पता नहीं मेरा अंदर से बोल रहा है कि 13 10 at least. पर गेम तो इनका ही है. ये वाला पेपर एक्स अगर जीत गया तो वेल डन होगा. दत्ताबाई होएगा दत्ताबाई. अटैकिंग में वाला गेम है यार ये. At least I think so. और ये लोग डिफेंस में अटैक कर रहे हैं पर वो उनके लिए वर्क करेगा नहीं यार. Impressive stuff from DFM. Oh boy. क्योंकि वो लोग बहुत ओवर एग्रेस कर जाते हैं. I don't know about this one though, Chief. Impressive still from DFM and Paper Rex are just walking straight into this blender. 7-7. Fan of this strat. Well, 13-11 पेपर एक जीतेगा नहीं यार. You win them, you know, sometimes you flip a coin and try to push out one angle. 13-7. ये गेम मेरे को लॉस दिख रहा है. Maybe you can get some right clicks. Yeah, exactly. 13-11 बोल रहा है. So, I mean, I'm not 13-11 हारना भी दर्द है. What do you think would be the best five lineup for rank push? हाँ guys बताओ तुम लोग का preferred lineup क्या है? Me with कौन से चार? वो lineup फिर हम try करेंगे. उसमें भी D rank होके बताएंगे. TP आउट कर गया बे attitude. भाई योरू का टीपी बहुत स्लो होता है बे. वो क्या गया ऐसा टीपी मारने के लिए भाई. Paper X was getting a little bit too predictable here. You know, we've seen this a couple times where DFM has had the perfect read. Viper, Zeref, Aman, Rega, Mortal. Viper, Zeref, Aman, Mortal, Crew. Zeref, Aman, Crew, Mamba, Mortal. Zeref, Viper, Aman, Mortal, Rega. That you can dial in now. Just clearing some space. We're not going to see anything on the other side Viper, of that. Mortal, smoke, Zeref, so Rebels, I don't know Serlock. how close it is. Suggest gets Divide out the rip. No. It does kind of create a bit of a graveyard towards this mound Mamba, Crew, area. Viper, Rega, Zeref. A little bit more so Zeref, for Mamba, Paper Snacks, X and Aman. DFM. Good idea with the decoy to push out along with it, but Zeref तो common ही है हर line पे. going to be DFM feeling pretty comfortable, at least until Mind Freak opens the revolving doors and Forsaken peeking out from Zeref, Viper, C-side Aman, itself. Akshu, Mortal. And all of a sudden, DFM, they're looking for another avenue of entry on towards the B side, but there are two players to deal with, and Reita will not be able to survive that contact. Zenfree. मैं बताता हूँ तेरे को रैंक अप लाइनअप ठीक है. Blocked off by this तू as soon as he walks out even a little bit, his gun barrel will peek out, so he has to उसके be बाद so careful. No longer has time. I think मर्सी आ गया तो काफी है रैंक अप हो ही जाएगा तू. हाँ पर बोल ना फिर मेरे को सुनना है लाइन पूरा. पूरा बोल. हाँ 5 लोग खेलते हैं यार. अमन ठीक है. अमन के बाद जोकर भाई और लास्ट मावी. इजी रैंक अप बे. मतलब जो रैंक चाहिए तुम लोग वो रैंक पे. एक दिन में रेडिएंट तो रैंक अप क्यों इसको रैंक डाउन क्यों घोषित नहीं कर देते? Maybe no bonus, but all good. थोड़ा I सही think है. that the ult is the bonus that you get. Maybe use it for information or some sort of positional displacement. And you did a ton of damage on your opponent to Paper X. Like a ton. बेचारे मर्सी का आईडी का सेटिंग इतना खराब कर दिया सबने खेल के खुद खेल नहीं पा रहा. अमन तो मस्त है उस पे चिल्लाए बिना आपका एम नहीं चलता. नहीं उसका चिल्लाने का मेरे एम से लेना देना थोड़ी है यार. यार बेचारे अमन के ऊपर तो चिल्लाएगा नहीं जब तक तेरा एम कैसे लगेगा. सही बोल रहे थे व्यूअर्स. वो अलग बात है देखने में मजा आता है तुम लोगों को. वो अलग बात है. मॉर्टल फॉर कामनेस. मॉर्टल भी ये लॉबी में बैठ के टिल्ट हो जाएगा जब वो देखेगा ऐसा गेम प्ले. उसको डिप्रेशन हो जाएगा. सारी कामनेस एक बार में निकल जाती है बता रहा हूँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से. That's a great question. Something not super tasty. Nobody likes it. मतलब स्पेशली रेगा और अमन तो ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं बोलूं कि ये मत करना वो बाकी सारा इन्फो कान से निकालेंगे और जो नहीं करने बोला वो पहला चीज करेंगे. वो फर्स्ट चीज वो करेंगे वो. तो मेरा तो टिल्ट वही हो जाता है कि मैं तो पागल ही हूँ ना फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ. माम्बा का स्ट्रीम देखता है मेरे को लग रहा है बेन का माम्बा का स्ट्रीम देखता है. I like it. Paper X has this red. They're all positioned here as well. A bit of a paranoia does kind of
pull them back for a second, but Forsaken Obe. is still available. क्या बात है? Unfortunately, it's going to be Suggest and Reita who take him out of the equation. 2 on 3, and that guy still has his judge, so firing it blindly, he's trying to find something. You see, the showstopper goes through, and that just creates more space. Here comes the From the Shadows. Oh my god. On the backside, just kind of positioning. ये लोग अलग प्लांट देते हैं बे, अपन लोग कॉर्नर में देते हैं, ये लोग पीछे देते हैं थोड़ा। वो पीछे वाला प्लांट इसलिए कि देखो साइफर वाले को भी इजी पीक मिले, इसके लिए देते हैं वो शायद। वो एंगल से भी अच्छा पीक याद रहेगा। याद रख के करना क्या है। आप मॉर्टल रहेगा ज़ेरेफ अमन। सोलो क्यों करूँगा तभी याद रखूँगा। जब अच्छा खेलने का मन कर रहा है सोलो, मतलब देखो सिनर्जी वाइज ये सबसे वो लाइनअप है जहाँ पे एक दूसरे का समझ के खेल ले वैसा। swarmed from 2 different angles. Hello chacha, hello bye. क्या हाल है? And yet another timeout here for Paper X, their second one. And that's all the timeouts that they're going to have. Might as well stop this momentum as early as possible, right? 8-8. ये गेम क्लोज जा रहा है We've got so much to टाइम आउट है ना अब, या अब वन साइडेड होने वाला है जो भी होगा। They have the strats for this. सोचो अभी 13-8 हो जाए कोई एक टीम का। Sometimes Takage is that bit of a lurk. You can tell that Paper X have they're not just trying to cook up strats. but तेरा favorite Valorant player कौन है पूरे ऐसे duel में? No, it is a lot, and I think पूरे ऐसे duel में it's a big map. There's a lot favorite of Valorant angles. player. There's a lot of stuff you can do with it. I actually really like this map for that sake alone. Is that there's a lot of different. यार वैसे टेक्निकली तो बिंक्स ही है। उसके अलावा अगर सोचे क्योंकि बिंक्स को मैं यार ये कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड इसलिए नहीं करता क्योंकि वो एनीवे उसके कंपैरिजन में और को है नहीं वैसा है कि वो सबसे इजीएस्ट चॉइस है इस चीज में। बाकी लोग एक बार फिर भी वो 19-20 है, बिंक्स 25 है वैसा है। मतलब जैसा गेम प्ले हम लोग का ट्रायड में वैसा उसका चिल गेम प्ले में है, वैसा उसका कि हमको इमॉर्टल पहुंचने के लिए रैंक पुश करना पड़ा, वो मजे मजे में डी रैंक होके इमॉर्टल बना गया आर के थ्रो करके। वो ऐसा ट्रायड करने जाए तो रेडिएंट पहुंच जाएगा। DFM has done such a good job, a lot of weathering the aggression from Paper X. रेबेल मत बोलना, नहीं रेबेल एक टाइम पे हुआ करता था बहुत पहले जब वैलो निकला था, तब विंग्स के कंपटीशन में रेबेल को गिनते थे कि हाँ ये भी वैसा। अभी रेबेल का कंपटीशन इज प्रोबेबली अमन। ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये पता नहीं, बट अमन ने इम्प्रूव कर रहा है देखा जाए तो। अब वो तो ऑब्वियसली सबने ही किया है बे। रेबेल ने तो वैलोरेंट खेलना बहुत कम कर दिया था बीच में। Yeah, precisely. It's a good little trap setup. It's a flash. After Binks, देखो after Binks थोड़ा debatable है। They're only able to find one. The set play After Binks मैं बोलता हूँ भाई। Aim wise देखे ना you know, the early part of the round, तो रहेगा भी है, ज़ेरेफ भी है, पर मैं ओवरऑल में ज़ेरेफ को ऊपर प्लेस करूँगा क्योंकि वो टीम प्लेयर भी है, उसमें सारा क्वालिटीज है अच्छा प्लेयर का। पर बाढ़ का है थोड़ा सा। उसने यूरो लेके ऑफ कर रहा है अभी। Clinton is getting on with his year, so he's not और kौन है? TikToks. There's darn TikToks these days. Those kids and their TikToks. Oh, look out for Seconds playing so. We haven't seen ये वॉल याद कर ले भाई पर। I mean, we don't have Sage. I feel like that's like the ultimate TikTok. हाँ बे।
agent, right? पर ये वॉल घुसने के लिए बीटी हो जाएगी ब्रो, वहीं से एंट्री करनी होगी। कोई भी एजेंट का। हाँ पर ब्रो फ्लैश या तो डॉज भी हो साइफर जाता कैम है। का, ना तो साइफर का कैम डाल देंगे या सोवा का इनिशिएशन दे देंगे। अपने रैंक में नहीं होगा बे, रैंक पे पिटेंगे अपन। बे याद करने का, कॉल आउट करने का मजा आता है, ऐसे तो पूरा रहता है। नॉन भरोसा टीम रहेगा अमन क्रू रेबल। हाँ भाई It's a great little change up here from the side of Paper Rex, getting a little bit more pressure towards mid, trying to get that information, trying to use that kind of रहेगा स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ एजेंट चॉइस। हाँ मतलब अगर मेरे को चाहिए होगा एक ड्यूलिस्ट चाहिए टीम में जो घुस के मारे, वो काम रहेगा कर लेगा। Reactions? Clapping? Okay, good enough. Good enough. Oh, there it is. Okay. There it is. A little bit delayed. A little bit delayed. Singapore to Korea. Zoro by welcome to Mental Fam. Do the Discord server. 70 MS, 60 MS, maybe. I don't know exactly what it is. What is it? 70? I think it's 70. Yeah. It's not. For my account at least. Sherlock, हाँ Sherlock का भी अच्छा I है। have 5 MS when I play Valorant in Korean. Okay. Sherlock इनिशिएटर अच्छा खेलती है, बट That's Sherlock right. के लिए कोई ड्यूल अच्छा नहीं खेलता। That's right. I may be old. नहीं Sherlock का उसका इनिशिएटर अभी रेज, उसको मैं रेज देखता हूँ, रेज भी अच्छा खेलती है। I don't know. I think you हाँ can वो do it. मतलब वो भी मतलब वो मल्टीपल एजेंट्स खेल लेती है, उसका वैसा नहीं है। It's misplaced, but I appreciate it. मार Look के at this भाग गया वो। control and oh good. No smokes. Best all-round player in Quick scope SA12. into a gate crash, and all of a sudden he's back towards the A site. He's ready for a secondary hit if it so comes. पता नहीं यार मेरे को कोई दिमाग में आ नहीं रहा है। I mean, I'm just. It's kind of playing it like Jet. He does play it a bit like Jet. Yeah, you can feel that tendency in him, where it's a hit and run, and like a bit. रिजल्ट डालेगा क्या? I don't Plant know. पे This one, डालेगा though, Shing शायद। has the showstopper. This प्लांट हो could be रहा है, अरे deadly. डाला एक। And he is going in for it. Takache immediately backs off, but thanks to the intel gathered from Forsaken with the dimensional drift. Oh, it's so good. The perfect counter to Viper's Pit. But you know what else is a counter? Is Anthem on this off angle. Gets one, gets two! A third! अबे पागल है क्या, यूरो लेके ऑफ कौन करता है? Trying to keep the dream alive. Anthem as well. Going in for a peek, and Benkai onto a one-on-one. He's bagging. आगा ये gate crash. अरे क्या थ्रो किया रे बाबा। Up to the classic to finish it off. उसने टीपी पर साइड पे छोड़ के रखा था हाँ और उसने उसके मुंह पे टीपी मारा है। हाँ पैनिक में टीपी मारा है। अरे थोड़ा सा पागल है क्या, क्या थ्रो कर रहा है, 1 HP है वो बंदा। ये अमन और रेगा वाला थ्रो किया है। चुपचाप स्पाइक के लिए खेल सकते थे 2v1 में भी, पीक कर करके मरना है। ऐसा वाला थ्रो हम रैंक में करते हुए 5 HP वाला बंदा। ये देखो मैं क्या किया है वे, क्या किया ये। अबे ये तो प्रॉपर मतलब ये अगर मैं कॉम्पी प्लेयर मतलब मैं अगर खेलता हूँ मेरी टीम में कोई ऐसा कर दे मैं गिव अप कर दूं। मैं बोलूं मैं खेलना ही नहीं है मैंने तेरे साथ, तू भाड़ में जा साले, तेरे को थ्रो करना है, अगला राउंड मैं ही थ्रो करूंगा, मैं ऐसा थ्रो। Is this really commitment to the seaside? They're trying to listen for it, and it is. Yeah, no doubter here. They are fully encamped on this C site. They're starting to push it out to the angles. This could be a big fight coming through. Mind freak! Unfortunately, only good for one. DFM, the teamwork is good. The way that they push out together this time around, so much more coordination. It's tougher for Paper Rex to find those 1v1s. And even with the defender locked down into play, he saw his barrel, he saw his nail bang, and nail bang. Guys, अपना prediction था 13-10. Let's see. Let's see. 13-9 तेरा था, 13-9 तेरा था, 13-10 मेरा था। 13-10 नहीं था भाई, 13-11 था। 10 मेरा था, तेरा 13-9 था। जा, अरे मेरे को पता है ना, तूने 9 बोला था, मैंने 10 बोला था, मेरे को याद है। मैंने 10 बोला ही नहीं था। तूने 9 बोला था, तो वही तो बोल रहा हूँ, बहरा है क्या? अरे तूने 9 बोला था, मैंने 10 बोला था, फिर तूने बोला एक का ही फर्क क्यों है अपने इसमें? भूल गया क्या? 10 रहेगा। अरे पागल है क्या तू? थोड़ा सा भी बोल रहा है तूने 9, मेरे को याद है तूने 9 बोला था। जस्ट आया मैं, आई वांट थर्ड मैप। हाँ भाई होने वाला है थर्ड मैप तो। मैंने बोला ना ये गेम तो जाएगा ही, DFM जीत रहा है इतना तो दिख गया था।
यहाँ से पेपर एक्स कमबैक कर ले तो, पर वो बहुत मेजर थ्रो था वो जो इसने किया ना मुंह पे टीपी वाला राउंड, क्रूशियल राउंड थ्रो किया है वो, लेजिट। वो लीड देने वाला राउंड था, वो लेना है देना था, दे क्या है। Down to 21 HP, and Forsaken's trying to back him up. It's going to be that fake out that goes through, but I think DFM kind of expected. They're not even DFM 2-1 नहीं जीतेगा तो पेपर एक्स ही। अभी वो लोग हंसी मजाक में खेल रहे, थर्ड मैप सीरियस खेलेंगे मेरे को लग रहा है थोड़ा। ये सब पुश ओवर पुश नहीं करेंगे, और थ्रो वाला गेम प्ले नहीं करेंगे, आई होप। Which keyboard best for gaming with laptop? ये तो मेरे को आइडिया नहीं भाई, लैपटॉप के साथ कौन सा कीबोर्ड बेस्ट है। जो कीबोर्ड अच्छा चले भाई। Literally, there's no one even remotely close for. So तो है। space cleared. Yeah. स्पेस बना रहा था गाइस, अमन है, स्पेस बना रहा था। Better safe than sorry. Exactly. So good for DFM. Even then, Paper X, they might. It's a 5 against 4. लैपटॉप का कीबोर्ड इज द बेस्ट, हाँ भाई। One bulldog. Maybe Mind Freak has the Cosmic Divide, but I don't think you use it this round. I agree. I think you need to save it. Trying to get additional intel too, but no. What? All right, go. They're going in for a Jing. He's blast packed all over. ओए तेरी बहन दी, ये क्या थ्रो किया है? Oh my god. Wonderful throw. मारा है एक बंदे को। Wonderful throw बे। Wonderful. I'm speechless. DFM भाई, तुम मारना डिजर्व तो करते हो ये थ्रो के बाद। I mean, insane. ये एकदम उसने बोला कि भाई Forsaken भाई तुम एक थ्रो करेंगे, एक काम करेंगे, ठीक है भाई, बैलेंस ऑफ। 27 के लेवल सस्पेक्ट। I mean, you cannot be सजेस्ट है वो वैसे, सस्पेक्ट कर दिया तूने उसका नाम। सस्पेक्ट बढ़ाएगा। कोई बात नहीं, सस्पेक्ट। Oh my god. सस्पेक्ट बना देते हो। एक गोली में मारे क्या इसने लास्ट में? ये क्या? लास्ट तो किया। I mean, the confidence here for Thrifty Paper कैसे X after still plant? there despite the scoreline, still there Thrifty तो despite thrifty होता है ना, bro, after having plant या one heck before of a plant थोड़ी map. मैटर करता है। And it forces out the second time out from Detonation Focus Me. नहीं वो बोल रहा आफ्टर what a प्लांट map we've इतने got साइड पे ruined. बंदे This रह has के been भी a good कैसे one. हार गए। वो तो हगास। जिंग ने हवा में मारा भाई एक बंदा नीचे कूद के। That's just one. वो जो दो बंदे बैक टू बैक मरे, to उधर break थ्रो किया। everything apart. फट गए अब DFM की भी। I don't feel any tension from Divide. He's like, so, every time I see him. ऐसे तो अमन भी नहीं थ्रो करता, नहीं ऐसे इससे बहुत अच्छे, इससे और बेटर थ्रो भी किया अमन ने, तुम शायद लोगों पे आते नहीं हो। And Malafovia is just like, all right. ये तो कुछ नहीं था, ये तो वार्म अप है अमन का। How do we? ऐसा वाला थ्रो तो गेम शुरू होते ही फर्स्ट राउंड में करता है। Issue I think that they're trying to deal with. ये तो वार्म अप है अमन का। Absolutely. I think they're just. मन को तो डिफेम क्यों कर रहा है? ब्रो ये उसने फेम है ब्रो उसका, ये उसने नाम कमाया है, तो वो पता नहीं है, बहुत मेहनत से उसने ये नाम कमाया है। तेरे को पता नहीं क्या डिफेमेशन के अंदर तो जेल जा सकता है। जाएगा, कोई गलती नहीं। जो चीज किया मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि क्या थ्रो करता है अमन भाई, शॉट। इसे काम ही मत करो फिर। biggest esports org in Japan. You look at their jerseys and they're just littered. एक किल रिकॉर्ड भी है, हाँ भाई। ये मेरे को लग रहा है गाइस जेलस है बे, उसका 2 किल का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना अमन ने, इसलिए छलता है बे। ना यार कितना अच्छा रिकॉर्ड था मेरा। लोएस्ट किल रिकॉर्ड था भाई। मेरे को 0 किल रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है अभी। आजा खेलते हैं गेम। मेरे साथ नहीं भाई, सॉरी। तू और अमन दोनों मिलके खेलो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करो बे। जब रिकॉर्ड के लिए लड़ना ही है तो एक दूसरे से लड़ो ना यार। मेरे को क्यों डिप्रेशन देना है बीच में? हम लोग में लड़ाई होती है, हम लोग ऐसा 10 लोगों में, मैं तो नहीं बोलता किसी को क्या मेरे बंदे ने 1 किल लिया 2 किल लिया। तू बोलने लायक है ही नहीं, तू बोलने लायक तू है क्या? तू 2 किल खुद ले रहा है तो क्या ही बोलेगा किसी को? हाँ तो वही तो, अमन भी तो 1 किल लिया तो हम लोग छुपाएंगे ना। छुपा तो वही तो छुपाने, ये बातें छुपाने लायक है ही तो नहीं मेरे भाई। इतना तू समझ, तूने लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, तेरे को बनने होगा तू उसको शेयर करे अपने दोस्तों के साथ। वही बात
unbelievable. करियर से गेम गायब कर दूंगा मैं एक ही दिन में। इतना बढ़िया उसने मेहनत से नाम कमाया यार वो एक किल करके। तो हमारा एज अ फ्रेंड मेरा वो काम है कि मैं उसका ये रिकॉर्ड उसकी ये मेहनत वेस्ट ना जाने। मावी भी खेल रहा था, मावी के भी स्किल्स ज्यादा थे पता है अमन के। अमन से हमें डिप्रेशन में चले गया वो एक किल के बाद, सीधा ऑल्ट F4 करके भागा था वो गेम के बाद वो। अमन मेरे को 3 दिन से बोल रहा था उसके बाद कि मेरे को गेम सेंस अपना एम अच्छा करना है। उसके बाद अभी तो सीधा अमन नया पीसी ले रहा है। अमन भी लाइक उसका लगता है यही लास्ट सॉल्यूशन है अब, इससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। कभी-कभी होता है पता, नए पीसी से ऐसा मोटिवेशन मिलता है। अबे कुछ नहीं होता है, ये सब मन की बात है। मतलब वही मन में ही वो मोटिवेशन मिलता है तो अच्छे से खेलते पता है। वही अल्टीमेटली दिमाग में वो सब छोड़ 11-11 हो गया, यूपी जाने वाला है क्या? विफ तो है भाई, विफ तो है जिंग भाई। Okay, actually might be able to do something here. Quick double. And DFM completely evacuated the site. Do we have lineups for this? It's just a simple one, but it's enough to put them off the spike. घूम के आ गया वो राइट से। Trying to do what he can to help with this, but the main problem अबे पता है यूरो के अल्टीमेट डिफ्यूज करना होना चाहिए था, मजा आ जाता। क्या बोलता है? Prime position just राइट से आ गया वो। Take the heads off every. वो दोनों को मार दिया उधर उसने। The fight comes up huge with quick double. Oh my god. स्टिक कर। Spike's been half. Oh भाई क्या निकाला है बे। He gets it and the उधर हगाए पर ये दोनों ने ब्रो। ये तो DFM का राउंड था, पर ब्रो फिर भी एक बंदा तुम पे पुश कर रहा है सिर पे, दूसरा तो डिफ्यूज पे बैठा है। एक को ट्रेड नहीं ले पा रहे तो दिक्कत है ना फिर। रिफ्लेक्स देना कितना ऑन पॉइंट है। देख बे क्या मारा है बे, क्या टैप टैप मारा है बे, क्या क्रेजी मारा है वो 2 शॉट। This is, I mean, मेरे को तो ये लोग को देख के डर लगता है भाई, ऐसा खेलते हुए लोग। DFM ये टीम का नाम है, क्या नाम आया था वो? फोकस मी क्या था कॉन्सर्ट? पता नहीं। I don't know about this, Clinton. पेपर एक्स तो पता नहीं। डेफॉर्मेशन था क्या था? कुछ तो ऐसा नाम था। क्या नहीं ध्यान से। फोकस मी ऐसा था। FM। डेफॉर्मेशन नहीं है, डेटोनेशन है, डेटोनेशन। डेटोनेशन, डिफेमेशन। Oh my god, again! Does it again! Oh my god, and now Forsaken comes in from behind too? All this information, all this juicy information. I know they're all here. Everyone from Paper X. वो भाई बेचारा नसीब खराब। 3-4 है और 2 कंट्रोलर जिंदा है। स्टिल गॉट दिस। नहीं बहुत यूटिलिटी है। नहीं होगा पर। बहुत यूटिलिटी है, रेस के बाद यूटिलिटी है, ओमेन फिर भी नहीं होगा पर। निकाल सकते हैं वे। नहीं होगा। बाइक इधर है, माइंडफ्लिक के बाद शॉटगन है। नहीं होगा पर। 3 है और फिर भी नहीं होगा। DFM gonna make a go of it, and Takajay's right in क्या the मॉलिंग मारी है mess. बे, पीक करते ए हगा। What? हगा ये तो बेनकाई ने हगा है। He just walks past all of those and he finds Benkai now. अभी देख एस्ट्रा के पास भी शॉटगन है और तीनों साथ में जा रहे हैं। उधर से एक बंदा तो मरेगा ही। जिंग की भी अल्ट है, सजेस्ट की भी अल्ट है, एक किल पे दवाई की भी अल्ट है। दवाई Here comes that party. Oh my god, it goes back and back. Suggest unfortunately eating it though. Takajay now trying to outdo. शॉटगन लेके आगे भाग रहे हो, पागल है भैया। Set free off a bit of that flank. He gets one headshot. Let's go OT, let's go OT. Triple kill now, maybe the 4th, but Defy holds अल्ट it कर दे दवाई। One more player. भाई दवाई अल्ट कर दे। One more click. भाई कितना लेट अल्ट किया इसने। Just biding time. Seeker sounding confirms it. Defy gets it halfway. He's sticking it. No way. ले गया ब्रो, impossible. क्या खेला है ब्रो। 13 to 11. अकेला निकाला है इसने गेम। इसको पता है ना उसको। नहीं ना उसको, उसका बंदा अगर क्लोज आ गया होता तो। अरे पीछे चांस नहीं लेता उसको। गन फाइट ले रहा था। हाँ पर उसके बाद उसने फेक टैप किया ना एक। रहता ना मैं बता देता थोड़ा। 2 सेकंड पहले गेम। नहीं तू हरा देता, अल्ट खोलने जाता ना, तेरे मुंह पे आके मार देता सामने वाला।
नहीं, मैं पहले फ्लैश करता, फिर अल्ट करता, फिर निंजा डिफ्यूज कर देता, और फिर उसकी बॉडी पे टीबैक करता। देखो ऐसे मैंने टेक्निकली बोला था 13-10 मैक्सिमम 13-11, पर फिर जीतना ये लोग को था, ये लोग ने थ्रो किया, ये इनका गेम था एक्चुअली, डीएफएम का गेम था ये थ्रो किया। ये तो जीतने वाले राउंड थे ही नहीं, लास्ट के दोनों राउंड डीएफएम के थे बे। ये दवाई अकेले निकाला इसने, सा दवाई खा क्या है पागल। But alas, when it comes down to it, that final showstopper versus showstopper face-off. Oh God, everything comes down to it. हाँ? और कोई गेम करने वाला स्पेक्टेटर? है ना इसके नहीं करने वाला। हाँ। क्या मजाक कर रहे हो? हाँ क्यों? किसका है? पता नहीं। नो देखने से मतलब है। He had a great half. Anthem having a wonderful map here. 21-16, 15 assists. Pacific. आपने 13-11 बोला था पहले। हाँ वही 13-10-11। देखा बोला 13-11 बोला था। Team effort from both teams. Really fun match. मैंने ये भी बोला था कि यार 13-11 कौन हारता है भाई। सजेस्ट के सारे यूसी हुआ। हाँ भाई। पर ये तो क्या हागा था ब्रो, ये तो ये राउंड भी इनका जीतने का था नहीं बे। कैसे जीत लिया वो इको राउंड। एटलीस्ट यार थर्ड मैप तक तो लेके जाते यार। पर चलो ये 2-0 तो चलो एक्सपेक्टेड ही था। अगला मैच एक खोके का बंदोबस्त हो गया है, थ्रो खेल लेता है। हाँ भाई अबे है कौन सा मैप बस इसका मैप पता चलेगा अभी थंबनेल में देख, मेरे थंबनेल में देख के पता लगा इसका लोगो है वो। हाँ टीम लिक्विड नहीं टीम सीक्रेट और टैलन का है, ये भी अच्छा मैच होगा। सीक्रेट और टैलन दोनों ही अच्छा टीम है, पर मेरे को लग रहा है टैलन जीतेगा। I think. Thailand versus. But that said, I mean, when it all comes down to it, this is a perfect way to open 6 बजे start होगा VCT Pacific. हाँ. What a fun day. What a way 6 बजे चालू होगा। आजा फिर एक गेम लगा लेते हैं। आजा गाइस। Your hometown team and हाँ. I'm tickled with this one. Yeah, बोल रहे हैं लोग 6 बजे चालू होगा। 5:30 बोल रहे हैं। 1 घंटा तो है ही, चला जा। हाँ 1 घंटा है। दिख रहा है इधर। कहाँ दिख रहा है? भेजू साइड कर वो। हाँ? साइड छोड़ तू इधर आजा। आओ गेम में आओ गाइस। अभी मैं ये गेम प्ले देख के मैं मोटिवेट हो गया हूँ, मैं मारने वाला हूँ ए स्पेस। आए आप गेम में आए। इन गेम माइक यूज करते हैं। हाँ इन गेम माइक, हाँ इन गेम ही ऑब्वियसली इन गेम। वो डिस्कॉर्ड लीव कर रहा हूँ मैं। कर दे मैं भी कर देता हूँ। आए गाइस सीक्रेट टैलेंट दोनों ब्राजील, हाँ वही दोनों लॉक इन में अच्छा खेले थे। बट आप मिड WP खेल सकते हो क्या? मिड WP क्या है भाई? मिड वेल प्लेड क्या बोल रहे हो? ला 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 आ जाए। अरे ये जंगली डव खुल गया यार। एक सेकंड, राइट क्लाइंट में जाके लॉग आउट करके फिर आना पड़ेगा।
Sign out. स्नैक्स भी है, स्नैक्स को बोलो ना फिर, ये मुंह दिखेगा तो आज इनवाइट कर लेंगे। एकदम रेडी बैठा था क्या? मेरे एसएसडी है भाई किसी। स्टार्ट वाइपर स्टार्ट। लेट्स गो भाई, चालू कर गाइस, चालू कर। लेट्स गो चालू कर। सिंगापुर भी था। सिंगापुर डरे क्या भाई? जिंक्स का गेम प्ले देख के आप। भाई वो दवाई क्या खेला बे? हाँ बे, उसने सही में अकेले ने निकाला है ये वाला तो। दवाई और दोनों ही भाई पूरा मैच निकाले भाई उन्होंने। सही में वो लास्ट के 2-3 राउंड इनके थे नहीं। हाँ बे क्या खेला है वो एक राउंड भी वो उनका था नहीं और लास्ट के 2 राउंड उसने बंदा मार के भी चिल्लाता भी नहीं है, मैं तो पूरा पीसी तोड़ दूं। वही तो बे, उसको इतना कॉन्फिडेंस है बे अपने एम पे कि वो तो ये तो मैं मार ही लूंगा। इजी है बे। हां बे, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए बस लाइफ में बे। मैं भी ऐसे मार के अभी कुछ चिल्लाऊंगा नहीं, ठीक है? मैं पहले बोल दे रहा हूं। तो मेरी तरफ से रिएक्शन मैं तो ऐसा मारूंगा ही नहीं, मैं पहले बोल दे रहा हूं। नहीं मैं मारूंगा बट मैं ऐसा रिएक्शन दे दूंगा, टेंशन ना। भाई पर तेरे रैंक को क्या हो गया भाई? ये होपलेस हो गया भाई उस दिन के बाद से। उस दिन जो डिरैंक खाया उसके बाद से मैं रैंक खाते जा रहा है क्या? खाते उसके बाद छोड़ दिया मैं, होप एकदम रैंक अप वाला होप ही छोड़ दिया। गेमिंग हाउस कब जाओगे? जाएंगे, टाइम है अभी तो, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। कितने दिन हो गया देखा नहीं आपका यूरू। कल ही तो खेला था यूरू, ये देखो। मैच गॉड लेवल यूरो, ये देखो इधर 716 सिर्फ तुम लोग ने मांगा था इसीलिए। भाई नियॉन ले रहा मैं। नियॉन तो खेला है नहीं बट किसी ने उधर। नहीं वो जिंग ने मैसेज किया नियॉन के। अच्छा ब्रीच लेना भाई, कोई प्लीज ब्रीच ले लेना। ले भाई पर तू ले, मैं लूंगा तो अंधा घूमेगा ये। फ्रैक्चर है ना? फ्रैक्चर तो हुआ ही नहीं यार। तो वीसीटी लाइनअप है। ये छोड़ेंगे, कोई को छोड़ भाई। खेलू के पहली बार? नहीं खेलना ही नहीं मेरे साथ मत भाई, पहली बार कहीं और। भाई पहली बार है ये हमारे साथ नहीं भाई, किसी और के साथ ट्राई करें। हां भाई हम रैंक पुश करने आएगा। यस, वेरी सीरियस पेपर एक्स गेम प्ले ब्रो। पेपर एक्स गेम प्ले भाई, कोल्ड गेम प्ले। या तो डीएफएम के सजेस्ट के वैसा मारूंगा या तो पेपर एक्स के जिंग के वैसा। सजेस्ट भी क्या खेला भी है ना? हां अच्छा खेला, बस अल्ट उसकी नहीं लग रही थी, बाकी सब सही था। हां वो तो अल्ट में लग भाई वन साइड खेल रहा था पूरा। स्टैंड इन माय वे, आई डेयर यू। शुगर डैडी Hey yo guys, what do you do for living? कुछ नहीं, अभी वीसीटी के लिए यहीं खेलना है ना वो रैंक्ड मुंबई सर्वर में। तो सिंगापुर लॉक के। सिंगापुर लगाया ही नहीं है। मुंबई है। मुंबई है, लगाया ही नहीं है। शुगर डैडी आ गया। मुंबई
मुंबई सर्वर का शुगर डैडी है वो। बाप रे बाप, डरा करे। अरे फिर इजी हो गया रे, मैं फिर पीआरएक्स का गेम प्ले नहीं दिखाता। नहीं दिखाओ, दिखाना तो पड़ेगा ना यार अब। ऐसा है क्या? ठीक है ठीक। हाँ भाई जिंग भाई को कॉल लगाया है तो अब देख रहा होगा ना वो। हाँ देख रहा है, नाम रोशन करना पड़ेगा। आजकल एसएटल गेम में इन क्यों नहीं करे? क्योंकि यार वो इनका मैसेज ना थोड़ा रात में दिन में आता है और दिन में मैं सो रहा होता हूँ। एक वाइपर पीआरएक्स फोर्सेकन ने भी एक राउंड थ्रो किया था 1v2 ऑफ करके साइड पे टीपी गया, ठीक है? तो अगर मैं एक दो राउंड थ्रो करूँ तो बुरा मत मानिए। इसको हम नीचे ले लेते हैं। मुझे रहना वाइपर, ये बहाना अच्छा था भाई। हाँ वही वाइपर को बोलना पड़ता है यार। ये वो एफके हो गया। सुन भाई, वो लोग ने फिर मैच जीता भी था, ठीक है ना? तेरे को जीतना थ्रो करना है, कर एंड में वो विक्ट्री वाला स्क्रीन आना चाहिए। अरे वो तो अभी भी तेरे पे डिपेंड करेगा ना। मेरे पे क्यों? टॉप फ्रैग कर रहा था भाई। ये एमिन आ गया, डैश मार गया वो। मैं स्टन दिया उसको, चले। हाँ मैं भी मारा था, लग गए। 120 साइफर क्लियर है। क्या बेकार वॉल बनाया है उसने रोप काटने के लिए। गाइस तू एमिन खेला कर, मेरे इस पे नेड मारा कर। 4 लोग डैश हुए थे बे। स्पाइक प्लांटेड। मेरे डिश क्लियर का मैं क्या करूं? बता रहा था भाई क्या करना क्या चाह रहा है भाई? गाइस करना क्या चाह रहा है? Last player standing. अरे तू एमिन खेलना गाइस, नेड मारना मेरे स्टैंड पे। एंटी 120 दिया। Sorry. आपने 75 दिया? कोई नहीं, नाइस ट्राई। स्नैक्स भाई लो था। बाप रे, मेरे को भरोसा उड़ गया अब तेरे कॉल से। क्या स्कैम है? वो भरोसा नहीं करेगा पूरा मैच मेरे कॉल पे। अब हो गया भाई। मैं सबसे पहले टैब दबा के ये देखा कि सामने सेज या स्काई है क्या। हील मिला उसको। भी भागते हुए आ रहे हैं। चल भाई गाइस, वेल डन भाई। गन उठा और मेरे को दे। फिंगर ले जल्दी आ। फीमेन घुस गया। आ रहा साइड आ रहा। 52। अरे यार स्पाइक प्लांटेड। फीमेन वाला 52 है साइफर। हेडशॉट। गाइस रीलोड क्यों नहीं किया तू? रीलोड नहीं हुआ। हां तू फालतू स्विच किया तू। लो है वो। रीलोड के बीच में गन स्विच किया तू, पता नहीं क्यों। कौन से एटीट्यूड में गन स्विच किया पर मेरे को समझ ही नहीं आया। शॉट ही सेव कर रहा है, पागल है क्या? जा रहा है किल के लिए, कोई आएगा तो वो आएगा रे ना आएगा। साइफर 52 है, फैंटम है उसमें। ये दोनों पे गन ही नहीं था क्या? ये टाइम बहुत इजी था। कौन सा दोनों पे गन नहीं है पागल? फैंटम है वो साइफर पे। साइफर लो है ना। One enemy remaining. 52 है। Surrounded by minha família. We won't. तेरे को क्या करना था पता है? तूने आर्केड वाले को मारा ना, तेरे को सीधा भाग के मेन आना था उस टाइम पे। तूने वाइपर और साइफर दोनों साइड पे खेलो। वाइपर इधर आ। अपना ड्रॉप जा रहा है क्या? अरे मतलब अपना ब्रीच। हाँ इधर अपना वाइपर मतलब अपना ब्रीच। ये स्टन। Gotta go. I'll show them. Lintik kayo. Trevor. एमिन हो रहा शायद। एमिन पे मारा उसने। वेल डन, नाइस थ्रो गाइस भाई। आर्केड हो सकते हैं। एक है और एक इधर है। एक और वाइपर। ब्रीच एंड साइफर मेन पे है। वाइपर लेफ्ट
उधर आ रहेगा, ए पे आ रहेगा। हाँ 2 लोग एक हैं। Dead. एक मरा, एक है ब्रीच पे। वाइपर -80 है। दोनों में ना 1 enemy remaining. Spike down A. क्या हो गया इसको? Lola was right. Weeds are difficult to kill. मत बोल तू, मेरे को पता है तू क्या ही बोलता है। ये वापस आ, स्टन दे। फंड्स टू नहीं है भाई स्पेयर। गाइस ड्रॉप चाहिए क्या? नहीं। Go. पक्का? I'm out of here. Are you sure about that? हाँ एक को मारूंगा अगर हो सके तो। जल्दी स्टन दे तुरंत, इधर से दे। Flash out. मम्मी हाँ मेरे को लगा अब तेरे जाने के पहले एक फ्लैश मार दूं। मेरे को लगा पता नहीं स्लाइड मार के इतना जल्दी पहुंच जाएगा। एक आर्केड भी है। मल्टीपल आर्केड। रुक जा, टावर घुस गया ऑलरेडी। वेल डन। Gun here. There. अंडर पास देख रहा हूँ। जेट टावर था। हाँ जेट टावर है। ये वापस जाना पड़ेगा। वो दो टावर है। साइफर भी डाल। जेट -101. Spike down B. 1 enemy remaining. क्या बात है, स्नाइप बस टंग खाओ। They're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Can I get a drop? I'm out of here. नेक्स्ट ये वाला स्टन दे। नेक्स्ट गेम तो हो गई नहीं अभी। I'm out of here. वाइपर ड्रॉप देना। नेक्स्ट गेम सीधा वॉच पार्टी होगी। मैं फिर लास्ट राउंड की शील्ड पे खेल लेता हूँ। स्टन दे तुरंत स्टन दे। तेरा वाइपर कौन सा एंगल देखो बता। ऐसे था तेरे मन में, पता नहीं था अभी। टेंशन मत ले। हाँ वन वे खेल रहा है भाई वो। हाँ बहुत तेरे। लेफ्ट चेक करना हो सकता है। इमेन साउंड। फीमेल साइपर ने कैमरा लगा। अरे ये मेरे टांगों पे क्यों स्टन मारा तूने? मेरा एम देख के हिल गया। माफ करो लेफ्ट रोड नेट लैग हुआ। मैं पैनिक हो गया, मैं बोला ये क्या हुआ टांगों के नीचे। नेट लैग हुआ। यार जिंग भाई इज डिसअपॉइंटेड। अरे अल्ट तो है। नेट लैग अल्ट तो है काइस भाई, तुम शायद सजेस्ट भाई से मोटिवेट हो। ये चढ़ गया एक। ब्रीच गया पीछे शायद। गाइस शायद भूल गया था एक सैचल तेरा यूज हो गया ऊपर चढ़ने में। Spike down A. Here comes the party. साइफर बी। गाइस स्पाइक इधर है। ओ भाई चढ़ के मारा है भाई। सुन आर्केड ये इधर है डिश है। डैडी जी आपको चढ़ के मार दे। कोई नहीं नाइस। रहना साइड जा रहा है। प्लांट कर रहा है रहना। रेना प्लांट नहीं कर रहा है। रेना बोल रही तू डैडी होगा तो क्या, मैं मम्मी हूं। मैं रुक जा, तेरे साथ ही आ रहा हूं, डिश आ रहा हूं। अरे डर गया भाई ये डर गया। अरे ट्रिप तोड़ के आता फिर क्या यार, यही तो मेरे को पसंद नहीं है यार इनका स्मॉल पीनट ब्रेन। साइफर का ट्रिप इधर भी है साइड पे किधर। चल पीनट ब्रेन बोलता है। ओह लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। बाप रे जेडिव भाई। रोटेशन देने का, फ्लैंक ट्रिप तोड़ देने का रे। तोड़ के यार। Don't get shot. तो फिर क्यों बोला कि ट्रिप होगा? मतलब वो तोड़ के उसको बोलेगा कि मैं जा रहा हूं बस। मेरे को इधर से रोटेट नहीं करना। तो क्यों कर रहा है भाई? जल्दी साइड मत छोड़ो क्योंकि तुम लोग पुश करके थ्रो कर रहे हो। तुम लोग को लग रहा है तुम लोग क्या। अरे यार अरे वो डेज भी हुआ था पता है। डेज हुआ था वो मेरे स्टन में। 1 डेज लिख के आ रहा है। नेट लेके रेडी रे तू। हां भी मैंने मार फ्लैश। रुक जा फ्लैश दूंगा। पीक मत रख। 3 2 1 लैंड में मारो उसको। 3 राउंड है वे। वाइपर में भाई ये क्या मार दिया।
उसकी रेना को प्रो ब्लाइंड में मारो उसकी रेना को। रैंडम ऐसे ऐसे बाहर निकल के 2 बुलेट मारो उसके माथे में चिपकी है। इधर आ वाइपर, इधर इधर इधर, यहाँ से स्टन देना, ये वाला स्टन दे दे। अरे तेरे को नहीं रे, वो डर गया, बोला वाइपर मैं कैसा स्टन दूं, मेरा सिर्फ बॉल आता है भाई। अपडेट हो गया। साइबर के साइड हिट होगी ब्रीच में। Get out of my way. डिमेन स्टन किए वो लोग, रोटेट करना है। अंडर पास से अल्ट मारेगा। What? Take this. अंडर पास जेट साइड आ गया। बे ब्लाइंड कर दिया उसके ब्रीच ने, क्या टाइम पे यार, क्या नसीब है यार। बढ़िया बढ़िया। वाह गाइस वाह। साइड -50 डिफॉल्ट डिफॉल्ट लेफ्ट में नहीं उसमें, और डीगल ही है। गाइस गाइस मतलब तूने सैचल मारा है तो उड़ना जरूरी है, ऐसा गया है तू, देखा मैं देखा। मारा क्या नहीं ये, मारा क्यों नहीं बंदे को? तू भी कंफ्यूज रहेगा ना, हमें से आके मारा, बहुत मजा आता है। तू जब रेस खेला तब तेरा मन में वैलो जायरो ओनली ऑन सोल वाइपर चैनल। कौन सा जायरो चला यार? आपको एवरी 10 मिनट्स में याद दिलाऊंगा व्हाट्सएप चेक करने, ग्रुप गेम्स में इन करने, ठीक है भाई। स्नैक शील्ड है। अरे गाइस कोड बन रहा था रे मैं। नेड फेक मत दे, सीधा साउंड आने पे पेगा करना मेरे स्टन के साथ। साइड पे मत खेलो उसके। ये ड्रॉप है क्या? ड्रॉप है क्या? ड्रॉप पे गोली मार। ड्रॉप है ड्रॉप है ड्रॉप है। एक वॉकिंग किया टावर। Flash out. ब्रो होपलेस बन के खड़ा था रहना, गिव अप कर दिया था फ्लैश के बाद। एक साइड गया साइफर। मारना ब्रो, मैं बेट हो रहा हूँ। आर्केड ऑपर आएगा। साइफर साइड ब्रीच आर्केड है। ब्रीच आर्केड था, उसका जेट भी आर्केड था ऊपर। Spike planted. जेट साइड पे है क्या? One enemy remaining. बैठ दी। ऑफ उठा देना उसकी। आओ उठा दे, मुझे देना वाइपर। पूरी अल्ट मार दे, पूरी अल्ट मार दे, पूरी अल्ट मार दे, फिर डिफ्यूज कर। वाइपर ब्रो की बोल रहा है। अरे वो ब्रीच का नाम वाइपर है यार, छेद कर दिया बे। मेरे को देना वाइपर। मैंने दे वार्ड लेवल अप, वार्ड लेवल अप। I hate waiting. ला ला ला, Let's do this. ये रुक, ये छीन लेगा रुक। वाइपर फिर से रिक्वेस्ट करियो बैंड। तू भी ले लेना, स्नैक्स से ड्रॉप ले ले गाइस। हां एक सेकंड। भाई वो रेडा कैसा खड़ा रह गया था बे, बेचारा एकदम इसका होपलेसनेस फील हुआ मेरे को। वो फ्लैश होने के बाद हिला ही नहीं, कीबोर्ड माउस कुछ नहीं हिला है उसने। अरे तू क्यों पिक ले रहा है बे? डरते है क्या? भागना इधर से भाग। हगा यार हगा। ए चल चल चल, अभी एक्सक्यूज मत दे, अभी पूरा भागने का साउंड दिया हूं मैं। अरे बट तू स्टन क्यों दे रहा है उधर, जैसे बंदा बैठा है कोई को। वाइपर भाई ऑफ चाहिए थी, ऐसे मांग लेता यार, दे देता मैं। Last player standing. Spike planted. अबे ये क्या मार रहा है भाई? गाइस ये तो तुम्हारा हगास था और उसके रेना ने कुछ भी मारा है। सुनना ब्रो, जब मैं कॉल दे रहा हूं नहीं एक सेकंड, तूने कॉल पहली बात तो राउंड शुरू होने के लास्ट सेकंड पे दिया, चालू भी हो चुका था उसके बाद तेरा कॉल है, ठीक है? पहली बात
पहली बात। और दूसरी बात, तूने क्या कॉल दिया यही समझ नहीं है मेरे को। लगा तू मेरे को स्टन देके पीक करने बोल रहा है, होल्ड करने भागने कौन बोलता है भाई राउंड शुरू होते ही। नहीं यहाँ तक तू पुश करके आ रहा है, यहाँ नहीं तू यहाँ तक मेरे साथ आ रहा है और फिर मेरे को बोलता भाग। ये क्या सेल्फिश गेम प्ले? मेरे को यूटिल्स नहीं चाहिए तेरा। पागल है क्या? चल पीक कर, चल स्टन दे रहा हूँ, फ्लैश भी दूंगा आगे। डर गया भाई, डर के खेलेगा कैसे जीतेगा? हाँ क्या सैचल मारते हो भाई। इधर इधर है आर्केड है। एक फ्लैग ये वाले वॉल पे फ्लैग देके चलना, लेफ्ट वाले पे दिया था। एक और इधर है क्या? नहीं है गया वो लोग। Spike down B. ए मेन आ रहा होगा। ओ देखो पागल, दो लोग पीछे से आ रहे अपने। ए ड्रॉप आ रहे, ड्रॉप। पिक मत कर, मेरा स्टन आने वाला है। 4 सेकंड रुक, 4 सेकंड। नीचे से जिगल पिक रख। नीचे से जिगल पिक कर रहा है ना तू? है ना तेरा एम है ना? आया 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 आया। आर्केड नहीं हुआ रे। 120 लो है वाइपर। One enemy remaining. ऑपर है बे 40। Last player standing. अरे मत स्मोक टाइमिंग नहीं। हाँ वो मर गया था ना, वो तो स्मोक डाउन जाना ही था। क्या बस कैम है क्या? कैम दिख रही है? कैम मेन का है इसका। गन स्विच किया उसने, मत कर। 30 seconds left. ओह माय गॉड, बॉल्स ऑफ स्टील ब्रो। भाई एटीट्यूड चाहिए करने के लिए भाई। एटीट्यूड सही तो गया अभी। अबे पागल, जंप मारने के बाद अपन तो भाई अंधा जंप मारते शॉट ही चला दे। पूरा होल्ड किया, 2 कदम और आगे चल के गया फिर मारा है। हां वही। वरना तो भाई अपन कूदते ही सीधा धाई धुई जो चला, लगे नहीं लगे वैसा चलाते। इधर मैं अल्ट मार देता हूं, जाओ तुम लोग एक कूदा ले। उसको पूरा भरोसा था अपने शॉटी पे, उस हिसाब से ही कूदा। भाई ये साइफर पीआरएक्स का मैच देख के आएगा। चल फ्लैश दे तू। अरे यार गाइस प्लीज तू नेड वेड मत निकाल यार, तेरे लिए यूटिल मैं मारूंगा। तू गन पे खेल। ये इधर आ गया। हां अरे पर तू गन पे खेल, तेरा एचपी फुल है यार। रोफ चढ़ रहे। अरे वॉल बैंक आया मैं हेडशॉट। पर भाई गाइस सुन ब्रो, एक हेडशॉट खाया है तू, तेरा हेल्थ फिर भी वाइट में था फुल में देखा। पिक करना ब्रो, पॉइंट ही नहीं है। ड्यूलिस्ट लेके ऐसे फटी में खेलेगा तो। तेरे को किसने बोला नेड मारने यार? खेलना गन पे। फ्लैश किसके लिए दे रहा हूं मैं? वो फ्लैश में मार गया मेरे को पता है। One enemy remaining. वही है। Last player standing. जाएगा भी जाएगा। 7 बुलेट। डैडी है ब्रो, मारेगा। ओह माय गॉड, किधर रहेगा बता वाइपर? टावर विकेट के राइट साइड पे नीचे। टावर इधर राइट जा और लेफ्ट नीचे क्लियर कर बस। देखा क्या? टॉप पड़ी है सीटी पे। अबे तो इतना बुद्धि तू पुश के टाइम भी लगा देना, नेड क्यों खोल रहा है? अरे भाई मैं नेट डाल रहा था कि तू ना मेरे नाम मरने के लिए तेरे को बस पीक करना है, क्योंकि मैं यूटिल तेरे लिए ही दे रहा हूँ। तो तू बोलेगा क्या? बोल के पागल है, एक राउंड पहले भी तो सेम किया था जब तूने सैचा लगा था, भूल गया क्या? उधर आर्केड पे जो सैचा लगा था। हाँ इधर जो तू सैचा लगा था तब मैंने एक फ्लैश दिया था उसके बाद इधर, तभी तू जो इधर 2 सैचा लग के आसमान में उड़ा था मेरे बाजू में, तभी ध्यान नहीं क्या सैचा था तेरे बाजू में, तेरे फ्लैश दिया था मैं। वो मत यार। अबे गन मांग रो, तू हग मत, इससे ड्रॉप मांग। मत जा यार, पुश मत कर उधर, मेरे पास बाई नहीं है। मेरे पे तो अल्ट है ना, पुश करेंगे ना। ड्रॉप दे बाई तो दो कोई। स्नैक्स भाई एफडी बनाओगे? बाप रे। Spike down A. अल्ट कर रहा हूं, रुक। अरे यार गन लास्ट ड्रॉप से साइफर ड्रॉप से सीटी पुश क्या होगा? One enemy remaining. ये पक्का सीटी आ रहा होगा। ओ देखो ये भी उधर ही है, झूल के आ जाए, मैं तो वेट कर रहा हूँ।
आओ यार झूल लो एक बार, थोड़ा सा झूल लो यार, थोड़ा सा भाई। गाइस क्यों पागल है क्या? हो गया। Switching sides. Gotta go. This isn't a fight. It's stealing lunch money. ये सुन ये जाएंगे, मैं ये वॉल करके घुस जाऊंगा साइड पे सीधा। आ जाओ भाई। स्टार्टिंग रन देना। मैं लेट लड़का हूँ या तुम्हारे साथ ही आऊँ? कैसा तुम्हारा खेलना वैसा खेल रहा हूँ। आर्केड जा साइफर। पुश करेगा। हाँ मैं लॉक करो। एकदम लेट आ। Gotta go. थोड़ा स्टन के लिए होल्ड कर लेंगे। I suggest we keep winning. I think वो करेगा इधर। करने दे। Reloading. Spike, I'm out of here. अपना स्टन तो दे दिया है। Go, go, Enemy go. spotted A. वेल डन। एक और क्लोज है। Come here. एक और है, रुक जा मैं क्लियर करूंगा। Enemy spotted A. Got the spike. देखा मेरे मुंह के आगे से गन उठाएगा तो ऐसे होगा। Spike's down. अबे पागल है क्या? Get lost. जेट मैंने 60 साइड है। हाँ साइड पे ये वो ड्रॉप था, ड्रॉप की तरफ था, नीचे ड्रॉप डाउन है ऑलरेडी। One enemy ड्रॉप remaining. ड्रॉप 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 नीचे 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 साइफर नीचे नीचे नीचे। नाइस। Go, go, go. They made you weak. कम डाउन। शेरिफ ले साइफर शेरिफ। Listen up. Kill them before they kill us. अबे यार। भाई राउंड जीता दिया, उससे ज्यादा तेरे को क्या चाहिए उससे अब? गन चाहिए भाई, राउंड आ चाहिए। ये प्लेयर चाहिए। भाई मेरी नजर उस मनहूस घोस्ट पर पड़ी। ये प्ले देख, घोस्ट आई उसके हाथ में वो मरा, अगले आई मेरे हाथ में मैं मरा। स्टार्टिंग स्टन दे, प्ले देख बस तू, ये प्ले देख ठीक है, नियॉन का प्ले देख। स्टन चाहिए। स्टन दे। हां बस ये स्टन दे, प्ले देख बस, तू पागल हो जाएगा। देख रहा हूँ, ठीक है देख रहा हूँ। क्या तू यू टर्न में स्लाइड मारना ले क्या? एंट्री देख तू बस, स्टन दे। दिया दिया Sword's good. देख रहा हूँ। Satchel out. शॉकिंग। एंट्री देख। वाओ तेरी माँ का, मैं क्यों मरता हूँ ऐसे में यार? Spike down B. 70 है 70 टैग्ड, एक गोली I got spike. हील भी नहीं किया। इधर है। माइनस Enemy 30 Enemy remaining. मेरे पास है। शॉट ही है, मत जाना क्लोज। देख वहां क्या कर रहा है? नाइट पर पेपर एक्स का प्ले। कैमरा मार, कैमरा से मारता हूं। No one thinks anything. यार कैमरा पिक के मारता उसके मुंह। तीनों के भी नहीं मारा नाइट। Fight till the end. यार भाई No matter स्नेक्स what. भाई सेम भाई। अरे मैं वॉल पे घुस गया ना। तुम्हारे वॉल के पीछे से मेरे को घुस के मार दिया उसने, वॉल गिरते ही। ए वापस भाई मेरे सैचल का 12 डैमेज पड़ा उसको वहीं पर। अबे यार वेरी डिजर्व। टीम प्लेयर हूँ यार मैं, टीम प्लेयर हूँ। बोनस है क्या? मेरे को ये दे, तेरा शो दे दे, गोश्त दे दे, स्नैक्स। स्टन दे। I'm out of here. आए वेल डन गाइस भाई, वेल डन। गया। मार तोड़ो ना। आगे पीछे बाउंस हुआ है बे। ये गन उठा लेगा इसने अपनी बुलडॉग गिरा दी। नहीं मिलेगी अब। ओ तेरी बैंड दी। और एक है। नाइस रे, आजा अभी चलते। अरे भाग भाई, भाग। One enemy remaining. सिटी है। मैं प्लांट कर रहा भाई, फिर कर दे तो, प्लान कर दे, सीधा प्लान कर दे तो। ये सब सीधा तेरे को देख सकता है वो। सेफ प्लान देना। वेरी सेफ। पहुंच ना गया। Spike planted. Blinding. सिटी से स्टन दिया। सिटी पे ही है वो। Flash out. मेरे पास क्रॉस है उसका। अबे पिक मत रख। क्रॉसिंग है वाइपर पे, फ्लैश मारना दो। फ्लैश मारो, सेल्फ कॉल देगा। फ्लैश नहीं। ठीक है, क्रॉसिंग दिख रहा है वो। मैं क्रॉसिंग देख रहा हूं। अच्छा सिटी का क्रॉसिंग देख रहा है, क्या कैमरा लगाया ये? सेक्सी कैमरा है, देख टैग मारेगा। क्या रोप्स पे है क्या वो? हां रोप्स पे अभी सिटी आ रहा है।
निकल जा अपन जीत गए निकल जा ये कर रहे हो लॉल क्या राउंड निकाला यार, मजा आ गया यार। इसने पीछे वालों को मार के बहुत बढ़िया काम किया। ये ब्रीच आफ्टर शॉक भी खाया पागल जो तो मैंने इस रीना के साथ हरकतें की है ना यार मेरे को हजम नहीं हो रहा था, इतना अच्छा टीममेट है। ड्रॉप मांगो भाई चेक व्हाट्सएप कर लिया भाई कोई भाई मैसेज ड्रॉप आ मांगो, गया मेरे पास मैसेज बहुत पैसा है, ड्रॉप मांगो जल्दी। Need a drop. इन कर दिया भाई। 9:30 अमंग अस हो जाए। स्नैक्स भाई इन कर दीजिए अगर खेलोगे तो। खेलते आज खेलते बहुत मजा Go. चलो रीच नहीं है इधर। Right there. Watch out. My ult's ready. स्पाइक ले जाओ भाई। वो रोटेट कर गए, वापस आना था, वापस आ जाओ। Enemy spotted A. Clearing out. Reloading. एक ड्रॉप है मत ले मेरे को क्रॉस कर। ड्रॉप वाले को मैं मारूंगा, चिल करो, पिक मत करो। Wendell. Begins. गिर गया ड्रॉप, गिर गया वहां से। एक मेन है, पीछे मैं मार गया एक को, मेरा काम हो गया। ए मेन लास्ट मेन अल्ट पे। स्नैक्स बैठ जा, छोड़ दे। अरे नहीं ये क्या है हाँ ये क्या है बेकार एंगल था वैसे पीक का। हम एसटी की करेगा वो। नाइस राउंड ब्रो, नाइस। मार अरे भाई एटीट्यूड है बे, शॉट ही अच्छा वो टाइम पे याद दिला। हाँ भाई थैंक यू भाई, थैंक यू। Finish it. Gotta go. यान भाई को कैसे पता है? हाँ बे, नहीं वो बोला था कि बोल रहा है एवरी 10 मिनट्स में रिमाइंडर दूंगा इन करने का। I'm out of here. साइफर तो है बे। हाँ बे देखो गाइस, टैब दबाया मैंने, माना मैं साथ पे हूँ, पर सामने वाले ब्रीच पे एक बार नजर मारे। एक बार सामने वाले ब्रीच पे भी नजर मारे। ब्रीच डिप तो है। मेरा अल्ट है, उड़ा हो गया। सिटी रेना। I know exactly where. रेना सिटी आएगा। One enemy remaining. ये साइफर ने अल्ट तो मारी है। मेरी डेड बॉडी पे इजी वे। Attackers win. वो तो गाइस मैं किल के लिए खेल नहीं रहा था यार, टीम प्लेयर हूँ ना। एक और मैच हो जाएगा क्या? नहीं 5:30 से है ना, होगा नहीं यार। 13-4 वाला मैच भी थोड़ा इतना लेट खत्म हुआ है। नहीं होगा एक नहीं होगा। क्या करें? ये हो जाएगा स्विफ्ट प्ले, स्पाइक रश, ये सब हो जाएगा। लगा दे करते टाइम पास। लगाए स्विफ्ट प्ले लगाए गाइस। मिनट में चालू होगा। अच्छा मारा, पर साइफर बढ़िया खेल रहा था। बस बात ये है ना कि ऐसे रैंडम आते नहीं है जनरली हमारी टीम में। उनके ब्रीच जैसे रैंडम्स आते हैं। 3 किल भी किसको मारा इसने यार? अगर मैं 4 गेम जीतता हूं लगातार तो मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा। क्या लगता है भाई? 4 गेम काइस मरा होगा पक्का। देखने क्या ब्लीच से? नहीं रे, काइस भी नहीं मरा है। स्नैक्स तो मरा ही होगा। स्नैक्स ऐसे भाग के जा रहा है। स्नैक्स मरा, एक बार मरा है स्नैक्स। 47 पता कौन है? कौन है? कास्टर है। किधर का? वैलोरेंट का भी है, बीजीएमआई का भी काफी मैच फाउंड। पता नहीं, मैं सुना उसका नाम याद नहीं आ। बट इंग्लिश कास्टर है। आइस बॉक्स पे तेरा भाई जेटमैन है। Let's go. तेरे को शर्म आता है? नहीं, स्विफ्ट प्ले तो है। अब मेरे को खेलना था यार, मेरे को तूने खेल लिया ना रेस। चल खेल तू, चल
मैंने को गेको ट्राई करना। अबे गेको भी ले लिया। कल आना भाई, तू बहुत स्लो है भाई, तू बहुत स्लो है। मैं तो जेट खेल लिया मेरा। क्या वो रैंडम गेम है ना। फ्लैश देता हूँ वाइपर तेरे को। हाँ फ्लैश दूंगा तेरे को। ठीक है भाई। कोई बात नहीं गाइस, 2 पल की खुशी मिल चुकी है उसको। चैट में बैन खा चुका है, अब नई आईडी बनाएगा, फिर खाएगा। आते रहते 2 minutes of fame, let him have his moment। स्पॉटलाइट में आ गया, उसका काम हो गया। मैच फाउंड। और तो कोई होना नहीं है उससे, और कुछ होना नहीं लाइफ। Let's go. गाइस जल्दी ले ले गेको, जल्दी ले। तेरा पीसी शायद स्लो लोड होता है गाइस। स्विफ्ट पे कौन डॉज करता है? हाँ भाई पता नहीं क्या था, गलती से लग गया होगा स्विफ्ट पे, ऐसा होगा उसके साथ। स्नैक तुमने फॉरेस्ट खेला है ना? ना मैंने नहीं खेला। नहीं खेला था स्काउट के साथ? नहीं खेला ना फॉरेस्ट नहीं खेला मैं, ग्राउंडेड खेला। ग्राउंडेड प्लस स्पाइक प्लांट करने के लिए एजेंट बना दिया अभी देखो। मस्त है। 9:30 अमंग अस के लिए अब तक सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 लोग हुए। सब लोग सो रहे हैं मेरे को लग रहा है। स्कोर क्या है वीसीटी का एनीवन? अब तक मैच चालू नहीं हुआ है। चेंबर लॉक किया, जेरेफ होगा पक्का। उसका रैंक 1 है, दिख रहा है यार चेंबर नया प्लेयर है वो, फिनिक्स उनका। अरे वो हाँ, था ना काउंट रैंक। हाँ बे एकदम नया प्लेयर 1 18 24 सब नए बे। मारूंगा ना उसको, इतना मारूंगा ना। अबे क्या पता है उसका वो आईडी हो। मालूम पड़ा सामने तेरे को मार रहे हो। प्लीज डोंट किल सेज। क्यों? एसटी के आरुषि। अच्छा पर भाई मैं बात कर रहा हूँ, आप मत करें। अच्छा ठीक, हम बात करेंगे, टेंशन ना। हम बात नहीं करते, हम सीधा ठोकते। मतलब क्या गेम में क्या बोल रहे हो? बातचीत नहीं करते हम, आगे पीछे नहीं देखते, जेंडर नहीं देखते, हम बोल रहे यार तुम यार सोच गलत है यार। जज्बात को कंट्रोल रखे भाई। सोच गलत है यार। मैं देखा एक्शन करके बोला यार, एक्शन ऐसा वाला कट्टा वाला ठोकते है यार। तुम सोच ही गलती है यार, सोच ही गलती। लगता है भाई की शादी करानी चाहिए। Oh no, invaders here to take our radio. I'm sorry. Let's go shoot them. अरे मेरे को ना ट्राई करना है कि मैं वाइपर को फ्लैश कर सकता हूँ। पक्का कोई लौंडा होगा तभी हाँ निकला देख उसकी टीम का।
मैच उसके दिल में टीपी डालेगा, देखेगा 500-600 लोग हैं, बोलेगा मैक्सिमम लिमिट रीच्ड। गया गया, तू तो मरा। गाइस शरीफ गेम प्ले दिखाता हूँ। अरे शरीफ तेरी माँ का। Sit down. अबे 5 लोग हैं। Grounded. बाबा। 55 सेज 55। वेट करने बैठा इधर। भाई स्नैक्स भाई गिर गए हो क्या यार आयुषी के प्यार में? तेरी माँ की। भाग गया वो भी। हाँ वापस आया। नीचे बैठा है लिखा है भाई पे। भाई। ओ भाई। स्नैक्स भाई। Don't mess up that pretty face, Phoenix. भाई आरुषि के सामने थोड़ी गोली चलाओ यार, क्या बात कर रहे हो? इसका हाँ भी सही से नहीं निकल रहा है बे। आज से कुछ निकाला है उसका। ये वाइपर कोई पिकअप लाइन बोलना गुजराती में। तेरे को क्या तो गुजराती है। अरे किया होगा ना प्लसिंग में थोड़ा। आए यार कोई तो आए। इधर है। भाई इसका सुआ बहुत नशेड़ी है। हाथ में हाथ डरा दिया अबे। What the fuck? Spike down, attacker spawn. ये क्या? जा बी जा रहे हो लोग स्पाइक लेकर। ये क्या कर रहा है? कभी से सारा। Last player standing. क्या मैं तो एक गोली का ही था। हाँ तो क्या? तो उसको एडवांटेज मिला ना यार। -140 है ब्रो। सही में पिस्तौल से मार देना। सोवा दिखा पिस्तौल से मार देना। ये यही है सोवा यही है। आगे पीछे। पिस्तौल से मार 140 है। नाइफ कूद के नाइफ लेफ्ट में निकल गया नीचे से भाग गया सिटी बाहर भाग गया। कूद ओ क्यूट है बे। भाई ये नहीं आ रहा इसको। ये जोकर भाई है। ना ये जोकर भाई स्क्रीन देखता है। हाँ वैंडल उठा। वैंडल है बड़ा वैंडल है इसको ऊपर। तो 4 सेकंड देखो उसका वैंडल है। इधर ही इधर ऊपर बहुत हालत खराब है भाई इसके तो। इसके साथ भाई ये क्या है भाई? ये तो अभी क्या लगा है? पीछे इधर डिफ्यूज हो गया। जीत गए नाइस राउंड ब्रो। तो हमारे यहाँ बस काफी। मार और तेरी माँ की। भाई स्प्रे तो दिया है भाई ने, जय माता दी बोल के स्प्रे दिया है बे भाई। पर इसने ब्रो बिना हेडफोन के खेल रहा है, इसके नीचे से चलते हुए सीटी निकल गया वो। भाई इतना एटीट्यूड भी सही नहीं है जेड भाई। तुम्हारा भी सही नहीं है आरुषि भाई। मैं नहीं छोड़ता भाई। देखो भाई मैं नहीं छोड़ता। मैंने बोला अब तेरी देख, तेरी गंदी सोच, गंदे कान, गंदी आंखें, गंदे नाक, ये सब का मेरे पास इलाज नहीं है भाई। गंदी शक्ल, इसका भी इलाज नहीं है। मैंने तो देखो, मैं तो गेम की बात कर रहा था। गेम की बात कर रहा हूँ। गेम ओवर हो जाता है उसके बाद सीधा। भाई क्लिप करो भाई, कोई ऐसे सीधा दिल की बात निकाले, सीधा बोल दे 1 सेकंड में बोला ठोकूंगा। भाई गंदी सोच भाई। मैं तो हाथ में ऐसा गन का एक्शन करके बोला था।
पर भाई वो भी गनी है। Time to jump. Get out of my way. बी हो रहा है। The hunt begins. अब मारा भाई इसने। Sorry Arushi. Spike down. Attacker spawn. My ult's ready. Joke's over. One enemy remaining. अंदर ही है। ये 84 डिंक खाया साला। Last player standing. स्नैक्स भाई क्या कर रहे हो? अल्टी मार रहा था उसको। टाइम लगता है क्या? सुहा ने क्या हागाए पर मेरे पे मजा आ गया बे। क्या मेरी जेट पे कोई शक कर रहा था क्या? कैसे चले चक्कू देखे नहीं क्या? ये चेम्बर भाई दोनों ब्रह्मांड के लैंड है बे। फाइट देख ले दोनों का। ये देखो। Clutch. My God. Switching sides. Vibe check. We feeling good? Hope so. Hope so. स्नैक्स भाई बहुत हालात खराब है। बहुत हालात खराब है भाई। इट इज गॉन। क्या? कैन आई जॉइन एसटीके? ब्रो ही इज अ बॉय। ठीक है। टीपी तो आया स्नैक्स भाई। टीपी तो आया। Healer down. One enemy remaining. प्लांट कर ए पे ये लोग। आई एम नॉट अ गुड प्लेयर। ये तो पता ही है गंदा प्लेयर है। ये मेरा किल चुरा है रे। 2 बॉडी शॉट मारा था इसको। That's a win in the bag. Let's grab some more. स्नैक्स भाई लॉन्डे को पटा रहे गाइस। लॉल गाइस आज की ताजा खबर। थैंक यू फॉर योर सर्विस स्नैक्स भाई फ्रॉम SA12 जॉइनिंग STK क्लैन। प्लीज शादी कर लेना। Cutting through. Up you go. Enemy mid. Someone's A. Gotcha. एक इधर ही है बॉयलर है। मर गया। Right there. One enemy remaining. चलना। Spike down mid. डर क्यों रहा है? उनका लेवल 1 वाला प्लेयर है भाई। Gun here. अरे मार रहा है तो पागल है। ऐसे इसका मारने मत दे। Last player standing. अरे फ्लैश कर दिया साला। यस मेरा है। वही तो उसी को बोल रहा था स्नैक्स को कि तेरे को मारने ना दे। गिरा हुआ लोग। बस 5 मिनट में चालू होने वाला है मैच। अब तो ऑब्वियसली इनिशिएटर है। बहुत स्लो है। कौन सा इनिशिएटर फास्ट है जरा बताइयो। डैश मारेगा क्या भाई? केओ घंटा फास्ट है। केओ फास्ट है ब्रो। कुछ फास्ट नहीं है। देखा नहीं मैं कितना फास्ट डिरैंक कर रहा था केओ लेके। एक बार स्पाइक प्लांट करने देना। स्पाइक प्लांट करने देना। फिनिक्स स्पाइक प्लांट करके देख। 4 दूंगा। Enemy spotted. I got spike. Wingman's planting.
Open up. Ooh, my ult. Watch this. Joke's over. You're dead. ये पीक करना गाइस क्या वेट कर रहा है बाप रे तू तगड़ दल्ला है ब्रो डिजर्व करता है मरना साले मेरे को लगा सुबह मृन्मय थैंक यू फॉर द 110 वाइपर बाय बिग फैन सिंस 2019 फर्स्ट टाइम सुपर चैट कर रहा हूँ लव फ्रॉम कोलकाता कभी आओ हमारी सिटी में मीटअप भी हो जाएगा और घूमना भी थैंक यू मृन्मय भाई लव यू टू ब्रोस्की और कोलकाता यार हाँ टाइम हो गया वैसे आके यार यूसी क्या यार यूसी मारा एक चक्कू मारा पर सामने क्या उसकी गन चल रही थी ना स्प्रे पे होता है यार होता है सब लोग भी जाओ तो जेट डिफ तो है फिर भी यार क्यों तेरे को बेट के लेने क्या पागल है क्या नहीं मेरे को प्लांट करके करना है अबे आगे क्यों नहीं जा रहा पर कैसे जाएगा टाइम के पहले Get out of my way. जा तेरी बहन दी जेट डिफ पे The hunt begins. Here. Enemy spotted. Mid. Plant spike. Come on, let's go. Lock in sight. जाए बे ओह डिफ है भाई डिफ है भाई ओह माय भाई एक और आया पागल है क्या ये लोग बैठ जा पूरा सेना बैठा है उधर कंट्रोल दबा वो जेट को क्या मारा भाई वो जेट को क्या मारा है आसमान में उड़ते उड़ते मारा है हाँ इसमें ओटी जा रहे हैं अपन क्या बात है हार गए ओटी के हार गए कहाँ से हार गए 3 अपन 3 है वो लोग 4 है अच्छा Defenders win. जेट को ऊपर कड़क पड़ा पर ये देख के मेरे को जेट खेलने का मोटिवेशन आ गया सही बताओ तो बट अनरेटेड में ही खेलना ठीक है नहीं मैच एमवीपी प्लीज तमीज से बात करें आप नीचे झूल रहे चलो मैच चालू होने वाला है लेट्स गो आ जाओ भाई आ जाओ डिस्कॉर्ड आ जाओ आए गाइस लेट्स गेट बैक टू our watch party. It's going to be very interesting to see Pat over here on the Sage. I think this sort of adds up from everything else we were talking about. Kind of bring it back old school on an older map, oldest agent, right? Or one of the original agents, I guess you could say. This should be an interesting map here from TLN. Yeah, this is pretty exciting. I mean, Pat coming back alone, but then him playing the Sage, which allows them to still play the Jet over for Garnets. But as you mentioned, Achilles, Dubstep returning to his core role of the duelist. And he used to have this pride of, you know, even as a boomer, I can play that Jet just as well as any of these youngsters. Well, this is a very good test because we saw what Garnets could do over at Lock-In in Sao Paulo. Ladies and gentlemen, this is going to be map number 1 between these two teams in a best of 3. It's Talon Esports versus Team Secret as they strive to see who can get that first win here in VCT Pacific. We're ready for the game. We'll head over to the stage with the casters to break this down on Ascent. Thank you very much, Desk. I mean, it's basically what they're alluding to, right? This is that APAC clash. Team Secret versus Talon. Hey, I'm Quack. This is Paper Thin. Let's see. I mean, dude, what do you think of the comps we've got? I love it. Negative people से कैसे deal करते हो आप please say. That Talon is going with something interesting, and I believe Patty was playing Depend करता है Sage यार. at कभी इग्नोर करके कभी उनकी भाषा में उनको जवाब देके मूड पे डिपेंड करता है and he nailed it, right? He likes to do some plays where he sets himself up with these TikTok-y walls. We'll call them that for lack of a better term. But I'm curious to see how they want to approach it. So two very different comps. Excited to see Dubstep back on Jet. by default I think he's a very talented Jet player. Could really have some high impact. Jesse Vash, I'm always going to have my eyes on him right now because of the way he performed at Lock-In. He was an absolute monster all over the map, having huge impact, not just with his eye jailing, but with his gunplay. तो गिरे हुए लोगों के ऊपर बैठ जाओ as well. ये उपाय है I think to me this team comp is really saying that like this is the classic sort of Ascent comp, right? You know, we were talking about it a little bit during the desk segment. Team Secret, it's something that they're used to. It's a little bit more comfortable. Ascent है बे, यही तो देखना था बे. They can play off of. यही तो देखना था. Talon with all of these plays like Astra, you've got the
Patty on Sage, Fox on Fade. They're setting up for some interesting strats, and we're just about to see that happen. Perhaps the Sage wall boost right up. Turret से लड़ रहा है भाई ये. अमन है ये, अमन है. ये अमन है. Turret से लड़ के मर गया, बोलेगा मैं तो space बना रहा था. Dubstep up by Market 2. They are just holding it down. Talon. खराब लगा यार बेचारे के लिए. पूरा spray उतारा. They're dashing in blindly, and all it takes is a few more clicks for that flawless pistol. One-sided, really nice, solid start for Team Secret. Everybody's kind of in the right place, doing their job. Dubstep holding down Market. You got Jesse there at the alley. You know, phenomenal shooting from him. Everything you want to see here from Secret from the beginning. It's going to be a little bit interesting for Talon on this attacker side without the Sova, trying to get information, trying to set each other up. Got the fade to maybe try to set up your jet. You know, you've got that wall for Patty. I thought maybe he might go for put the wall on the box and get up to the windows. That's what I thought too. I was watching for that to see if he did it. Didn't happen this time around, but you know, there's a lot of interesting things you can do to play off of each other with this Talon comp. I think they're going to be lacking a bit compared to Team Secret's more traditional comp is that Sova information, that ability to kind of, you know, send out those recon darts, send out those drones, and find out what's going on around the map a little bit सुबह आपकी better. स्ट्रीम देख के Talon's gonna have to आप really कैसे have उड़ their गए 6 teamwork घंटा down सो to के. a T for Easy being है a बे, successful हम attacker सो ही side. नहीं है. Exactly. It's all about that coordination. I mean, especially when you have something like Fade, you only have that वापस रात भर खेल रहा little था second. As soon as you throw out that haunt, your opponents are going to be prepared for it. So, Team Valo Secret, on highlights the क्यों other नहीं डाल hand, रहे? what they're doing right now, classic यार Valo default, not making a single move, highlights. not making a single sound. They're just waiting for that tell from Talon. I like the double marshals यार with Borkum. I think this पता is नहीं यार. you know, a पूरा good stream position में to highlight be in. होता है. Got that TP for a bit of a pseudo क्या escape highlight डाले? if needed. But now he's got Jesse reinforcing off the sound cue there of that alt orb. Envy going to be holding down a tree area. And as a few players start to rotate their way through, undetected so सही है, far. हमारे शेड्यूल चेंज करा रखा है आपने. The यार forces शेड्यूल ही तो है यार. Team क्या Secret करना है seem to be जल्दी सो के positioned to at जल्दी least उठ do some के damage. क्या करना है? कुछ नहीं रखा है बे. 30 seconds left. They're just waiting for it. It's a good position, and they hear everything that's happening right at their footsteps, right underneath their noses. All it takes is for that collapse to come through. Jesse Vash, 2 martial shots, his teammates here to back him up. And all that's left is going to be Cruz. Only a classic in hand, maybe 1 kill, not quite sure where to look. It's going to be Envy up by the mouth of A main to seal the deal. I mean, back-to-back flawlesses here to start for Team Secret. That's a hell of a statement here to make. I mean, I think a lot of people favoring Talon. Now, my prediction here was actually Team Secret. The one they posted might have been a little bit inaccurate, but that's okay. I predicted them in the pre-show videos. छी भैया कैसी स्किन चला रहे भाई ये. And Achilleos. And I thought Team Secret कौन चलाता है भाई? पागल I had a chance to talk to both of these Videos teams को before क्या the match बैठे today. First of all, Cruz, you know, he had that issue with his eye, the Bell's palsy. He's doing okay. He said he feels much better, maybe like 90%. He said it doesn't seem to really affect his vision when he's playing the game. So he feels that in the game he feels pretty comfortable. So that's really nice to hear. I'm really happy for him. On the other side of the coin, Team Secret, pretty interesting. Like, you know, for them, the big focus today with teamwork was like the key word that I would say they used in my talk with them. And a kind of a little bit of a funny, spicy thing they said was they felt like Talon maybe a little bit overrated coming into today. Maybe a little bit. Well, we'll see if that actually is indeed true, because if these rounds continue the way that they are, it just might be true. Talon continuing to push on through right now. They do have the rifles. They're trying to make it work. It's going to Garnet dishing out the damage to start already on for the 3K. दोनों ही अच्छा खेले थे. Blocking में तो. Jumping at him. I love it. Garnet's the good reaction. Instantly flicking upwards, tracking down, right? I mean, like, I know what you're trying to go for, but sometimes it's just a little bit too wild for my taste. And of course, Talon might win this. Setting up for the right time, pushing past the door and up the glass. A double headshot there. Absolutely nasty from Cruz. Picking up right where he left off at lock-in. A lot of those lurk plays, a lot of those cheeky off angles that he likes to take to find some value. Garnett's here with a great haunt to set him up for the first kill. Pushing around the corner, Envy actually gets the dink on him there, but still the gun advantage. Garnett's able to find the drop down onto Jesse, and then Cruz. Ooh! That is good. You love to see that. हाँ, पर यार need to see more of those smart plays for sure. Valo को तो replace नहीं करेगा अभी मेरे हिसाब से. And this is what we're talking about. Valo को replace? Valo को गायब कर देगा CS. Together just like that. Again,
Cloud burst up and everything, the Haunt giving additional information. They have mid control. Jesse Bash is pinned down, and this is a free kill for Talon. A lot of space for them to push into the B site. Orcum and Envy trying to flank around the side of this, but they're a little bit late to the party, and they're going to get yeah, this is done. Fox is good for it, dude. Now there's another flawless on the board. This time it's Talon. 3 out of our 4 rounds have been flawlesses, Quack. It's just back-to-back. That's why this is the APAC clash. That's why it's these two APAC teams. They both are confident in their own rights. They both think each other are like overrated. We're gonna fight, and we're gonna dish it out. Good papai. Garnett's just push out, and then Thailand ka corner. Yeah, of course, the lurk, and you know, again, just a little bit too late to get there. क्या उम्र होगा बे इसका? 16-17 के ऊपर नहीं लग रहा है. Too fast for Talon. उतना ही रहता है actually. आज ज़्यादा players का बाहर के. और 19-21 तक ही रहता है. सबका बढ़ा दो. Classic. And everyone's working. मैं तो सो के देख रहा हूँ, पता है मैच ये. मेरा interest. Pat just leading in towards. मेरा आवाज slow आ रहा है क्या? They already have market control. Hello, mic check up. ठीक है. All they need ठीक है. is to block off the remaining entrances, and that's only going to be defender spawn because of this wall. देखो पार्टी मार के बैठ गया. Yeah, this is another annoying thing about Sage. Yeah, you have तो to थोड़ी give देर it away. पहले अगर ओ भाई. हाँ बे. अरे मार दिया. Okay. Got one. Nice bit of damage. Yeah, you'll take those. तेरा favorite knife कौन सा है? Tricky with his utility there. Good up and over. Favorite knife. The good timing with the dash to reset. Take those, right? As a jet player, I mean, whatever you can find, right? One more alt point. जो मेरा current equipped है. Yeah, that's the best part. A little extra cash. तेरा current VCT lock-in वाला. Storms online quickly, but good opener here, but Garnet. अच्छा वो तो flip knife रहेगा ना वो. It is like the Zeno Hunter knife, but better. I definitely do think that this is मैंने क्यों नहीं देखा ये अभी तक मेरे को देख. Animation पूरा Zeno Hunter वाला है. पर चमकता है. Whenever they go down mid, अलग-अलग colors में भी है and outline आती है. Champion में जैसे होता है ऐसे. You're not really doing anything much. You're gonna have to prepare for that beast play. And that's what we've seen happen the past few rounds. This time, back into A, just a little bit of utility. अभी sound ठीक है क्या या अभी भी कम करूँ थोड़ा? And that's going to leave a little bit of room for कांदा काटने वाला नाइफ छी बे इतना बेइज्जती मत करो भाई. 5,500 डाला था उसमें वैल्यू पॉइंट्स. थोड़ा देखा भी नहीं है भाई लास्ट VCT के नाइफ कैसे दिखते हैं. प्लीज भाई थोड़ी सी इज्जत. छी बे. तू होगा छी वाला खाओ. छी बे. तू छी. तू. तेरा गेम प्ले छी. VCT login in मिस क्या लिखा है ये? हाँ पढ़ के बता. अरे मेरे ऐसा चक्कू चला है ये भी. मेरे से गंदा चला एक्चुअली. मैंने मार दिया था फिर भी एक दो चक्कू तो कनेक्ट होता था. Then again, at the same time, you've got pushes coming out through mid, coming out through A. A little bit of contest towards every single site, but this is something that you don't expect. The sortie inside of that dark cover. Instant point blank shot towards Jesse Vash's face. And we're down to a 4-on-3. Tough retake coming. Envy needs to find a big kill here. Gonna try to scout out a little bit more information. Confirms it. The flash is good. Even better as he gets the quick double. Garnets, though, again, both of them inside a boathouse. आ गया नीचे कोई नहीं दिख रहा है. Times the right good shots and it's going to happen. बाप रे क्या नसीब बेचारे का. Reload आ गया. क्या नसीब खराब बे. Close and personal with the Phantom. He is able to burst it down. I said Envy needed to have a good entry. Well, he did better than that. He got a great flash and got 2 kills to get himself in there. And that opened the doors for Talon. Like you said, locked Talon into the boathouse. Unbelievable play here. क्या चक्कू आ गया पर भाई कूद के आ गया. Able to get the res onto him. Fox doing a good job pushing him through that smoke. This flash is brilliant. I mean, you can see Patty just भाई कौन जीतेगा सट्टा लगाना है. That Envy is right in front of him. ये गेम Talon जीतेगी बिल्कुल. Position revealed and able to catch Garnet's jumping. Really nice play. Thailand का accent देखना कैसा है. It's one of those things, the heat of the moment. You try to do whatever you can, but sometimes you just get caught out lacking. या तो होगा 13-8 या 13-11. ऐसा मेरे को ऊपर से खबर आया. ऊपर से खबर आया.
कौन है ऊपर? ऊपर मेरा दिमाग. Oh my gosh, Talon continues to push through this. I don't know, but Garnets doesn't care. Just dashes in. Suddenly a quick double. तेरा घुटने में क्या साले? Through, and then the trade from Jit Boys. They're already rotating off of this though because they know they have the numbers advantage. Yeah, that's a really good point. They know that now they can at worst have a 1v3 here if they shift off. You know, there was the threat that it could be a 2v3. Oh, Jeremy. Footsteps. All right, pops the nano. They're going to wait it out. Oh, get the kill. And he just blocks them off. This is good enough, but now we're down to the 1-on-2. आराम से मार देगा. Makes it a 1-on-1. Paranoia buys a little bit more time. Clutchers in there, bhai. Cruz can't hear a single thing. He's not entirely sure if he's coming from heaven or आपका knowledge तो कमाल का है. That's why he's shooting. देख लो सट्टा लगाना है तुम. तुमने बोला तो देख लो तुम पे है. मैंने तो बोला देख लो. हैं? Browser encountered an error. Ad आ गई बे. ये ad नहीं आया मेरे को. ना. अरे भाई क्या है? रिफ्रेश किया फिर भी ad आई. अबे आता रहेगा क्या ये? 2-3 बार रिफ्रेश किया. L ad. सबको आया है. भाई क्या राउंड के बीच में दिया है बे. So hardworking. This isn't even his final form. What a big brain play. भी नहीं होता है बे. He has a little extra time to play around. 3 बार रिफ्रेश किया वापस चालू हुआ 3 बार. It's point blank range, but no! निकाल दिया बे. Turns away at the wrong. बोला ना मैं टीम. अबे फिर से ऐड. बहुत पैसा कमा रहा है तेरे से. मेरे भाई को ऐड दे गया. अरे नहीं मैंने वो किया टाइमर पे आने के लिए. Isn't even his final form. What a big brain play, and now he has that little extra time. You know, Garnets has been beautiful on these entries. Jesse picking up right where he left off at lock-in with a big double. And then Borkum clean and crisp with this Phantom. This time, gonna see the gun. कैसा बैठा है पर वो भी यार. ऐसे कौन बैठता है? ड्रॉप डाउन का साउंड नहीं आया तब तक क्यों बैठ रहा है? शॉट ही देखेगा ना यार. I feel that. And I feel you too. I mean, you can just hear it in your voice, Clint. Like, it's one of those things. Those one-on-ones. You're never quite sure where your opponent's going to come from. He could come from heaven. He could come... probably not A main, I don't think, but unlucky. And back all to the big क्या moment पे घूमा है? All of them. Potential for retakes. Even delays. And you don't need to save that Hunter's Fury for a lockdown. You can just let it loose. There it is. Only loco is add for loco for them. Peak 2. Thanks to Borkum time. Shadows. The one-way smoke again. Talon has no idea. They feel like they cannot break through this A main defense. It's tough. It's tough for anybody. You almost have. Last game ऐसा लग रहा था कि साला PRX जीतेगा. ये गेम ऐसा लग ही नहीं रहा कोई टीम जीत सकता है, हार सकता है. नहीं वही ये दोनों ही अच्छी टीम है बे. बात वही तो है. Alarm bot. Exploring though. Needs to be cleared. They're going to get the confirmation that Patty was over by short A. Now, Cruz is going to set up the smokes, and away we go. He's saving that recon for a retake too. John considering it. And here it is, the ult that you're talking about. A bit of a wall from Patty, but I don't know how much that's going to do. The pressure is on. And here comes Jesse as they try to push past the smoke. At the same time, Jeremy's just waiting for them. Jit Boys finds a little bit of space. Finds that quick double too, but 10 seconds remaining now. No chance in hell, no shot. It's going to be Envy instead for that 5-3. Yeah, great timing here from Jeremy on that lockdown. They know it's coming. They get the info. They have the sound cues. And he's able to force Talon back into the open arms of Jesse, Bash, and company for Team Secret. And they're able to just cut Talon up. Just absolutely cut him down. This is a great setup here for Borkum. The flash as well with that Hunter's Fury. What a combo from Team Secret. Anything... The only thing that I'm thinking about is this wall. He broke down one panel. They felt that pressure from the lockdown, and I think they needed a little bit of space. They didn't want to go towards Boathouse even further, and that's why they went to defender spawn. And unfortunately, Jesse just happened to be there. That's a really good point. That wall almost hurts him in that situation, where you think you can get in there a little bit faster, but because it's there, they don't have an escape valve. And it kind of opens up an extra flank angle. Yeah. It opens up an extra flank angle as well for Team Secret. So that's a really good point.
क्या बोलता लोगो used to be a quiz app with prize money पता है ना मैं खेलता भी था तब Timeout being called the first one that we're seeing from this series at the very least. गूगल करने का भी टाइम नहीं मिलता really था have to take into consideration the ultimates and the potential क्वेश्चन निकल लेता था उतरे में pull off with the way that सबने ट्राई किया होगा we talked about this, everyone talks about this. Ascent is so defender sided. You need to find these CS:GO को तुम लोग अगर they managed to find it through middle. हाँ लगा CS थोड़ा I guess they just don't want to ESL का वाचिंग देख रहा था मैं अभी भी 14,000 that time they tried to kind of dip back into that well and Team Secret was fully prepared. So now you got to start finding ways to, you know, push and pull the map a little bit, maybe open up some space. सिर्फ इंडिया में थोड़ा बहुत सीन डेड हो रहा है CS का, नहीं तो बाहर बहुत चलता है हो रहा है नहीं वे हो चुका है These phenomenal timings. ये हो रहा है एक्चुअली क्योंकि अभी टूर्नामेंट्स वगैरह से भी हट रहा है ब्रो इंडिया में कहां उसका उतना हाई लेवल पे पहुंचा ही मतलब ये cloud burst just to back off Garnet, saving his teammates live and his own as well. But what is this? जो था वो प्लेयर बेस की वजह से था वो भी अब look at where they are. They're going to spawn. So deep, Clinton. I don't know how this is going to shape up, but Jesse Vash is in the prime position. The off angle. A bit of a dig too, but Crew's just down to 70 HP. Not too bad, not too shabby. Talent still can recover off of this. Maybe again that B split push that worked out so well. अल्ट घर लेके जाएगा कि वो Oh, dubstep though, able to hold it down. Crew's there, not able to find a better of that trade. So now they have to clear out this quickly, and they do. Phantom को रख दिया. Just enough for them to get that spike down. Fox able to hold off market, potentially defender spawn too, but dubstep, Borkham, they're all waking up, firing on these cylinders. In B2, one for everyone. And that puts them at a 6-3. Like you said, they're firing on cylinders, and now the engine's running very, very nicely for Team Secret here. They're just gonna send one over to Borkham. Interesting. They want to give him the priority. The ult orb. Kind of interesting. Maybe because he's closer, but you know, still, normally more value, right? Out of another ultimate. I wonder what they have in store. Now I'm really going to keep my eyes on Borkham. See what he's going to maybe do with that ult. See if they've got some trick play up their sleeve. Dubstep was crisp this round. You can see he's got some confidence flowing now that he's back on that duelist, back on the jet. Guy who has primarily been on that role. We didn't see it at lock-in, but they're back and listen to him. Listen to him. They're fired up, Quack. Feeling it. And it's the same thing, like what Achilles was saying about the press conference face-off. The videos that they did, Patty talking about age, like, yeah, it's just a number. Clearly, Dubby still has it in him. Right now, Garnet's trying to prove that his younger age can give him the zoomies to find what he can. I don't know if it's going to be enough, though. Look at this, 2 cloud bursts, Envy pushing out. They're aggressive with it. They're dealing with themselves. They know that they can go. अरे बेचारा चमक खुद को वॉल but it's not gonna happen today, Patty. I'm so sorry. बहुत गंदा अटका के मार रहे हैं. Just couldn't do it. Jesse. टाइमिंग ले गया फिर भी ले गया. भाई स्माइट फैंटम यूज कर रहे बे. गीगा चैट. Can he get around this backside? You've got dubstep watching. बहुत गंदा है बे. Oh भाई 16-20 से मारा इसने बंदे को. Secret to collect on that 7. Well, there's still hope here for. वो लोग रीड कर पा रहे हैं अभी उनको. देखा तुमने 3 बंदे मिड पे होल्ड कराए लोग ने. It is a very defender-sided map, so those 3 rounds they're able to put together in a row. They're already pretty important. बात तो ये भी सही बोली है. 1 or 2 more, that'd be. Comeback भी हो सकता है भाई. 1 is good, 2 is great. If they can get it going here. Defensive map तो है. Going to be interesting. They're going to invest in this one though. Yeah. Look at the economy here. It's half armors and vandals. If so Talon loses this, yeah. Next round's not going to be fun. मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है ये लोग ने एसेंट में अब तक बी साइड चेंज कैसे नहीं किया है बे. एसेंट में हाँ क्या चेंज करना चाहिए बताना. ब्रो बी मैं बताता हूँ देख जैसे स्प्लिट में था बी में वो लोग ने चेंज किया था कि बहुत पतला गली था और अंदर घुसते ही मल्टीपल एंगल से पड़ सकती है. वही सेम इसका भी है ब्रो. घुसने के लिए एक सिंगल पतला गली है जो एकदम स्पैमेबल है 3-4 एंगल से. मार्केट से भी है, सिटी से भी है, स्टेयर से भी है. बट प्लेबल है बे. वो वाला साइड चेंज किया क्योंकि प्लेबल ही नहीं था. अबे वो थोड़ा ज्यादा ही पतला था माना. इसमें है थोड़ा रूम कि बीमेन से तू पीक इन पीक आउट कर सकता है फाइट के टाइम. पर फिर भी कंपैरेटिवली तेरे को एक बार तूने कमिट किया इसमें तो तेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है फिर.
लेफ्ट लेन घुसेगा केजे का मॉलीज खत्म तो रोसाइटी घुसना है 5 एंगल 3 एंगल कवर करते हुए ये राउंड भी देख क्या रीड है लोग का and they're playing together really well, and that's the thing they mentioned to me before this was teamwork. That was their teamwork. जैसे एग्जीक्यूट होगा ना वैसे एग्जिट हो जाएंगे वो लोग Everyone's doing their job. If you think बस about देख it. They haven't really swapped that position since, but now perhaps it's going to be that set play from Talon. Garnett's rushing straight in. Spammable wall हटा दे भाई spammable तो सारे ही wall है बे already in position from heaven. सारे ही wall spammable है ये पूरा पेपर का मैप है Cosmic Divide just to give them a little bit more cover. पेपर walls है सारे helping his team, but no. Again, Fox peeking. It's gonna be बाप रे सोच निकाल देता है ये to do what he can, but he delays the inevitable. वो चिल्ला रहा होगा उधर मेरे को रिवाइव दे मेरे को रिवाइव दे on the board. केजे फ्लैंक के मेरे को रिवाइव दे तेरे सा प्लेयर थोड़ी होगा पागल है क्या रिवाइव दे पूरा गाली भी डाल रहा उधर is tragic. I'm seeing a judge, I'm seeing a specter. It is going to be yeah, it's a Swiss Army knife trying to get things going here. उसको हील क्यों दे रहा है Trying to pull out everything. इस साइड पर को देगा सुनना इस सेज हील किसको दे रहा है किसको दे रहा था अभी तो मैं पूछ रहा हूँ Up against अच्छा ई दबा के उसको रिवाइव करने के लिए होल्ड कर रहा होगा शायद हील चालू हो जाएगा ऐसे थोड़ी ई दबा के रिवाइव होता है अरे जो होता है ना जो केओ फॉल डाउन है तो ई से थोड़ी रेज होता है वो ई से ही तो होता है पागल है क्या एफ से होता है तो तू सामान पिकअप एफ से ही करता ना नहीं मेरा तो याद करने दे मेरे को हाँ एफ से ही होता है Trying to find what he can, floating up top. बहुत ज़्यादा लकी हो रही है टीम से एकदम रीड करके Everyone's been cornered, but Shit Boys. ओ भाई क्या राउंड निकाला है बे Comes out of nowhere. क्या राउंड निकाला है Takes them down. Oh, what a timing. मैं बेट करता हूँ ना उसमें कोई गलत नहीं है नहीं पर बेट करके भी तू गू खाता है ना गलत हुआ है They are tunneled on the position बढ़िया चलो of the jet on the site of Garnett. Patty here with a nice opener. That, you know, ऐसे सेम राउंड निकाला था मैं पता है मैं क्लिप भेजूं तेरे को इंस्टाग्राम पे सच में मजाक नहीं कर रहा मैं नहीं तू कैसा निकालता पता है ये एक बंदा साइड पता है इसलिए वो बी मेन पे होल्ड कर रहा था तू क्या करता है ना तेरा एक बंदा लेन वॉक कर रहा होगा ना तू पूरा तेरे सामने उसको मरने देगा और फिर पीछे से आके तू भी मरेगा ये करता है भेज रहा हूं तेरे को इससे केओ सीखो नो किल गाइस सही बात एक राउंड में 3 मार दिए गाइस बाय just the sense that he had there, yeah, as good as get meta business suit. Yeah, you reply this message, comments, manage ads, to be frank, this is one where I start thinking about overtime potentially. The way that this map typically plays out, but maybe if मैं भेजता हूँ तेरे को सेम टू सेम मारा हूँ देख तू बस बोलेगा रे गाइस गॉड प्लेयर है तू ये देख एक टाइम आउट है जी कौन बोला इस इंटर अटैकिंग मैप पे भाई क्या बोल रहा है देखना जल्दी देखना वाइपर क्या भाई एक क्लिप भेजा तेरे को देख देख सेम टू सेम खेला है कि नहीं बता लेजेंड आदमी हूँ यार मैं देख रहा हूँ going to be able to give them a lot to work with. On the other hand, though, this is again where I'm thinking about talent. Bait किया था मैंने वो टाइम You don't pick this unless you have a specific तो हो मतलब पैदाइशी and on the defensive side, वो तो करना पड़ता है. I just don't know if Sage's utilities. I have trust issue कि मेरे अलावा कोई राउंड निकाल पाएगा. Trust issue मेरे को भी तेरे जैसे प्लेयर्स पे है जो ऐसा सोचते कि उनके अलावा कोई निकाल ही नहीं पाता है मेरे को उनके साथ खेलने में ट्रस्ट इशू है. नॉर्मल है ट्रस्ट इशू कैसे हो सकता है मेरे को? Team secrets competition. Yeah, I really like what you say, and I'm really curious about that wall that you mentioned. That's kind of the biggest piece of the puzzle here for me. The rest of it, you know, the Astra, the Fade, the KO, you kind of have a pretty good idea of how they're going to operate that on Ascent. So many teams have played it before. There isn't often too much trickery there. It's all about that Sage. That's the one that crops up from time to time on Ascent. And the biggest piece of that on the defender side, of course, the wall. So what is that going to look like? You know, the pistol round is great because you know, knock out, you know, this angle here on A main and force him into a different direction or force him to wait things out, give you that time to take more space on the map, to get more information early. That's where the wall has a ton of value, but if he did catch Patty out, Well, there you go. It's easily broken. They can still push past this.
Thankfully, it's going to be Jit Boys here for the 0 point just to block them off for a second. Self-heal खाया है Secret are reconsidering. Selfish player भाई, Pat भाई selfish player. Fortunately, is a आगे क्या पता कोई और मार खाएगा, उसको heal मांग के वो मरेगा उधर. Yeah. Sage is great at the pistol round. I'll say that. ये त्रिशूल जैसा लगता है नाइफ. Not the way that Patty probably wanted that to go. मैंने पहले बार देखा ना, मेरे को लगा वो त्रिशूल ही है, बट फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा अलग है. At least अलग त्रिशूल है. they gathered that information. लुले वो बस. But still, this is only 2 players. The star is 2 रुपए के लोगों के साथ मैं 2 रुपए का एक जोक मारता हूँ. 2 किलो वाले गेम प्ले प्लीज आप ना बोले. actually push past this. Jit Boy trying to stay alive too. के साथ मैं 2 रुपए already pushed on over, and this is a full-on 5-on-5 pistol round scenario. I'm not a fan of this. तुमसे ना हो पाएगा. For Talon, I think. Team Secret here though. हमारा 2 का ही रिकॉर्ड है. 3 लोग सेम एंगल निकले. अपना भी ऐसे ही होता है. हेवन कोई नहीं देखता, फिर 3 लोग ऊपर, एक बंदा 3 मार जाता है हेवन से. They have to peek into it. Here comes Fox. Here comes Jit Boys. क्या फायदा वो उधर बैठ के Able to go in बाय. together, trapping dubstep मार inside of hell. ओ But भाई. this frenzy, Jeremy from above. Heaven and hell working in tandem to leave Cruz alone. I don't know if this is going to be enough. Even the Nano Swarm narrowly avoided 22 HP. He no अबे पुल longer कैसे अपने is टीममेट को करेगा? अरे हेवन पुल दे रहा था, अंडर पुल. ओ भाई काटा है बे. अबे यार ये तो डिसरिस्पेक्ट हो गया. Disrespect bro. Tondo Gaming, I like that. तांडव गेमिंग बोला क्या? We've leveled up from Adobo Gaming to Tondo Gaming. तांडव गेमिंग ही बोला. Jeremy, you gotta do him like that. I love it. Can't do him like that. No more times we can go Can't for बोल it. रहा है, can't बोल रहा है. Can't do. That gives them 2 huge kills. क्या बोल रहा है ये? Is so deep and so long from Jeremy. Heads him just off guard. बाप रे, मुंह पे मारा है बे, एकदम ऐसा बीच से उसका थोबड़ा काटा है. मटका फोड़ा है बे, एकदम 2 पीस में गिरा उसका मुंह. अबे यार Just don't expect it. Now, फिर नाइफ लेके भाई क्या हो गया भाई? 3 लोग हैं, मत जाना, मरेगा. बच गया भाई, हाँ गाइस सामने वाला. अहिला राइट क्लिक. ये भी लो था देख. चप्पल. TS का बैड लक स्टार्ट, नाइफ गिव्स बैड लक. ऐसा थोड़ी होता है यार. उल्टा नाइफ से तो मोटिवेशन आता है. A push out here from Talon. 9-3 था क्या बे? We saw 8-4. teams previously with Paper X and stuff that they try to get aggressive on these ecos and प्लस Zoe भी स्पॉन्सर है, Logitech भी स्पॉन्सर है. No fools themselves. मस्त है बे. So they're very ready for है भी तो रायट भी. buying all the time and trying to see if they can. ना पोलो भी स्पॉन्सर है. Is he gonna break the glass here? Or is he just waiting to see if someone? इस स्पॉन्सर है. Oh shot. Don't die to the turret, please. Okay. तो देख रहा, बंदे को मारने के लिए 1 गोली लगा, टरेट मारने के लिए 4 लगा उसको. यही तो गलत बात है बे. मतलब बूमबॉट तोड़ने के लिए भी किसी को फटता है बे. क्या भाग के आता है. Expected result here, but now things get worrisome for the side of Talon. It's a really important pistol round to win when you're on that. देखो तुम्हारा बैड लक तो हार गया, फिर भी जीत गया राउंड बैड लक. ये तो इनको तो आना चाहिए. तो क्या हुआ, फिर भी जीता तो जीता है ना. देख बे, लंबा फाइट हुआ है टरेट से. At home. I feel like I'm casting APAC stage 2 again. Team Secret versus Viper shots on the way. वो ट्रैफिक में फंसा है, मुंबई में बहुत ट्रैफिक है ना. The way that they're going in with this, we need more from Talon. Not just heroic. मरा ये तो गया. More coordination. ये तो खत्म है, इसका कोई जीने का स्कोप ही नहीं है ब्रो. Going on with this, somehow Patty has managed to sneak past. वो तो खत्म था डबस्टेप भाई. वो उधर से ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता है. बैकअप भी नहीं दे रहा देखना. Yeah, no way. A good slow there. बैकअप तो लाइफ में मिलता नहीं है ब्रो. यही तो दर्द है मेरा लाइफ में. Further into that site, they really held him at bay. Never gave him the opportunity to, kind of isolate angles to bust through. शॉटगन लेके क्यों खेल रहा है सोआ? मां कसम. That's one of my favorite guns, just to lull on people with. All right, so let's see what they're gonna dial up on this one. The smoke up front, on information. TP inside. TP in. Bucky, एड भी है गेम में, अभी देखा मैं. हाँ क्या? किसकी टीम में? How they're thinking. Controller versus controller, and all he's got to do. अच्छा, आर्ना वाली टीम में ना, अंडरस्टैंडेबल फिर. Vandal rip, Jeremy. तभी नहीं दिखा वो शायद. This knife is just 30 seconds left.
it's just not even fair how good this is. The fact that it gives Yoru a demon and like an Oni mask too, like still makes me want to play Yoru. I am not a duelist player. Jeremy. और आज से 10 साल पहले तू आईफोन लेता या ब्लूबेरी लेता? मतलब लग्जरी के लिए. Okay, come on. ब्लूबेरी नहीं, पहली बार तो ब्लैकबेरी था. A little bit of a spray towards Garnets, and here comes Patty to save ब्लूबेरी तो खाने की चीज है. ब्लूबेरी फ्रूट है. या it's a लग्जरियस फ्रूट है तो पता नहीं भाई तुम्हारा लग्जरियस ब्लूबेरी होता है वो यार मस्ती कर ले. आज से 10 साल पहले मतलब 2000 कौन सा था? 2010 के पहले का समझ लो. तब आईफोन का कौन सा वर्जन था निकला हुआ? अरे बट वो टाइम पे ब्लैकबेरी भी तो इतना लग्जरियस माना जाता था, सोचना. हाँ मतलब तब तो मोबाइल फोन ही लग्जरियस था ब्रो, तब कंपनी नहीं देखते थे. नहीं कंपनी के पास मोबाइल है तो भाई क्या मारा है भाई, एकदम ऐसा ब्रो माथे पे एकदम जैसे उसको दिख रहा है सर पे, उधर ही बंदा खड़ा है. Kind of trying to relay off of this. A bit of a flash from Jit Voice doesn't quite connect. 10 साल पहले भी आईफोन ही लग्जरियस था. हाँ भाई मतलब टेक्निकली तो आईफोन हमेशा से ही लग्जरियस रहा है. Talon numbers advantage. Yep, good job here from Talon. फिर सैमसंग और ब्लैकबेरी में कंपेयर करता आज से 10-15 साल पहले तो. Waiting to see if anyone's going to push that angle. Sit with the spike there as well. यार 10 साल पहले भी सैमसंग तो अच्छे ही फोन निकालता था. अरे वो टाइम पे कौन सा सैमसंग अच्छा ब्रो क्या बात कर रहा है भाई, क्या कीबोर्ड फोन था. 10 साल पहले तो नहीं ब्रो, नहीं 10 साल पहले तो निकाल दिया था एंड्रॉइड पे सैमसंग ने. 15 साल पहले तो हो ही सकता है यार. अभी बचपन में मेरे पास ब्लैकबेरी फोन दोस्त के पास होता था, मेरे को बहुत मजा आता था भाई. 10 साल पहले क्योंकि 2013 था तो तब तो शायद स्मार्टफोन निकल लिए थे. क्या पता है, आईफोन ही रिलीज 2007 में हुआ है. वही ना तो फिर बहुत लेट हुआ है. मेरे को पहले पता होता मैं खुद रिलीज कर लेता. सैमसंग J सीरीज थी तब. हाँ वही मतलब था, स्मार्टफोन तो निकल ही गए थे. J1 J2 हाँ They have the numbers now. Galaxy के भी निकल लिए थे. Galaxy का Cosmic Divide is not gonna help you that much. Note Patty is stranded, lost in no man's land. He can't even cross over to defender spot. 2016 में निकला था शायद, 15-16 में. They kind of let him have that one. No exit frags for you though, and this is gonna put Team Secret on that 11. तूने तो मतलब 2-3 साल एकदम हार्डकोर मोबाइल गेमिंग किया होगा ना. तेरा बेस्ट फोन कौन सा था जो तुझे अच्छा लगता हो? मैं तो जिस पे खेला था OnePlus 5 था वो मेरा उस टाइम पे बेस्ट. उसी पे खेला था मैं, टूर्नामेंट भी उसी पे जीता था. टूर्नामेंट के टाइम पे ऐसे नहीं होता कि सबको इक्वल मोबाइल्स मिलेंगे या फिर नहीं. हाँ वो टूर्नामेंट में इक्वल ही था, फाइनल्स में इक्वल था, पर तब तक अपने अपने फोन से खेलना ना ऑनलाइन में. तो ऑनलाइन वाला इसी खेला था मैं OnePlus पे. OnePlus 5 पे खेला था. बताओ. पर उस टाइम पे वो वन ऑफ द टॉप एंड्रॉइड डिवाइसेस में काउंट होता था. लेटेस्ट था वो और चलता भी, उसमें गेम लैग भी नहीं होता था. बाकी एंड्रॉइड डिवाइसेस में बहुत लैग का इशू होता था, मेरे वाले में नहीं होता था. तो आई कंसिडर इट गुड फोन उस टाइम के हिसाब से. None whatsoever, and this is something that really obviously एकदम flawless भी नहीं चलता था गेम जितना आईफोन में चलता में भी, पर you would have expected so much उतना BTV नहीं देता जितना बाकी एंड्रॉइड देते थे. I don't know, something's lacking. मेरे पास अभी OnePlus 5 है. मेरा तो खराब हो गया. सैमसंग ही था शायद. Every single time that they try to explode, सैमसंग उसके पहले था मेरे पास. जब खेला मोबाइल गेमिंग जब शुरू हुआ वो कॉलेज के टाइम पे शुरू हुआ, कॉलेज खत्म होते थे तब OnePlus 5 था. कॉलेज मतलब 11-12 ना तेरे लिए? हाँ कॉलेज मतलब 11-12 ना तेरे लिए? कॉलेज 11 से बीकॉम खत्म होने तक 5 साल, 11-12 और फिर 3 साल बीकॉम के. तो 11-12 में तो फिर भी नहीं, लास्ट के 3 साल बीकॉम का 3 साल गिन सकता है तू. जब इंडोर फोन रखा है फिर अभी जो जिस पे तू खेला है. हाँ पर वो चलता नहीं है. बड़ा तो है पर मेरे डैड मेरे को बोल रहे थे पीसी रखेगा, वो जो पहला पीसी है. मैं बोला कैसे रखूं? मेरा तो ये आइकॉनिक फोन है ना यार, इसी से शुरू हुआ है तो ये वैसे रखा है. If you're late on it, that's right. ओए बोला ना
कि तेरे घर पे चोरी करने लायक कौन सी चीजें होगी गिर रहा था मरा क्या वॉल बनाई ये पागल है क्या Envy just so happens to be on that other side. अरे वो केजे का तोड़ने गया शायद. Sneak behind the wall, and it just doesn't work out. Fox, though, pushing down mid, just might be able to set a bit of a flank, but Team Secret doesn't care. They already have the site. They're pushing in to set up those same post-plant positions. Samsung तो चोरी भी हो गया था ना हाँ Samsung नहीं Samsung Grand 2 Galaxy Grand 2 वो वाला चोरी हुआ था अभी याद आ रहा है ये सब फोन उसके बाद Note 3 Neo लिया था वो 2-3 साल चला फिर उसके बाद OnePlus 5 लिया Talon trying to set up for that coordinated push, and it works out for the time being. But what is this? Envy! A turret kill from Jeremy too! Dubstep with the blade pushes them even further back and claims that match point. Economy for Talon is terrible now. शुरू भाई एकदम कट्टू कट हुआ था 3-3 चल रहा था उसके बाद 2 राउंड दिए सिर्फ उसके बाद ये लोग ने जो पकड़ा है वो दिया ही नहीं उनको चांस वो 3-3 के बाद वो लोग ने एक राउंड वो 4th राउंड जिसमें उसने पीछे से वो तुक्के पे लग गए एक तरीके से वो जो केओ ने राउंड जो जिताया था 3 किल मारे वो ऑनेस्टली लकी राउंड था वो भी उनका हारा हुआ राउंड था 1v3 में उसने पीछे से मार दिया वो और उसके बाद भी एक ही राउंड आया टीम सीक्रेट बेटर है अब तक तो एक पीछे क्या चेकिंग हो रहा है उसका तेरे को पता है ना प्रोफेशनल मैचेस में पीछे खड़ा रहना अलाउड नहीं रहता प्लेयर के हां Once they get that spike down, it might as well be game over, and I just hope it's not going to happen so easily. But looking at how this plays out, we just might have that 13-5. Not ऐसे तो नहीं होता ब्रो अगर सुपरवाइजर है तो वो तो देखेगा ही ना अरे इतना पास आके नहीं दिखते वो लोग होता तो है ब्रो किसी का पता नहीं हमारे तो भाई हम लोग जब खेलते थे टूर्नामेंट्स मोबाइल में तो पीछे रहते थे हर एक के पीछे एक रहता था हर टीम के पीछे हर टीम के पीछे एक वो रहता था एड में अरे trying to play around the turret. A bit of a stinger kill. No spray transfer. It's too hard to control that recoil. And it's going to be a 4K for Jeremy to close this out. 13-5. What a way for Team Secret to show up and upset match predictions. This looked pretty clean from Team Secret. They were really well oiled. कितना हर्ट्ज का मॉनिटर लगता है 360? The teamwork. क्या उससे बेटर निकला है कोई कौन सा अच्छे में अच्छा कौन सा निकला है मेरे को तो सबसे बेस्ट तो बेनक्यू का ही लगता है जोवी का बट मेरे पास खुद के पास आरओजी सीरीज है पता नहीं यार क्या सोच के अच्छा बेनक्यू वाला 240 हर्ट्ज वाला ही है Just going back to like whatever's comfortable. मेरे को आरजीबी अच्छा लगता है The way that they're playing right now, again with these compositions, maybe Talon were trying to experiment and do something a little bit different. Time has changed. I don't recall seeing them play this during lock-in, but on the other hand, for Team Secret, they're not messing around with anything. It's just whatever works. If it ain't broke, don't fix it. Yeah, Talon played against DRX on Icebox. It was the decider in that best of 3. They lost 13-10. They looked good. They ran that kind of Viper, Harbor comp. They had some good reads on how DRX was playing. 57,000 का ले ले Viper. क्या? Good run of it. So BenQ I imagine Talon probably feels pretty कितना 1000? However, 57 Secret has been really, really strong on Icebox. पागल है क्या एक मॉनिटर क्या लेगा इस तो क्या लेगा मतलब ब्रो आर यू किडिंग मी I think this should be a good map. I think 240 जब है ही तो क्या लेना जब अगर नया पूरा पीसी अगर बना रहा होता तब एक बार फिर लेता Certainly should be a lot closer. Talon does have that experience on Icebox, ये भी good enough ही है बे 240 once again, not to अगर तेरे गेम प्ले में अगर 2-3% का भी फर्क पड़ रहा है तो बीइंग कंटेंट क्रिएटर तेरे को लेना चाहिए नहीं बे इतना ये नहीं होता पर मतलब वो बोलने की बात है कि भाई तेरा एक पॉइंट पे पड़ता है ब्रो हर्ट्ज पे हाँ पड़ता है पर इस पे वो कब पड़ता है 140 से 240 में ना काफी पड़ता है अरे 140 से नहीं 240 से 360 में पड़ेगा 2-3% का और 140 से 360 में तो भाई 10% का पड़ेगा फर्क मुझे लगता है 240 में भी पड़ता है तब उसमें मानते कि पड़ता है पर फिर गेम प्ले भी मैटर करता है ना यार
अल्टीमेटली वो तो है कि तेरा गेम प्ले अच्छा नहीं तो क्या ही लेगा वही तू 360 लेके क्या ही करेगा तू भी मेरा डायलॉग छोड़ दिया वो मैं कहना वही चाह रहा था तूने बस बात समझ के मेरे पे चिपका दी मैं तेरी बात कर रहा था देख ट्विच पे राइट साइड लेफ्ट साइड में ESL CS:GO की वॉचिंग 31 के आ रही है वो भी CS2 खेल रहा है क्या फायदा करना तो वही 2 किल है हाँ ना भाई करना तो वही 2 किल है तूने चैट में मेरा नाम खराब कर दिया इतना बेस्ट प्लेयर हूँ मैं टैलन ने टाइम आउट नहीं लिया क्या लिया तो होगा यार पार्ट के पास है 360 देखो वही बात है ना देखो 240 हो या 360 हो दोनों में बेट ही करना है तो फिर काइस को भी देखो दोनों में 2 किल ही लेना है तो क्या सही की बात है मैं ले लूंगा बस 360 240 के ऊपर आइस को विजिबल नहीं होता अरे ऐसे कुछ नहीं होता आंखें भी बदल लो मैं तो बोलता हूँ फिर आंखों को अपग्रेड करके 360 ये सब बातें हैं ब्रो आंखों को अपग्रेड देखो भाई Amazon पे सर्च मारो अपग्रेडेबल आई बॉल अब 0-1 जब हो ही गया है तो 0-2 करके खत्म कर दो ये खेलने का मन हो रहा है नहीं भाई मैं जा रहा हूँ पढ़ाई है मेरे को पढ़ाई है पढ़ाई खत्म नहीं हुई तेरी करना पढ़ाई कैसे खत्म हो जाएगी यार 1 साल बाकी है पूरा इंटर्नशिप रहता है LLB में अच्छा यप mechanical hand for more precision yes mechanical hand yeah तेरा मतलब जब वैलोरेंट फर्स्ट पीसी खेलता है तेरा पागल है क्या काफी टाइम बाद वाला जैसे कि वैलोरेंट से 2-3 साल पहले कोई किसी गेम नहीं खेला था ऐसे वाला सीन तब तो वैसे भी नहीं खेलते थे ना यार तब तो फुल टाइम ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे मोबाइल पे ही खेलते थे उसके पहले कॉलेज के दिनों में खेलता था मैं हाँ तेरा भी वही सीन होगा फिर कॉलेज के टाइम पे कि साइबर में जाने का डेली का पैसा खर्च करने से अच्छा है मोबाइल गेम खेलो नहीं ऐसा पैसा खर्च करने का बात नहीं था दोस्त लोग फिर वो हो गए ना बे 11-12 तक था वो ग्रुप उसके बाद हम लोग की कॉलेज दिन की हो गई सुबह की तब तक ना दोपहर की कॉलेज थी तो हम लोग रोज क्लासेस के बाद खेलने जाते थे पर फिर उसके बाद कॉलेज जब सुबह की हो गई तब पूरा वो हो गया फिर टाइमिंग ही मैच नहीं हो पाया उसके बाद क्योंकि फिर दिन में कॉलेज और फिर शाम को किसी का आर्टिकलशिप है किसी का ऑफिस है वही किसी का कुछ चल रहा है किसी का कुछ चल रहा है तो वहीं पे हो गया फिर मेरा फिर MBA का क्लास होता था वो शाम को तो वो फिर बाबा MBA कर रहा था तू हाँ वो एग्जाम तो बीकॉम के बाद होनी थी तो इसलिए वीक में 2-3 दिन ही क्लास होते थे पर वो शाम को ही होते थे तो वरना वही था हम लोग अब पहले शेड्यूल सेट था तब रोज क्लास के बाद हम लोग छूट के पूरा 12-14-15 लोग का ग्रुप जाता था खेलने हम लोग ही आपस में बड़े खेलते रहते थे भर के as they're able to take out talent here on Ascent in quite commanding fashion. फिर उसके बाद वही हो गया ना शेड्यूल घर का हो गया कि भाई घर से निकलना ही नहीं होता था फिर तो कॉलेज भी मुश्किल से अटेंडेंस के लिए जाता था तो घर पे बैठे-बैठे खेलना शुरू हुआ तब वैसे मोबाइल पे शुरू हुआ Team Secret really thrives and wants to play against what are considered stronger teams, better teams. Well, they did so well and this is really putting Talon in hot water. I mean, I thought Talon had a decent chance and जल्दी लगा भाई the first 6 rounds there was a bit of a back and forth and then that stopped. Yeah, I mean you look at that. ये भी नॉकआउट है क्या जैसे अपना वो के टाइम पे था नॉकआउट वो लॉक इन वाला ही था नॉकआउट बस brutal. But like you said, it जी का वापस मैच है ना कल है looking like Talon were going to be able to, you know, hold a candle to them. कल ही है ना गाइस trading back and forth. जी का पहला मैच है या हो गया नहीं कल पहला हो गया 2-1 हारे वो लोग
could not really find their footing किसके whatsoever. सामने था कल? किसके सामने था? Does end up earning the highest ACS in the lobby for his squad. देखा नहीं था मैंने. It's a 13-13 Highlight देखी scoreline थी on an उसकी agent pick that can play aggressively, that can G put up versus frags. versus versus He wasn't really able to versus. do that. नाम भूल गया, बहुत अच्छा Going टीम over था. into the Killjoy role, something that we thought that अच्छा मतलब Dubstep was known going to टीम be था. playing here for his T1, squad. yes, T1. Just looks incredible for this team. Had that Saya great player वाला. drop down kill that I'm sure we'll see in the highlight package in a little bit here. But it was just so fantastically done for them. Dubstep as कल well. DRX के साथ है. Hasn't played the Jet as much. I'm wondering if it's not necessarily in Jeremy's wheelhouse. Sure. He hasn't played ये तो every team versus every team. Yes. इसमें हर एक टीम का एक-एक के साथ होगा. हर टीम के साथ एक-एक मैच होगा. तो लंबा चलेगा ये तो. थर्ड को है जी का. Yeah, I mean, the team कल Secret नहीं है. definitely looking very good. Now, we mentioned that it was kind Next of a back Monday, and forth okay. in the first half here, and Talon had some promising moments. I mean, Ascent is not an easy map for the attackers. WrestleMania भी traditionally, next at Sunday the को है highest बे. level, and they had some good reads against Team WrestleMania वगैरह दिखता है क्या अभी? Obviously, bro. Talent, they were getting a decent sense of how Secret wanted to play this map early. They knew that Dubstep was going to be looking to go for an operator. मेरे को समझ नहीं आता भाई. फुटबॉल देखने का कोई उम्र नहीं होता. क्रिकेट देखने का कोई उम्र नहीं होता. WWE देखने का उम्र है भाई. जो रेसलिंग फैंस हैं, फेक नहीं है. देख दोनों में फर्क है भाई. फेक और स्क्रिप्टेड दोनों में MMA फर्क है. देख. MMA भाई वो फाइट है. ये रेसलिंग है. वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट. उसका नाम में एंटरटेनमेंट है. तू मूवी देखता है वो भी स्क्रिप्टेड है. मूवी क्यों देखता है फिर तू? मत देखा कर. फेक फाइट होती है वो भी. एक्शन सीन्स तो फेक होते हैं. मैं तेरे को क्या समझाऊं? मेरे ऐसे को होता है जब बच्चे लोग रोते हैं ना. नहीं, ये भी ऐसे होता है जब सामने एक लेजिट आर्गुमेंट आए ना तो जवाब नहीं होता है लोगों के पास. ये वैसे होता है. बोल ना, मूवी क्यों देखता है तू? इट इज एज गुड एज वो मूवी. मेरे को देख के मजा आता है. मेरे लिए एंटरटेनिंग है वो, तेरे लिए नहीं है. तेरा ओपिनियन है. रियल फाइट नहीं है ऑब्वियसली, वो रेसलिंग है. इंजरीज होती है रियल, रिस्क भी होता है. बैक इंजरी से अभी ऑर्टन 1 साल के ऊपर से बाहर है. इंजर्ड है. रैंडी ऑर्टन तेरे मासी का लड़का ऑर्टन बुला रहा है. हाँ ऑर्टन भाई. This is really the most important round in order to take that and try to build that up. And we saw they managed to get in there, get that spike planted, and so here was. और वो स्क्रिप्टेड होना भी एक प्लस पॉइंट ही है मेरे हिसाब से. तो भाई स्क्रिप्टेड होने से ही तो वो एंटरटेनमेंट फैक्टर आता है. वरना इतना एंटी क्लाइमेटिक एंड होता है ना MMA वगैरह मैचेस अगर देखोगे तो. और उतना गोर फाइट्स देखने में मजा नहीं आता मेरे को तो. कि भाई खून खराबा वैसा वाला भी. किसी का नाक फोड़ रहा है, कोई किसी का मुंह तोड़ रहा है. वैसा वाला फाइट देखने में मजा नहीं आता है मेरे को. मेरे को रेसलिंग मूव्स देखने में मजा आता है. हाइप होती है. Yeah. Jeremy Johnson. ग्रुप गेम्स का अपडेट गाइस होगा आज. अमंग अस का प्लान तो बना है ग्रुप पे, पर यार मेरे को पता नहीं मैं तब तक जाग पाऊंगा या नहीं. मैंने इन तो कर दिया है. पर कितना बजे खेलने गया अमंग अस? होगा तो 9:30. तब तक वैलोरेंट खेलता है. तू तो बोला तेरे को काम है. अब तक लॉबी बनी नहीं है पर यार. मॉर्टल, मिली, जोकर, पॉट, अक्षु, वाइपर, स्नैक्स, माफिया, जेरेफ, 9 लोग का ही ना है बस. और मैसेज को 3 घंटे 2 घंटे के ऊपर हो गया. Uncommon to see it, but the way that this entire thing was comprised was a little bit out of sorts. And if you're gonna put, for me, if you're going to put Patty in, if he's feeling confident, says, you know what, I'm ready to play, my wrist is healed with surgery, it's worked its magic, I can perform again, I want to see him on Jet. I want to see him have that high impact play where he's got mobility to play with, because we know how mechanically gifted he is. You squander that a bit by putting him on something like Sage, but even then, like I said, you can go battle Sage mode. You can take over lobbies. We've seen it plenty of times in the past. Zest has done it a number of times in his history of playing that pick, but it just didn't happen at all here for Patty. The stars did not align, and Talon, I think they're going to need to make some adjustments going into this next map. Yeah, and of course, a big question is okay, well, we weren't really expecting Garnets and Pat both playing in map 1. They did. Now, after kind of a tough loss against Team Secret, probably not one they expected. Will there be a roster change coming in to map 2? Online में नहीं आ रहा, उसको PC बनाने का दिमाग में चल रहा है बस. It's the entire team, right, that had a tough time, and it looks like it is. Aman has only one move. What we expect.
Yeah, it's Jet Boys leaving for Sushi Boys. And now I will say this, the roles are a bit more transparent here at the very least, right? You've still got Foxy who can play those initiators. Then you have Sushi Boys who can play the Sentinel. Pat can maybe still be a flex depending on how they want to play it out. But again, I mean, I guess with the Sage, it makes more sense going into Icebox, so you can just leave Pat completely on that role, and then, you know, you see the Jet still continue to come through for Garnets. That's what I'm anticipating here. I do like this adjustment more than what we saw in the previous one. Maybe they just made up some arbitrary rule where you can only have one player with boys in their name in the lobby at some time. This was in the Riot rulebook. You can't have too many boys in the... They have to conform to this. So Jit Boys now steps out for Sushi to come in. Either way, I'm not sure. We'll see how they look. There's a chance that this is उसके सीक्रेट वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा पॉसिबल सीक्रेट वाइफ बिंदी नहीं उसकी नहीं पता क्या बालिका वधू ओह माय गॉड ये तो लंबा गंदा वाला दिया True, yeah. And I want to point out, you know, if Team Secret wins, this is going to be kind of the first upset. Not the craziest upset, but this would be compared to all the other games we've had, which have been. तुम्हारे अनुसार मेरा शेड्यूल चल रहा है, पता नहीं कब ठीक होगा. हाँ यार, तभी मैं देख रहा हूँ आज मेरे सारे भाई और बहनें रात की स्ट्रीम देख के अभी सो रहे हैं शायद. तो सुधर जाना भाई. नहीं वो I apologize, मेरा शेड्यूल अभी बिगड़ गया है, मैं दिन में आ गया हूँ. थोड़े दिनों में वापस रात का शेड्यूल कंटिन्यू होगा. सब्र बांधे रहे, बांधे रखे, सब्र का बांध ना टूटे. Just because of we talked about it before the match, right? Because they face so different opponents, right? Both Talon and Team Secret. A lot of people also question, well, maybe this match could be closer than we think, but most people would still favor Talon just because they went through a bit of a long. Among Us देखो खेलने का प्लान तो है, पर लोग अभी बने नहीं हैं, 8-9 लोग ही हुए हैं. मैं ट्राई करूँगा, पर वही है यार, फिर आज शायद फिर लेट नाइट स्ट्रीम होगी नहीं अगर Among Us हो गया तो. You know, Liquid looked completely lost. Late night too, but late night से सेहत खराब होती है. सब कुछ खराब होता है. ऐसी बात नहीं है ब्रो. ऐसी बात नहीं है. You are mistaken. मेरा तो दिन में जल्दी उठ के सेहत खराब होता है. सही में. ये मेरा सही शेड्यूल है. ये शेड्यूल को मैं बिगाड़ देता हूँ तो मेरा तबीयत खराब होता है. हाँ ना. लेट नाइट शेड्यूल को अगर बिगाड़ा मैंने तो मेरा मैं 4 साल में गेमिंग चेयर में बैठ के बीमार फील होता है ब्रो. बीमार फील होता है दिन में अगर टाइम पे उठ गया ना. मम्मी भी पूछती है तबीयत ठीक है भाई. ये कोई उठने का टाइम है. सही में बीच में मेरा वो शेड्यूल सही हो गया था ना, तो रोज सुबह मम्मी पूछती थी कि आज तू जल्दी उठा है या तो सोया ही नहीं है. बोलना पड़ता था, भरोसा नहीं होता था कि भाई सो के उठाऊं भाई, जल्दी सो गया था, भरोसा ही नहीं होता था. मैं कल सोने ही जा रहा था तब मैंने कहीं से मर्सी रहेगा सिर तक का आवाज सुना, बस तब से जाग ही रहा हूँ. क्या बात है भाई, क्या बात. कहीं से सुना मतलब. अरे वो मैं सोलो खेल रहा था, फिर एकदम से ये लोग का सुबह 4-5 बजे ग्रुप में प्लान बन गया वैलो खेलने का. तो आगे 5 मैन स्टैक सुबह 5 बजे वैलो खेल रहे हैं. कौन को सर्वर मिला भाई सुबह? हाँ मुंबई सर्वर. हाँ. What the Asian picks are going to look like as we get ready to see the lineups here. It does look like we're predicting a Harbor pickup here for Talon. It's actually going to be Pat, so continue to play that flex role if this goes down the road. मम्मी जागती है? नहीं, मम्मी सो जाती है वैसे तो. पूरा तो नहीं जागती. 1-2 बजे तक. We got Borka locking in over here with the Viper. And Jeremy actually is going to be taking that Sage. Yeah, so where the big Thanks for 2K winning map 2 का भी बता दो. So we have an entry, the duelist on one side, but then it's Talon. वैसे मैंने तो Talon बोला था, टीम सीक्रेट जीती है. To make sure that तो पता नहीं आप कौन से 2000 जीते हो. All right, well, pressure up right now here for the side of Talon. I'm Patty going over to the harbor. Not what I had anticipated whatsoever, but they're taking a leap out of that. मैं तो ठीक है, ऊपर से रेगा नशे में एंट्री कर रहा था, पता नहीं कैसे जीते थे. फर्स्ट मैच तो हारे थे जिसमें रेगा रेस खेला, मैं स्काई खेला. मैंने मारे 24, उसने मारे 21. मार के भी हार गए. यस. कौन-कौन था ऑफिस था?
utility to be able to get that intel to really force Talon और out of थग their मर्सी comfort और zone. सिड We're going to have to wait and see how this pans out. Currently, Team Secret leading हम लोग 1-0 against रहेगा मैच एमवीपी मेरा छीन लिया उसमें भले मेरे 3 किल ज्यादा थे और रेस का एवरेज कॉम्बैट स्कोर लेके साला फिर अगले गेम मैं रेस खेला इजी मैच एमवीपी मैच विन भी इससे पता लगा कि टीम में फ्रैगिंग ड्यूलिस्ट के साथ-साथ टीम प्लेयर भी होना जरूरी है जीतने के लिए Thank you very much. जिसमें मैं इनिशिएटर खेलता था और रुकता ही नहीं था मेरे फ्लैश वैश के लिए गुज जाता था आगे क्या फायदा किसके लिए फ्लैश दूं मैं I don't know, man. Hey, I'm Quack. This is Paper Thin again. Of course, we're going to go into Icebox. We saw that agent select. एक से वीडियो नहीं डाले जस्ट सिंह अरे हाँ यार वीडियो एकदम लाइंड अप है एक्चुअली 2-3 आएंगे क्या बोल रहे थे बोल एक चीज है कुछ लोगों को ना फ्लैश की जरूरत पड़ती है ना कोई चीज की अच्छा खेलते हो लोग जैसे मैं क्या बोलता तेरे साथ भी टीम आती है रेगा के साथ भी आती है बस इतना ही मुझे लगता है ऐसा फैक्ट्स है that you have to contend with from the side of रेगा ड्यूलिस्ट खेलता तब सही में इनिशिएटर खेलने का मेरा मन ही नहीं होता पॉइंटलेस है एकदम I think they had a pretty good idea. I think we all knew that this was probably going to be the comp that Talon was going to run with on this map. So I think they should be उससे अच्छा दूसरा ड्यूलिस्ट लेके उसके साथ-साथ डब्ल्यू कर दूं मैं क्योंकि वो तो रुकना नहीं है उसको तो you know that well-oiled machine we were talking about. रेगा मेरे जैसे खेलता है थ्रोअर है तेरे जैसा सही बात बोला तूने डब्ल्यू की दबाना थ्रो नहीं होता ब्रो डब्ल्यू की में अगर तो ड्यूलिस्ट के साथ घुसेगा ना तो इजी विन रहता है लोगों को लगता है कि ड्यूलिस्ट थ्रो ही है जब तेरे को इनिशिएटर कॉल दे रहा है कि मेरे फ्लैश या मेरे डॉग के लिए रुक जा और फिर भी तू डब्ल्यू कर रहा है तो थ्रो ही बोलते हैं उसको फिर मैच चालू है चुप बैठ नहीं अब क्यों तेरे को सामने जवाब मिल जाता है तो तू एकदम चुप हो जाता है एकदम गेम चालू है ब्रो मैं नहीं दे रहा तेरे आवाज वही तो सुना ही सच्चाई हमेशा दबाई जाती है गाइस ठीक है दबा रहा हूँ मैं सच्चाई सच्चाई है कौन 120 किलो का जो है दबाई गई अच्छी बात है सच्ची में 120 है क्या मैं तो तुक्का लगा मैं अभी कम हो गया रहेगा कम हो गया है वैसे 10 जिम कर रहा है क्या ओह माय गॉड बॉडी बिल्डिंग वाओ टीम सीक्रेट देख कहां तक पहुंच गई व्हाट द फक ब्रो वंडरफुल लर्किंग गेम प्ले यार मरा ओए कैसे जिंदा है ये एक एचपी पे वॉल देख क्या वॉल बनाया है ये किसको ब्लॉक करना था इसको इसके पीछे तो उसका खुद का ही बंदा आ रहा था किसको ब्लॉक किया फिर उसने मेरे को लगता है पैनिक में डाला है वॉल बहुत गंदा भी पूरा मैप में घूम रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं भाई तो खुद ही नहीं पता कि कहाँ जाना है क्या करना है टरेट से मर गया मैं भाग क्या रहा है इसको क्या खेला ये क्या नशा ये डबल लर्किंग का यही प्रॉब्लम बता है अबे अटैकर डिफेंस स्पॉन में घुस गए डिफेंडर अटैक स्पॉन में घुस गए क्या नाइफ किया था ना गेम 1 पे अभी बराबर से बताएगा उसको नाइफ क्या होता है ये देख क्या वॉल बनाया है After that, they kind of just went their separate turret ways. मार के I हंसा feel है like बे not उसको everyone was on the same page. Maybe Borgum was trying to hold people down on the A side while everyone else rotated over. Guys, उस टरेट के ऑलरेडी अमन के बराबर किल हो चुके हैं डिसरिस्पेक्ट हो जा रहा है अमन मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ एक दिन ऐसा क्या कि अमन 5v5 में एक किल ले खत्म ही हो जाएगा वो तो खत्म वो होगा नहीं पर कभी क्योंकि 5v5 में कभी वैसा लॉबी नहीं बनता जहाँ 10 के 10 ट्राई हार्ड कहीं ना कहीं एक जोकर भाई आ ही जाएंगे एक मावी आ जाएगा एक कोई ना कोई तो आ ही जाएगा यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं प्यारे तरीके से एक आधा किल बबले को दे ही देगा We had the Achilleos Paper Thin podcast yesterday. Yes, you got a lot of that yesterday. We had 2 rounds. We have 2 podcasts yesterday. We were able to get 2 episodes in, but should be fixed pretty quickly, I think, from what I'm seeing. This one doesn't seem to be, hopefully, not a huge. गाइस के साथ नहीं जीत पाओगे आर्गुमेंट में लॉयर बनने जा रहा है वो
अरे उसका लॉयर का असली केस तो मेरे साथ ही लड़ना होगा उसको। वो वहां केस जीतेगा, यहाँ हारेगा। या मैं उसको ऐसा डिमोटिवेट करूंगा कि वो और मेहनत करके वहां केस जीतेगा। बोलेगा हाँ भाई इसका कमबैक तो देना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा अगली बार। यार ये लाइनअप ना मैंने बहुत बार देखा, ठीक है, ये जो उसने येलो का मारा ना ऊपर, हाँ वो अच्छा है। हाँ वो हर बार रिबाउंड जाके मेरा मैप के बाहर जाता है, फिर मैंने वो मारना ही छोड़ दिया, मैंने सीधा सीधा येलो का रिकॉन देता हूँ मैं। पता है क्या तेरे को ऊपर मार्क करके गन से तोड़ना पड़ता है वो, तब तक अगर कोई पुश कर दिया तो तुम मतलब मरेगा ही मरेगा। स्टेज को प्लान दे दिया। गेको नहीं ले सकते क्या? गेको नहीं है ना अब तक, आया नहीं है। पुराने अपडेट पे खेल लेना, मतलब ये लोग को अलाउड नहीं होता ना। तभी तो जब चेंबर भी तो लास्ट टूर्नामेंट में नर्फ हुआ था, ये लोग तो बफ वाले के साथ ही खेल रहे थे। वो एजेंट जब तक प्रॉपर नया रिलीज हुआ ना बे। बराबर। अलाउड है, ले सकते हैं। हाँ क्या एक भी गेम में दिखा तो नहीं है यार, सीक्रेट में ड्यूलिस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, डबल इनिशिएटर, डबल सेंटिनल, especially up on top of pipes. Team Secret are exploiting this. Sentinel. Elevated angles just to push in and claim that side for themselves. The only one left, Sushi Boys. Not much that he can do. Nanostorm, a little bit of damage. But he's got a sheriff. Oop. I was trying to big him up, hoping he hit a banger shot there, like we saw in previous match, but it's just going to be Jeremy good for the finish and the flawless. We've seen a lot of flawlesses so far in this particular match. नहीं अलाउड है, 30th से आएगा VCT में। अच्छा VCT वाले को मुंबई सर्वर खेलने को बोलो, स्टैट्स बदल देंगे। अरे मैं तो भाई बात बोल रहा हूँ, मुंबई सर्वर वाले प्लेयर तुमको किधर नहीं मिलेंगे। लेजेंड्स होते हैं भाई, इमॉर्टल रैंक पे, रेडिएंट रैंक पे भी मजा आता है भाई। Especially from both sides. Yes. It got kind of confusing. इतनी वाइड वैरायटी ऑफ इमॉर्टैलिटी है कि भाई वो इमॉर्टल वाला फ्लैट गेम प्ले के साथ भी आ सकता है, रेडिएंट गेम प्ले के साथ भी आ सकता है। Big pick from this operator from TLN as well. Perhaps they can find some गया Fox up top, pushing down for pipes, down through the maze. Team Secret have no choice but to back off. सोया नहीं है मतलब रात से? नहीं ना, तभी तो नींद आ रही है। मेरे को भी आ रही है जबकि मैं सोया हूँ। टपली बोरिंग हो गया भाई गेम। हाँ बे खत्म करो बे, थर्ड मैप तक मत लेके जाओ। टाइलन जीत रहा है ब्रो। TLN dodging the recon dart. TLN. Kind of catch. TLN. Dubstep a little bit off guard. The spike drops, and that gives a lot of comfort here for TLN to get really aggressive. मुझे एक बार मैं ना CS:GO खोल के देखने दो। CS:GO में क्या अपडेट है? Immortal 2 में इतने टॉक्सिक लोग भरे, मुंबई खेलने का मन ही नहीं करता। टॉक्सिक तो हर रैंक में भरे, वो अलग बात है। तुमको अपना रैंक शो ऑफ करना था इसलिए तुमने लिखा Immortal 2 में भरे, वो बात मेरे को समझ आ गई। पर टॉक्सिक तो हर रैंक पे, आयन से लेके रेडिएंट तक। It is just like some people are good, some people are bad. हो गया वैसे ही है वो। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। Some people are good and some people are guys. हाँ ठीक है चलेगा। Healing himself, not a huge problem. They just तो राउंड में टॉक्सिक में well, not entirely free. One player got इसके सबसे पहले इसके मुंह से निकलता है चल टैटियां, फिर पहले माइक म्यूट करके बोलेगा, टीम में नहीं बोलेगा, फिर उसने सामने वापस से ट्रिगर किया तो माइक खोल के फिर से बोलेगा ये अगली बार। फिर लड़ने वाला बात तो होगा भी नहीं, सामने वाला भी ईगो फाइट, इसका भी ईगो फाइट, तूने कैसे बोला, तूने कैसे बोला, तूने कैसे बोला।
फिर हो गया और टेने मेने में बाकी तीन ऐसे कि भाई यार हम कहाँ आ गए, ये हमारी टीम में ही क्यों आ जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि हमारी टीम में क्यों आ जाते हैं, तो मेरे पार्टी में ओ भाई 0.72 on that 4-1. And just barely there. Talon winning a lot of those gunfights. Team Secret trying to find trades, trying to find opportunities to catch Talon off guard. क्या अमन सच में इंजीनियर है? नहीं. You know, even with players like Sushi Boys out in the open, his aim is crisp and clean. And इंजीनियर पढ़ रहा था, वो सिर्फ हुआ थोड़ी है. हुआ है क्या? Having some huge impact as this one goes. Really good stuff from Sushi. Particularly, I was thinking about that wall. It kind of blocked off any angle coming from green or towards garage. यार देखो मेरे को तो लग रहा है इंजीनियर आया, इंजीनियरिंग में भी इंग्लिश सब्जेक्ट तो होता होगा ना यार. Really useful, but now Team Secret just aggressively going into this eco onto the A site. I don't know if they're able to deal with this. इंग्लिश तो हर सब्जेक्ट, हर कोई चाहे जो कोर्स पढ़ो, इंग्लिश सब्जेक्ट तो सिखाते ही है. There's your answer. ऐसा नहीं है यार. Still going in with it though, Jesse. Envy, they're finding some kills of their own. That's the operator gone. Trying to pick it up. Oh god, it's just a little इंजीनियर तो मांबा लगता है. हाँ मांबा ने किया है, वो मैं मान सकता हूँ. कि जब हमारा PUBG मोबाइल का जमाना चल रहा था, मांबा जब हाइड्रा मांबा से जस्ट 8-बिट मांबा बना था, तब साथ ही साथ उसकी पर्चियों के साथ साथ उसकी एग्जाम चल रही थी. मेरे को स्नैप्स आते थे उस टाइम पे. उसका फाइनल ईयर तब चल रहा था. Not quite gonna get the quick scope that he's looking for. Cruz finishing off the final player 5-1. Yeah, I mean just बीकॉम में भी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है. क्या बात कर रहे हो भाई? इंग्लिश 11-12 में तो था. You know, like I spoke a little bit too soon there. It looked like the operator was going to be good, but then they started hitting their shots and were able to push base into the back of A. 11-12 तक तो पढ़ाया जाता है ना यार. कुछ भी पढ़ने के लिए बेस तो इंग्लिश है ना. ABCD से ही तो शुरू करता है ना यार. आंसर जो भी लिखेगा या तेने मेने वाली लैंग्वेज में लिखता है, पता नहीं भाई. It is a bit unfortunate for Talon in a way that you have to use the lockdown in an eco against an eco round, but still. मांबा ने जॉब भी की थी. हाँ मांबा ने इंजीनियरिंग होने के बाद ब्रीफ पीरियड के लिए यूट्यूब के साथ साथ मांबा की जॉब भी लगी थी जब मांबा के घर से प्रेशर था. I mean, he's effectively kept them trapped in here. Meanwhile, on the other part of the map, Fox has taken full control of a garage, potentially getting so much information. They know it's not a hit. They might think about mid, but other than that, it's this huge freaking obstacle. all in या तो इस पे या उस पे. So annoying, dude. Okay, lockdown. All right. Gonna try to push through. Of course, you have Envy's ult popped as well. It was a tough decision, but the right one. That pit to get in, right? This is a good counter here with their utility. Oh! Ooh, the Hunter's Fury. Speaking of counters, here comes that Hunter's Fury. Sushi Boys pushing past screens as well. 2 players gone. The spike has been planted, but can you actually hold it on even further? Reckoning gets set through. भाई तू मेरे को ये समझा मेरा PC क्यों बंद होता है? मेरा भी जस्ट बंद होके चालू है. मैं खुद डर गया. क्या चल रहा है? क्यों होता है यार ये? अच्छा सवाल है, बट मैं खुद कंफ्यूज हूँ. एक सेकंड. थर्ड मैप दिख रहा है दूर से. मैं नीचे से सेव पूरी लेके आया. भाई मेरे लिए प्लीज भाई. मेहमान भाई तुम तो मुंबई में ही हो भाई. बोरीवली आ जाओ यार. एक मिनट. They won the pistol, excuse me, but then we had one round from Team Secret and एरिया पता नहीं, बट साला मैं बहुत ये क्या पढ़ लिया भाई. बोलता है अमन जैसा होने के लिए आपको केजी फेल होना चाहिए. केजी फेल. Completely unaware. They're winning so many of their duels right now. Talon is looking like a completely different team for what we saw on Ascent. I mean, this is a लालबाग से बोरीवली एक बार लगेगा. Talon bringing in Sushi. कोई बात नहीं, ठंडी से पूरी भी खा लूंगा यार. चलिए. ये वाला के माइक्रोवेव में डाल दे. You know what? But this doesn't look the same as what we saw against TRX at Lock-in for the side of Talon. Like their game plan was a little bit more patient. It wasn't nearly as aggressive as this. आपके घर से था कभी प्रेशर कि यूट्यूब के अलावा कुछ और? नहीं यार, देखो बहुत मेजर डिफरेंस ये था कि मांबा का एज मेरे से
the same time, I also kind of feel like maybe TLN 4-5 साल तो their पड़े homework, because this is a map that was played by Team Secret हाँ, in the lock-in. 5 साल Against Navi, they could definitely see some gaps. तो मेरा तो जस्ट कॉलेज खत्म हुआ था तो मेरे को तो ऐसा कोई प्रेशर था ही नहीं मेरा तो इनफैक्ट कॉलेज खत्म होते होते ये सीन शुरू हुआ ना तो जॉब वॉब का तो दूर का बात है मेरा तो पढ़ाई जस्ट खत्म हो रहा था और साथ में एमबीए का प्लान था तो उसके बाद वो शुरू होने वाला था पर उसमें मैंने बोला कि 1 साल का थोड़ा ब्रेक ले लेते यहाँ पे ट्राई कर लेते टूर्नामेंट है देखते क्या होता है क्या नहीं वो फ्लो में फिर होते गया ऐसा हुआ टूर्नामेंट जीत गए तो वो फिर इजी हो गया वो इतना ज्यादा वो सोचना नहीं पड़ा होते होते हो गया वो बस वो था कि एक अटेम्प्ट जो था वो सीटी का नहीं दूंगा उसके बाद वाले दे दूंगा एग्जाम के दिन ही मेरा मैच था पीएमआईएस का फाइनल्स था सेम डेट पे सोचो अगर तब मैं टूर्नामेंट ना खेल के एग्जाम देने गया होता आज कुछ अलग ही लाइफ जी रहा था मैं तब टीम सोल में कोई चौथा रिप्लेसमेंट खेला होता और जीते होते हारे होते वो तो पता नहीं मैं गया होता एमबीए का एग्जाम देने मैं भी पास हुआ होता फेल हुआ था पता नहीं क्या हुआ होता कुछ पता नहीं That's what they're doing. There's no flanks for Talon, so it's going to require them to use some आज utility सोलो here. पर Cut off some हाँ angles, see if they can get this done. फिर मैं मॉर्टल की स्ट्रीम में भी देख रहा था बैठ के Possible though. Just those post plant positions. They have to spray it. Fox is sticking it. He gets off. Thanks to so much firepower coming through, whether it's Spectres or Stingers, Fox doesn't care, but Envy just right up by the side. Team Secret finally breaking कंफर्म this बताओ होगा क्या अमंग अस देखो ग्रुप पे प्लान तो बना है लोग जमा होंगे तो होगा वैसा बात है Kind of held back a little bit themselves. They didn't seem to really get aggressive this round with their flanks. Just also really weren't given the time to, frankly, the way that Team Secret was being aggressive here towards the A site. PC lag क्यों हो रहा है इतना? Could not find the opportunity to stick it. किसका? Be able to get मेरा into PC it. lag होने लग गया अचानक से। अरे अरे यार क्या BT है यार? I mean, it's क्या tough हुआ? when your opponent has ये तो those deep सस्पेंस है post plants when they क्या have हुआ ही नहीं पता रहता मेरे को stacking mollies like that. You have to find ways to get beyond basically where the orb starts on the A side, right? You have to get in towards the nest area. मैंने इसी साल दिया कैडर 95% लाया कितने लाने का सोच रहे थे मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था मैंने तो पढ़ा भी नहीं था उस अटेम्प्ट के लिए ऑनेस्टली बताओ तो वो मेरा 1 ईयर अर्ली वाला अटेम्प्ट था जो बीकॉम एग्जाम के साथ साथ दे रहा था मेन अटेम्प्ट एक्चुअली 1 साल बाद होता है मैं अर्ली वाला दे रहा था Not quite able to find it though, and it's going to be the Sage Wall that gives Jeremy the plant, but Patty is already aware of this. Doesn't matter as Sushi Boy is pushing in from the right side. So much to consider, so many angles. मेरा असली कैट का जो होना था वो नवंबर में होना था सीईटी वाला मार्च में हुआ था ये और उसके 1 साल पहले जो कैट का हुआ था वो मैंने दिया था वो जो ट्रायल वाला अटेम्प्ट था ऐसा कुछ तो था याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली Yeah, those nanos weren't placed for dubstep. He still had them in his pocket. He just पर वो तो अटेम्प्ट मैंने दिया ही नहीं सीईटी वाला तो consider it. And, you know, dubstep I think would have liked to have at least had one there already. You know, at the plant, I don't know. I didn't quite see on the map if he just didn't get the opportunity to put it down or if it just escaped his mind. मॉर्टल और ज़ेरेफ एंड आपके बीच कितने साल का डिफरेंस है मॉर्टल मेरे से 2 साल बड़ा है 2 साल या 1 साल मॉडल 28 है ना नहीं पागल है क्या कितना है डेट नहीं है मॉडल 25 या 26 है नहीं 20 हाँ 26 है मॉडल मैं 24 पर टेक्निकली मैं वैसे मैं छोटा हूँ मतलब वैसे मेरा हम लोग का एक साल का ही गैप है मॉडल 97 है मैं 98 बॉर्न हूँ पर क्योंकि मेरा दिसंबर है तो वैसे मॉडल 25 है अच्छा अभी बर्थडे आएगा तो 26 होगा ना इस साल अब मैं इस साल होऊंगा 25 हाँ तो वैसे सही है और ज़ेरेफ 26 हुआ शायद अब याद नहीं यार ज़ेरेफ का भी पता नहीं ज़ेरेफ को कल परसों ही पूछा था मैंने कितने साल का हो गया बुड्ढा कुछ बोला नहीं था तो बोला था चैट देखने दो खोल के He's been hiding here for the longest time, and here he comes. He strikes. It coils out on towards Team Secret at the right time.
You might have gotten the Viper's pit down and you're trying to stick the defuse, I mean the plant, excuse me, but मैं कौन सा गेम खेल रहा, आवाज आ रहा है क्या? नहीं 20 seconds, we're down to the 1v1 and Dubstep. नहीं, उसको शायद मैंने स्ट्रीम पे ही पूछा था, यहाँ पे चैट में नहीं है. 26 है पर हुआ. Around the corner, Mortal 25, Viper 24, Zeref 26. हाँ, correct. Doesn't even go for it, Dubstep. Overthinking it perhaps. Yeah, Dubstep there maybe. दोनों से छोटा हूँ बे मैं. Screens was clear, thinking that he might have gotten back in towards King. Was not the case, and Cruz this time we saw a smart play where he kind of lost the better end of it. Guys, तेरा एज कितना? ओ भाई क्या शॉट मारा बे? मैं 1999 बॉल हूँ. हाँ, तू मेरे से छोटा है. और 1999 सितंबर बॉर्न हूँ मैं, तो फिर अमन भी शायद 99 है. और रहेगा 2000 है. या अमन भी 2000 है शायद, पता नहीं. अमन रहेगा सेम है या एक साल का है कुछ. मुझे पता नहीं, तुम लोग बच्चे लगते थे. अब तू अंकल है इसका मतलब ये थोड़ी यार बाकी बच्चे. Given the guns that they have right now, it's all kind of messed up as well. Sweet 16 हो आप, yes. I'm sweet 16 only. I don't know about this one, Clint. Dude, this is tough now. You've got a lot of defenders here. I got 22, Aman, Kai's 23, Viper 24, Morton 25, Zeref 26. Nice, yes. देखा से छोटा और कोई है क्या? Again, very close to all of this action. This is going to have to be a very, very good execute for Team Secret. Some space given, but again. मावी होगा, मावी और रेगा का सेम है जा. Oh, they tried to boost it. It doesn't matter. They still get the kill. Close range, those firefights. It's kind of helping both sides. Maybe a little bit more for Team Secret because they सोचो बे, मावी और रेगा सेम है जे बे. Unfortunately, it's just going to be a little bit easier for Sushi Boys. मावी और रेगा सेम है जगह, इस सोचो. एक दो बच्चों का बाप लगता है और एक उन्हीं दो बच्चों में से एक बच्चा लगता है. सोचो बे. अरे मौली तो फोड़, पागल है क्या? हाँ, कल फोड़ता ना मौली भाई. भाई ये थर्ड मैप जा रहा है. Secret there, right? Like they plant on the other side of it, and then Dubstep's angle, it cuts him off. आधी है, आधी है. आधी 19 है. A little bit of miscommunication here. 19-20 है, पता नहीं कितना. They had a good opportunity at the start of this. सोचो बे, सही है ना? ऐसे दोनों को बाजू बाजू में इमेजिन करोगे, रहेगा और मावी को. ऐसे बोलोगे दोनों सेम साल में पैदा हुए. Closer towards yellow or in that nook underneath the rope or something. That spot right there, I just feel like. अमन तो बुढ़ा लगता है. अमन अंकल लगता है थोड़ा. वो जब अमन जब शेव वेव नहीं करता ना, पूरा बाबा. एक तो उसका बाल भी कर लिया जब वो लंबा रखता है, और पूरा एकदम जंगली बाबा वाला दाढ़ी रखता है एकदम ऐसा. आपके बराबर एज का कौन है? मेरे बराबर एज का कृतिका है 98. और it's going to have to be this 2-on-3 retake. A head has been spotted. Make that a 1-on-3 now. Cruz, can you do this? Sherlock भी 98 है क्या? इसका आइडिया नहीं. But playing off of contact. Oh my god! So close. It's just the third one that he did not quite expect. Snacks, Snacks 21 लगता नहीं है, छोटा है वो भी. 9-3, but certainly on Snacks रहेगा कि एज का ये है, उससे एक साल छोटा है, पता नहीं. 9-3 कर से भाई 2000 का बॉन में. Snacks तू कितने साल का है? 22. हाँ 22 मतलब वही रहेगा कि एज का ही है. भाई 9-3 कर से बे. हाँ बे, लास्ट गेम उनका भाई. वो लोग वन साइड निकाल रहे थे. ये गेम ये लोग निकाल रहे हैं. ये थर्ड मैप जाने वाला है ये. Coordinated team here, some great individual plays. Cruz there almost got that third nuke. He almost transferred that. That was, I know. भाई जरा कॉल लगाओ यार स्नैक्स भाई, एक बार में खत्म करने बोलो यार. वही बोला यार, जल्दी 2-0 करो तो कि थोड़ा बाहर का एक रैंक मैच हो जाए. वही तो मैच खेलने का मन हो रहा है. ना यार वही ना. कॉल लगाओ. लगा रहा हूं. Definitely a vastly different talent as compared to what we saw in Ascent. And then I just want to remember
Just Goat's quote from like a while back saying that if you want to be one of those best teams, you have to be able to beat your opponent on their map pick. And that's exactly what TLN are doing right now. क्या और stream करोगे या break लोगे? करेंगे. That's really well said. I think both these teams potentially beating each other on their map picks. So that's encouraging. Most probably तब लोगों पे shift करेंगे. This to be a close match. I was worried after a set. Because you watch party वाला stream, I think has to be exclusive. And that was concerning for a whole lot of reasons, but that's not the case. Not sure, but because much like T1 and most yesterday, I thought this should be a very close match. Now we're starting to get it. Now we're starting to see the real potential from both of these squads. And yeah, Cruz seems to have maybe found that Ultra Instinct form. He's had some nasty ones today. He's playing smart, and that's encouraging. Waking up a little bit. His hair highlight आएगा. Change color. Oh yeah. Highlight on the way. Dyed it, now it's kind of starting to fade. आएगा. Just a little bit of 2-3 ready highlights. Had a late arrival due to his medical issue, which is now, fortunately, mostly cleared up for him. Among Us YT पे हाँ Among Us अगर हुआ तो मैं नया stream चालू करूँगा तब YT पे कर लूँगा. If anything, I mean, this just speaks to the potential that the entire VCT Pacific teams, all these teams, what they have to offer. Dude, it's really encouraging how deep already we're seeing. Curse करा दो भाई, comeback कराओ जल्दी भाई, secret भाई. Improving since lock-in, like we saw a detonation earlier 9-3 से a lot of 9-13. things to be excited about for this league already. We're only, on the second day. Here we go. Speaking of second कार ही कौन तोड़ रहा था वो? Team Secret trying to contest against this, but how do you deal with these walls of smokes upon smokes? Garnets just भाई लोग भी तो है ही नहीं ना. Sage will be able to find Jesse Vash's face. Envy pushing forward now. It's all बेचारा human shield बन के उसने plant करवाया उधर सोआ ने. This is that double अपनी बलि चढ़ाई है. A high tide gone, a toxic screen comes up, and Patty continues to find heads. क्या? Classic से 3 मार गया. Off of that classic, Envy is the only one left alive. A simple peek and Cruz instantly flicks over. LKC हो गया तो. That instinct. Nasty shooting with that classic. I'd love to see a replay from his angle on that, but good lord. That is a huge pistol round win now for Talon. That confirms both pistols on this map. I like what Jesse did here, but okay, we do have this from Patty's angle. Oh, the one-way. Oh, Patty. Oh, so clean. That one-way as well. Really impactful there for him, able to use it to his advantage, but चलो भाई चलो भाई secret throw कर रही है यार, बिना duelist खेल रही है भाई. You can't help but be enamored. I know, dude. Welcome home, Patty. Like he really feels comfortable like this. And of course, again, they're feeling themselves. They know they have to win. They know that Team Secret are on that eco, so they're just rushing onto this B site like it's free. The door is open, and Garnets is here to make this new B site his home. Firing away, the high tide drops, and they're just holding these angles. They know that Team Secret have to push out of these spots, especially coming from middle. I mean, you can see how valuable this comp is, with especially against ecos. Like एक बार 5 smoker खेलो. हाँ भाई पूरे मैप पे. हाँ भाई ठीक है भाई. 5 smoker है भी गेम में. Astra, Brim, Omen, Viper, Arbor. सब कुछ 5 है, बस Sentinel नहीं है. Sentinel 4 ही है. 5 की जरूरत है. ओ 4 Sentinel में से भी 2 तो यूजलेस है ऑनेस्टली अभी. Sentinel के नाम पे सेज को Sentinel गिनने लायक है नहीं, और चेंबर तो भाई कुछ भी गिनने लायक नहीं. वो अभी कोई कैटेगरी में नहीं बढ़ता है वो. एक टाइम पे वो ड्यूलिस्ट Sentinel सब कुछ था, अभी ना ड्यूलिस्ट रहा है ना Sentinel रहा है. बस प्लेयर रह गया वो, बस थ्रोअर रह गया वो. And he came through, in the pistol round, but now I remember that. I thought it was cool. Time baad. There's just so much potential that you can play off of
स्नैक्स हो गए क्या भाई? अबे मैं गिन रहा था बे कि 5 के कौन से 5 कैसे हुए? कौन से क्या 5? हाँ सेंटिनल 4 बाकी सब 5 या उससे ज्यादा निकल सेंटिनल आएगा फिर वही बे हाई टाइम अब तो बे चाहिए बट सुनने में ड्यूलिस्ट आएगा हाँ क्या कितने ड्यूलिस्ट निकालेंगे ऑलरेडी बहुत है Easy plant for Talon. As soon as the wall drops, though, oh my god! अबे ड्यूलिस्ट 6 बे वही 3 मार गया What? हाँ ड्यूलिस्ट तो बहुत हो गए वही तो A straight bullet catching Patty. Oh, and then a fourth. योरू रेना नियॉन जेट रेज He doesn't quite know it, but the entire side is clear. Cruz is all the way on the top boiler, dropping down. Just can't quite. और भी कोई रह गया ऐसा फील हो रहा है एस मार दिया 6 Envy. और वे एस मार दिया भाई Okay. I mean, Envy's been playing good here for Team Secret. I will say. Envy भाई का एस आ गया The bright spot is he's 21, 12, and 5, and Dude, he had a lot of bे multi-kill rounds in the first half that have at least kept Team Sentinel Secret आ रहा है next somewhat लोग in बोल this. रहे I won't say much. Sentinel आ रहा है क्या बात? That's the spark of light. That Team Secret. एक सेकंड मैं वॉशरूम गया That spray right एक there. सेकंड वॉशरूम गया Just gets a little bit lucky, but still. गिरना को भाई गिरना Able to, have the timing there, watching that rope diligently. Knowing the escape route of his opponent, perfectly prepared. Now Talon. Everybody's got rifles. Jeremy though with the bulldog. Half armor for Envy though. After that ace, that's gotta. He's got his null command. Yeah. So he's down. It's all good. That's just true. Stay alive long enough to make that work. Look at how much space they're giving to Map Talon. 3 हो रहा है भाई Everyone's playing so defensively. टीएस का वाइपर 2 किल पे है क्या बात है भाई काइस भाई तुम्हारे तो सपोर्टर बहुत दूर दूर तक है भाई क्या बोल रहे टीम सीक्रेट का वाइपर 2 किल पे तुम्हारे तो भाई बहुत लंबी दूर तक पहुंचे भाई इंटरनेशनल हाँ मोटिवेटर मैं सीएस खेल रहा हूं तेरे को पता है तभी मैं सोचूं तभी मैं सोचूं इतना शांत क्यों है कल डाउनलोड किया है मेरे को लगा अर्ली एक्सेस मिला रहेगा नहीं मिला क्यों मिलेगा तेरे को तेरे को क्यों मिलेगा क्यों मिलेगा मतलब क्यों मिलेगा मतलब व्हाई ब्रो वो क्रिएटर्स को नहीं मिलता सीएस का कैसा है कि वो रैंडमली मिलता है क्रिएटर्स भी खुद ले सकते जाके बट पता नहीं वो कैसा सीन है व्हाई ब्रो व्हाई रैंडमली ब्रो क्योंकि मेरे 5000 घंटे है सीएस में 5000 ही तो है हां ठीक है 5000 घंटे मतलब पता कितने दिन होते हैं ब्रो 5000 ही तो है And all of a sudden, the spike has been समझ dropped. लो Fox has to stick this plant unless he goes in for this 1v2, but no, क्यों करना not today. सीएस अभी भी टॉक्सिक ही है भाई 11-5. मजा आ रहा है Now we're seeing some signs of life here for वो तो है able to find 2 big आया था एक सीएस का खिलाड़ी Get back into this one. Rest is history. From Jesse. शॉक डेट से मारा था So what if हो गया? All right, well, it's the beginning. Stingers though, from Talon. They might be able to find momentum here. Yeah, might catch him a little off guard. We'll see. Of course, yeah, it's gonna be Team Secret playing that really defensive position again. Yeah, similar setup, right? That's kind of their game plan. मैं फर्स्ट टाइम खेला वैलोरेंट मेरे साथ खेलते हैं स्टिल बेटर देन काइस एंड बबलू कंबाइंड क्या बोल रहा है बिल्कुल बोल रहा आज फर्स्ट टाइम खेला वैलोरेंट मेरे साथ खेलते हैं मैं बोला बेटर देन काइस एंड बबलू कंबाइंड यही बातें तो बाद में याद आएंगी बराबर as he finds a third. We're down to a one-on-one, and what was supposed to be Team Secret's round, Envy now. भाई इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं कर रहा हूँ डिफ्यूज He's right around this wall. A bit of a null command confirms that he's nearby. ऊपर 2 bullets is all it takes. Goes off the zip line. बाप रे झूल के मारा है बे Special Forces Envy collects on this win, and a little bit of wind in their sails for Team Secret. No doubt. Certainly, Envy right now, the player of the map for Team Secret so far, no doubter. And
that's just another big round from him. But yeah, Talon's Patty Oh, ये comeback है क्या? 3 kills with this stinger. I mean, you can see why they wanted it back and why. कर दे, मैं तो बोल रहा हूँ कर ही दे आज. Once he was ready, he was right in here and just all over the place with this stinger, outdoing opponents with better guns. Now Jesse had a little bit of a भाई ये rope पर broken है बे. Rope पे बहुत stable aim रहता है. Kind of lose out of a long range duel with his Vandal, but rope वाला feeling नहीं आता. झूलते झूलते मार रहा है बे. Even the best have ओए last हो गए सब मार्क. 4 के 4 मार्क हुए. Of what the strength is of their opponents. Right now, Envy trying to get some help, trying to back up. Talon setting up behind this toxic screen. Spot though on the top, they hear the dash and they start spraying it. Oh, Hunter Screw popped. कहाँ मार रहा है? Just to catch him as well, and actually tags 2 of them. But here comes Jesse. ये क्या बॉल है? उसको अटका दिया अपने बंदे को. पागल है क्या? Jerry a little bit of an interesting wall, but whatever it is, मर भी गया लो. out of this one with the पीछे अपने बंदे को अटका दिया अलग. Major thing. Cruz even has his Viper Spit, just saving it for a future round, I believe, because he doesn't need or doesn't have the position to deploy it right now. In fact, Team Secret has to go in for these peaks. Team Secret trying to flush them out, and then here comes out the Viper Spit, giving them a little bit of a breathing room, and here comes Fox nice throw, off of the other side of Yellow. A triple kill off of the अरे chaos. क्या लास्ट मैच तक लेके जाने वाले हट बे. अब खत्म करो भाई जल्दी जल्दी. अब 12-6 से कम बैक मत करो. अभी खत्म करो. अगला चालू करो भाई प्लीज. Really nicely handled here by Talon on this post plant. I mean, you know, you can see that. भाई ब्रेक ना दो, सीधा चालू करो भाई. यहीं से तीसरा मैच चालू करो. हाँ भाई यहीं से कर दो. इसी राउंड से काउंट करना शुरू कर दो. ये दोनों सोवा मार रहे हैं. What a flick there. थर्ड शॉट बहुत अच्छा मारा है इसने सोवा ने. चलो भाई watching this. हाँ भाई. लो भाई हो गया. Take the blades out momentarily, but that just tells Talon they have time to readjust, regroup, and the एक लाइन बोलूँगा आपको. लाइन याद है क्या बोलना? कौन सी लाइन भाई? A quick 180. My God, Clint, my jaw is on the ground, and now. क्या हो गया शशि कुमार भाई? Here is that cove plant. Dubstep knowing not to overextend, but still the damage taken. अच्छी बात है खत्म करो. अरे क्यों मार रहा है? छोड़ दे. सीक्रेट भाई रहने देना भाई. Borkum time? Maybe. Picks up the Vandal. Has to deal with Garnets first. He has his teammates available to help him out. कर दो भाई खत्म यार. What he can too. The Cloudburst able to save. हाँ भाई चल तू ही है भाई. चल पैट भाई. Microflicks back to back. And it's nice. 1v1. साला. क्या बोरकम पागल. यार. Him come up big here for the side of Team Secret. Patty almost clutching one out. Patty has had a bunch. किधर देख रहा है तू? ट्विच पे देख रहा है क्या? हाँ ट्विच. It's like Envy on the other side. Patty Fast here and Furious at Twitch. 16 and 7. Great round here for Cruz though. Those 2 shots with that Vandal. Oh boy. This is absolutely nuts. Look at this. ये बोरकम को बोलो भाई मारना ही था. He's just so ready. तो भाई पहले मारता है. 2 किल पे क्यों बैठा था अब तक? तेरा ऐड नहीं आता क्या ट्विच पे? एक बार आया बस. अभी आ रहा है ना? अभी नहीं आ रहा. वो चालू करेगा तब आएगा शायद. A little bit of momentum, but it's still match point, and Team Secret has more to climb. 5 rounds just to make it overtime, right? This is nasty difficult for Team Secret. A lot more defenses here at B, as this has kind of been the pressure point that Talon is trying to use to end this map. So far, it's been kind of back and forth. A flash up and over. Jeremy's gonna peek off of it. Got a kill too. That's nice. अरे भाई जेरेमी भाई रहने दे. 12-7 है नहीं होएगा. Still controlling Yellow somewhat. करना ही है तो ओटी ले जाके जीता दे पर वरना टाइम पास मत कर भाई. देख भाई. He's gonna have that angle right around the सीधा थर्ड मैच लगा भाई. They hear this dash. They know it's going to be a B hit at this point, and I'm just waiting for the rotations to come through. Yeah, especially with Cruz out there towards mid, getting some info on this open space. He's just going for the backstab, maybe, but it's being watched. This is a huge duel. Borkum, Viper v Viper. It's so dangerous.
There's no rotation here, Quack. They're just going to go for it. 30 seconds left. They're going to have to commit at this point anyway. As soon as the toxic screen drops, and that's when they strike. The iron is hot. Garnet's now pushing past it, and he has his teammates, but Envy again! What? How does he do this? भाई क्या कर रहे हो यार? एनवी नहीं मान रहा भाई, एनवी नहीं रुकेगा भाई, ये नहीं मान रहा, ये नहीं रुक रहा भाई. 8 to 12. No way, man. Envy. Bro, one side मार रहा है वो बंदा एनवी. Magic. मारना ही था तो अटैक में मार के खत्म कर देता अब तक यार. ड्यूलिस्ट ने लिए बहुत ट्राई हार्ड लेना किया. भाई 26 मार दिया पर वो भाई. हाँ ना वही ना 26 मारा है. शॉट्स देगा भी रिप्ले. बाप रे. अरे रे रे रे. स्प्रे ट्रांसफर दिया है बे. Just can't help but time out by time out. ले लो by time out. Just a little fun fact of anything. Envy and Jeremy, obviously they're the younger players, but shout outs to the Filipino casters back home in the Philippines. This is what they told me. You know, Mika, Dax, Black and Blue. The way that Jeremy and Envy came onto Team Secret was because they were on a team called Hashira in 2021, and they beat Team Secret. चलो भाई comeback करना ही है तो जल्दी करो. OT ले जाओ. Hey, if your opponent's got some talent, why not snatch them up, you know? It works, and now you can see the value that they provide. No kidding. I mean, Envy on this KO is piloting it so well. I mean, you're seeing some good flashes to set up Jeremy there with that Bulldog. You know, some knives that get some good utility, get some good information. Doing all the things you'd want to see. And now he's got that ult. Dubstep has his lockdown. 2 huge pieces of utility for Team Secret to maybe not use this round because it's an eco, hopefully. Hopefully. If necessary, you can dig into that bag, but you'd love to save it for the next round. Try to push this 12-10. Team Secret are just looking for 4 more rounds. They might have some momentum now, but if you save those ultimates, you could find so much. And knife में tag होगा पीछे निकल लो. A lot of information confirmed towards garage or bottom mid. I like this. This time around, they're changing direction, and it is causing some disruption in Team Secret in those back lines. You can see it on the map that they haven't quite assessed. इनको पता लगा सोए नहीं अभी OT जाके हारेंगे फिर थर्ड मैच होगा. TLN might be able to get a plan. और OT भी थोड़ा लंबा कर रहा है 16. हाँ बे. 21-19 भाई. भाई बात का सर. वो दिन ऐसा हुआ था बैक टू बैक हम खेल रहे थे 2 गेम लगातार 21-19 तक गया. एक जीते एक हारे. तो डिप्रेशन हुआ ना. अल्टीमेटली लाइफ का 3 घंटा वेस्ट हुआ. प्लस होके उतना ही माइनस हो गया. They've all backed up behind 410, and there's so much cover. अरे there बाप is रे the टपली. reckoning that you're talking about, and that's going to be so अबे शेरिफ. annoying to work with. क्या? Is this going to be it? ये हो गया चलो. चलो खत्म 1 HP GG भाई. Thank you भाई. एक नंबर भाई शुक्रिया भाई. Thank you भाई. Thank you. राउंड जीत गए बे. Thank you. Well done. अब थर्ड मैच लगाओ नीचे ब्रेक भाई. Cut you off there, but I mean, you were just like, well, maybe भाई जब शेरिफ पे जीतना है तो गन क्यों ले रहे थे? निकाल ही लेते. They didn't even give Team Secret the opportunity to use any of their ults. They just took them out. Unbelievable play there from TLN in that last round. And Team Secret. ये गले में लेके जा रहे हैं बे माउस. Cut short the overtime. चोरी ओरी ना हो जाए बोलेगा. And they do force that map 3. They do. अंदर लेके माउस की आरती उतारेगा. भाई अगले गेम 30 किल चाहिए. I'm excited to get to see it for the first time here. यार क्या सीन में जल्दी खत्म करते हैं यार. हट बे. हाँ ना. अभी 8 बजेगा बे. 8 भी और अगर वो मैच लंबा गया तो और लंबा होगा. 8:30 भी बच सकता है. ऐसा पेपरएक्स ने क्या वैसा कर देते यार मजा. वही तो. Some people use fade to good effect, some don't. You know, Brimstone sometimes, Omen, Viper. That's what I love about that map. Fracture is such a dynamic place to play. But bringing it back to Icebox, though, I mean, this again, TLN, the improvement from their first map. Among Us के लिए अभी 10 लोग हुए कुल मिला के. Off of this double controller composition, the Viper, along with Harbor, and some of it not even just utility. It's just plays like these. Envy, of course, amazing, but Cruz, I think, was someone who stood out to me.
yes, Cruz looked crisp. He looked like he was calling a very good game. He had them on that last round. I mean, they were conditioning the side of Team Secret to just, you know, accept those B hits. You know, it's like if there was any pressure at B, TLN kept forcing the issue time after time after time, maybe 4 or 5 rounds. ये आजा मैच चलेगा जब आपस में डेथ मैच कर दो. B site, and then that round. कितना टाइम है? No. 10 मिनट तो लगेगा, 10 मिनट तो लगेगा. And then hightail it back, and it's part of that is Cruz guiding the ship through the middle of the map. He's the one watching and also killing people. Exactly. There's so much potential that we just have to wait and see what happens on Fracture, because these two teams are feeling fired up. So don't go away, excuse me. We will be back. Okay, hard हो जाएगा इसमें. We will be back. क्या बोला 8 बज जाएगा 20 मिनट में? 20 मिनट में 8 बज रहा है क्या भाई गाइस? गाइस भाई को बुलाओ. क्या खेलना है? डीगल, वैंडल, क्या खेलना है? कुछ जो मर्जी. Death match. Warm up. I'm back. In game off बताओ. शरीफ करते हैं क्या? पर फिर ये 2v1 हो गया ये तो. शरीफ Wash up, man. Keep fighting. शरीफ नहीं करते हैं. Rest is overrated. अच्छा डेथ मैच है ना, ठीक है. Fight. 2v1 ओपोनेंट में वाइपर क्यों है? नहीं डेथ मैच है. डेथ मैच में कैसे 2v1 वाइपर? वही तो मैं बोला, डेथ मैच बाद में देखा. बहरा है क्या? ठीक है. Sleep. अरे एक एचपी हो गया यार. मैं भाग रहा हूँ. मैं भाग रहा हूँ. इसको किल नहीं दूंगा मैं. मैं निकल लिया एमेन. गाइस मेरे को शॉट पे ढूंढ रहा है. अबे यार मैं वॉल बैंग डिंग दी थी इसने मेरे को. मैं 1 एचपी हूँ. मेरे को दौड़ा रहा था. अबे यार कहीं कूदने की जगह नहीं मिली यार. हेडशॉट मशीन. अबे हक दिया अबे पूरा. 6 बुलेट लेफ्ट राइट गया. यार. अरे यार. Goodbye. कहाँ पे हो भाई? थोड़ा आवाज देके खेलो प्लीज. ये ओनली मिड करना है, ओनली मिड. ये क्या होता है? किधर स्पॉन होगा उधर लड़ाई चालू तो होगा ही. बात तो सही है. मैं थोड़ी वाइपर को जाने दूंगा इसे. ये बात भी से. कल का लगा दो. और दोनों मारे साथ. किधर हो? ये मेरे बाजू है. यार हेड नहीं पड़ रहे. ये क्या है भाई? कोई तरीका है? अबे भाई यार ये एक जगह खड़े रह के स्पैम भाई.
अरे यार पहला हेडशॉट नहीं लगा तो खत्म है गेम। हिलने डुलने में और नहीं लगता है बे। हिलने डुलने में नहीं लगता बे। खाया एक बॉडी। अरे रुक जा यार, दोनों एक एक बॉडी खाए यार। अरे एक एक बॉडी में क्या ही उखाड़ लेगा। अरे वही तो, एक पे फोकस करके मारता ना मैं, दोनों पीक आ गए। शॉट मारना यार, कहां है? ढूंढ रहा था। अरे भाई क्या साउंड तो दे दे भाई। अबे यार रेटिंग मारा। गोली नहीं फिर को मजा आएगा यार। नहीं कहाँ पे मिड मैं टॉप में हूँ। अरे यार गिरते गिरते मर गया यार। अबे हेडशॉट मारा। कोई बात नहीं। ये जब मैं जिगल ज्यादा देता हूँ, मेरे को लग रहा है रुक के मारना चाहिए मेरे को। अबे क्या कर उठक बैठक क्या कर रहा है भाई? और ऐसा मार रहा है भाई, ऐसा मार रहा है, कैसा हेडशॉट लगेगा फिर? अरे भाई रुक जा, हिल ले लो। अरे रुकना भाई चीटर। मेरा ही ले वो। अरे यार ये हाँ और ले हिल। पड़ गई। अरे यार 110 ने बहुत मरवाया है यार। रुकना। यस। how I feel. Oh my God, now. अबे यार ये मेरे को ऐसा कैसे टपली पड़ रहा है? अरे नहीं पड़ा। मैं क्राउच कर गया, अभी मैं समझ आ गया। तू मेरे सामने क्राउच मत कर, मेरा आधे से ज्यादा एम उधर रहता है शोल्डर। गंदा प्लेयर है यार। हाँ मेरे सामने क्राउच सीधा डेथ है। तू क्यों बैठ रहा है पर? मेरे टाइम लेके मारा है साला। कौन दे रहा है? हाँ ना बे। बी के किधर हो? अरे दूर स्पॉन दे रहा है। बी तो मैं क्या मारते। रुक गाइस। अरे यार इसको भी मारना था। गलत तो हो रहा है भाई। किल के हिसाब से असिस्ट बढ़ रहे हैं मेरे यार। दोनों मार रहे हो। अरे यार थैंक्स फॉर द सपोर्ट। स्नैक चल के आ रहा था बट मैंने उसको पहले सुन लिया था। नहीं ये पहला शॉट मिस होता है मतलब जीजी है। हां एटलीस्ट बॉडी तो भी पड़ना चाहिए पहला। लूज रेंज पहला शॉट मिस मतलब यू आर डेड। अबे यार स्नैक्स रुकता है यार, ये खाया था मेरा। अरे क्राउच करके बैठा है। दर्द दे दिया अबे। कहां हो? ये शॉट है वो। अरे यार एक गोली दोनों एक गोली के दोनों एक गोली है। हंसी आ रही थी मेरे को यार। अरे यार एक के वॉल बैंग यार, 2 शॉट का है। स्नैक्स आगे मत जा गाइस, रुक जा यार। मैंने पीक ही नहीं लिया। अब तो पर तूने साउंड दे दिया, मेरे को पीछे देखना पड़ गया, साइड से खा गया मैं। दोनों को टपली पड़ी यार। 145 मैं नहीं खेल रहा यार। कहां है? 10 मार्केट से आ रहा है, मिड से आ रहा है। गलत हुआ। नहीं रे बहुत टाइम लिया मारने। हट। अबे यार। अरे यार अबे बॉडी लगा पर तीसरा बॉडी नहीं लगा। ये क्या लॉजिक है बे? Ah be abi. जो
देखा क्या? ये क्या स्पॉन है? मिनी मैप दिखता है लेफ्ट में, वो दिख एकदम एग्जैक्ट 1 minute remaining. एग्जैक्ट स्नैक्स जीत जाएगा इजीली। अरे शॉट यार जीतने दे यार भाई फिर। मैं नहीं भाई पागल, मैं हारने थोड़ी बैठा हूँ। तू तो बहुत दूर है। हाँ तो मतलब क्या है, किल देने थोड़ी बैठा हूँ मैं। मेरा असिस्ट किल में काउंट होगा। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। अरे मेरे को लगा वॉलबैंक पड़ेगा। 30 seconds left. अरे यार वॉक करके आ रहा है एक। ये आई मिड वॉक करके आ रहा है पक्का। ए शॉट है। अबे यार 3 बॉडी खाया है भाई, क्या नसीब है। वॉल बैंक खाया है 128। 12 सेकंड है मेरे पास। 10 seconds. ए भाई 110 है भाई। वो भी चुराया। मार दिया उसको। अबे यार जीत गया 2 सेकंड। ले यार और शॉट। ईडी के हिसाब से भी स्नैक्स ही जीता है। Better than being at the bottom. वैंडल टाइम लेट्स गो। आओ चालू नहीं हुआ ना मैच। देखने दे। हो भी गया तो मैं तो बोलता हूँ खेल लेते एक। नहीं चालू नहीं हुआ। लगाओ स्टार्ट। कौन है लीडर? मैं मार्शल क्या करना है? ऑफ करना है कि क्या करना है? मार्शल करेगा। ऑपिंग में नहीं, हार्ड स्कोप होगा। वैंडल या फैंटम जो चलाना चलो। वैंडल या फैंटम ठीक है जो चलाना चलो। Death match. Give you that now. Warm up. वैंडल फिर भी कॉन्फिडेंस है मेरे को थोड़ा। You want me serious? You got it. आओ भाई। आ जाओ भाई। Fight. Don't hold back. एक ए शॉट है, एक मिड मार्केट है। और मैं हाई मिड हूँ। ये क्या स्पॉन है भाई? ये कैसा स्पॉन हुआ भाई? अरे यार मारा। No, you don't. You lose the head, then you lose your head. अबे ए रुक, हिल लेने दे भाई। चीटिंग है स्नैक्स, टांगों पे मार के किल ले रहा है यार। ए भाई ऐसे बैठ मत यार प्लीज, आवाज दे भाई, ऐसे डरा मत। नहीं मेरे को अबे मिड पे 2 सेकंड कंफ्यूज हो गया मैं, कौन सा वाला मारा, राइट वाला लेफ्ट वाला। दो तरफ से गोली चली, फिर दोनों ही साइलेंट हो गए। अरे गंदे वाइपर। क्या मैं तो भाई पूरा आवाज दे के आ रहा हूँ, क्या बोल रहा है भाई? यार दो तरफ से आ रहे हो यार, एक एक करके आओ। ऐसा सैंडविच किया है। अबे मैं मैप पे दिखा रहेगा पक्का, सब फ्री फायर पे मारा है। नहीं मैं यस। अरे नहीं यार, कौन से गांव में स्पॉन करवा रहा है बे? ये शॉट 1 मिनट है। अरे छीन है वाइपर, ये क्या था भाई? तू अभी इधर भाग के आया हूं मैं, इस शॉट तूने पीछे विंडो तोड़ा तो पीछे देखा मैं, उतने में आ गया तू भाग के। वे नहीं मार पा रहा वे, लिटरली हेडशॉट छी। और टाइम ओए वॉल बैक कर तू। गंदा साउंड ले रहा है। दिखता है दोनों गंदे प्लेयर। ए साला बहुत गंदा मारा भाई को तेरे को। अबे यार ही ले रहा था। कहाँ भाई? भाई डबली पड़ा है। अरे यार ये चीटिंग कर रहा है यार। Phantom. Target down. Phantom is not a good choice of weapon. अरे 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 क्या? कुछ भी भाई, बाबूरा वाला स्प्रे मारा इसने। नहीं वो कंट्रोल होता है मेरे से, ठीक है।
Come on, give me that. स्टिकर कौन डाला बे बी साइड पे? यार बस भाई यही डाल रहा है स्नैक्स। स्टिकर डाल रहा है। Put down. भाई पर अभी ओ भाई ये कैसे बच गया मैं? 2 गोली का था। यार तू उधर था। हाँ तो उधर था मतलब क्या आवाज दे के तो आ रहा हूँ, उधर था क्या होता है? मेरे को बहुत क्लोज है तू। यार कितनी देर देखा वहाँ पे? यार ये वाइपर फ्री फायर दे रहा है। तो इसको अभी दिखाता हूँ मैं फ्री फायर ऐसा ये कोई फ्री फायर तो नहीं था, ठीक है? फ्री फायर है, तू एंगल पे आया है देख। 3-4 बार फ्री फायर दिया ऐसे तो। तू दे रहा था गंदे प्लेयर। ए रुक जा। चीप प्लेयर का ही साउंड सुन लिया मैंने तेरा, मेरे को पता चल गया तू ऐसे ही कुछ। मेरे को भी पता है, मेरे को लगा नहीं था तू मारेगा मेरे को क्राउच पे। हाल नहीं कर रहा मरा। स्नैक्स पीछे देख रहा है, इतना वॉक नहीं करेगा। इसका नीचे क्यों भाई, क्या हो गया? किल फीड दिख डर डर के खेल रहा है। अबे साला That's done. Bye. One second. Embarrassing. ए साला क्लोज से निकला, मेरे को लगा पीछे है। मैं तो होप छोड़ दिया, मैं जय माता दी वाला स्प्रे दिया था बीच में। ओह शिट, ये क्या लग गया? यार रनर गल मारा मैं। ओह शिट भाई, ये क्या शॉट पड़ गया बे? आ जाओ। अरे तेरी भाई, ये क्या डबल हेडशॉट मार रहा है? मेरे को नहीं होगा। इम्बॉट लगा क्या है? इम्बॉट लगा क्या है? अरे 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 वो था काई से, क्या कर रहा है? उसे हेडशॉट मार लिया। कहाँ हो, कहाँ हो? यार नहीं भी। अरे 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 हैंडल नहीं चल रहा है। कमबैक कर रहा है भाई, स्नैक्स कमबैक कर रहा है। ओ यार भाई कमबैक। अरे छी 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 छी। एस पीछे स्नैक्स भाई, पीछे। पूरा रीलोड। अरे खोपड़ी ने जिक्र करी। वही ट्राई कर रहा था मैं। ओ भाई 136 खाया था यार स्नैक्स, और ये भी लो है। फाइनली वाइड देके मारना है। यार रुक जा यार, रील लेने दे भाई। अबे ये क्या है? आके हील उठाया वे, 1 एचपी था मैं गाइस। इसका डिंक आया हुआ था मैं। 10 kills remaining. अरे 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 Target down. अबे यार एडीएस वाला गन है ही नहीं। फैंटम ट्राई करते हुए। ए बीमेन कौन लॉक कर रहा है?
वॉक थोड़ी कर रहा, भाग भाग के जा रहा हूं। अच्छा पीछे गया तो ये क्या ये इतना जल्दी कैसे स्पॉन हो सकता है भाई ये? 1 minute remaining. One shot. यार 1 सेकंड भाई हंस लेने दे। फक क्या पूरा 30 गोली सब मार यार क्या? अबे यार ओ भाई 30 seconds left. अरे 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 124 मैं जा हील ले। एक गोली का था काइसो तेरे गंदा है में तेरा। 5 kills remaining. अब मेरे को क्यों हेड पे मार रहा है साले? इसको एक टांग पे नहीं मार पाया तू? वो क्राउच कर दे जा रहा था। अरे पागल है क्या भाई? 10 seconds left. ये मेरा किल है। अरे यार मैं चलो गया। भाई इधर स्पॉन लिया भाई। भाई आओ मैच में आओ चालू हो गया रे बाबा। Utility to get some big damage, get some boost. 3-0 चल रहा है टीम से। Having some decent success with those, so maybe they can convert a go here. Careful here. ज्यादा एंजॉयमेंट हो गया। Maybe. But look at how Jesse Bash वो चलते एटीट्यूड बे। taking a couple of shots, but still okay. Good to go onto the A site, and everyone is prepared for this. Jit boys getting that first dink in the head. Sushi up top, tries to flick back and forth. It's gonna be a little bit of an awkward angle too, but they're managed. भाई क्या मार रही है? सबको कुछ भी मार रहा है। गुस्से में अभी वो 33 इयर्स का है, देखो पता है? हैं? हाँ वो जेसी नाम है ना, उसको 33 इयर्स का है अभी। इसके आधे उम्र के लोग खेल रहे हैं। हाँ मर्सी की उम्र का बंदा। Jesse barely able to get to the other side of that rope. I heard you gritting your teeth, and I was like, बड़ा एहसान बड़ा दिया गाइस। yeah, right, exactly, dude. But just barely. Jesse gets back, his gun down, and right on the head. Great precision. बीएम कर रहा है। ओ भाई ये क्या कुछ भी मारा है सबको बे। शॉट कुछ भी मार दिया। अबे ऊपर भी कुछ भी मारा है हेवन पे जो रैंडम स्पैम मारा है। Through that breach wall to set up his teammate to at least get a kill. You're seeing a little bit of और coordination बड़ा here from Talon, of course, with the gun disadvantage, but now Garnett's with the op here on the Neon. Orbital Strike and Rolling Thunder as well for Talon. A lot of really big substitute लाया है, सुशी बॉय को लाया है। Outside of this sky पहले नहीं रहता क्या सुशी बॉय? he's able to TLN find frags. भाई नियॉन ने क्या ऑफ कर रहा है? But it certainly does block off A main. If you're Talon, you're happy. If you're Team Secret, you're not quite sure how you want to approach this, because A side doesn't seem so viable. Talon क्यों happy भाई? 0-4 हार रहे हैं। Precisely. And you can see they're rotating away because they don't want to deal with that op. They don't kill मिला feel happy। like I think right now maybe they don't have a plan जैसे for सिडवाई that. का You don't फ्रेंड see है a ऐसा lot of बोले ops in सिडवाई the from hands of CS Beyond on CS this days। map too often. So that definitely was a nice kind of curveball here that Talon is throwing that हो has सकता caught मतलब। Team Secret a little bit off guard, forced out a rotation. Still though, the numbers are pretty even because I can see now that Talon's floating around there. Sushi Boys was flirting with the idea of cutting through spawn. Talon are kind of reading this as well, though. They know it's possibly going to be a B hit, so 30 seconds 3 left. players hovering around this one spot by defender spawn. But look at how Jeremy deals with this, just pushing past the Sky Smoke, finding Fox, dealing with that anti-plant utility, and then the orbital strike from above. Spike's still planted, so that's good. You got Dubstep trying to do what he can all the way up by Arcade, but I don't know if that's going to be enough. The rest of them starting to push on through now. As soon as they get control over the site, it's going to be high time for Dubstep and Borkup to wake up. An orbital strike of his own! He sends it down, buys time for his teammate to get into position too. Garnet's forced to take the duel. It's down to 1v2. Dubstep! He is able to buy time. He's able to dance back and forth. गोल घूम रहा पागल। Jit boys
going to stick it because that's the only thing he can do, but भाई पर ये लोग मेरे को समझ नहीं आता है जब जो एक्सपेक्टेड है वो चीज क्यों कर रहा है 1v1 में सामने वाला यही सोचेगा कि पहला स्टिक नहीं कर रहा तो पहले पे कर लेता अगर वो तो हाफ का एडवांटेज मिल जाता है 2 बार फेक किया नहीं करते हाँ वही नहीं करते पता नहीं You know, you've got this rolling thunder for the side of Team Secret that kind of opens up some space for them. Sure, you take Jesse down, but you can see here, it's just all hands on deck. Jeremy catches a player down in the sewers, and dubstep all over this round. Borkum doing a great job buying some time for Garnets. But dubstep, that wily veteran, able to play that to near perfection for his team, and this is going to force a quick इंडिया में पहले हाफ कर देते फिर सोचते क्या करना fast so far. वो ये एक्चुअली सही चीज है एक तरीके से रिस्की है पर काफी एडवांटेज मिल जाता अगर हाफ कर देता हो तो Yeah, man. You know, it's these tiny things that happen with how Talon are trying to play off this defense. It is Fracture after all, so there's so many points on the map to look out for that sometimes off of that operator play, you're thinking, okay, I'm reading this right, I can rotate onto B, but the timing at which Team Secret actually shows up on the B side is something that they weren't quite expecting, and I think that's something that caught Fox off guard, especially with that Sky Smoke and the way that Jeremy pushed past it. Team Secret are surprising. Keyboard dekh raha hai iska? Yeah, no, you're absolutely keyboard right. Keyboard dekha na kya light maar raha tha? To make matters worse, you invested some big ults yourself as Talon into that round. You used that orbital strike, and you still couldn't get the job done. Of course, Dubstep having that neural theft was huge at the end of that. He was able to really keep track of his opponent, force that ult, proving some value. Now they're going to get really aggressive. Oh, God. Oh, God. Bro, what the fuck? Well, you're right. I'm out of words, Clint. I know it's my job. It's our job, but look at how this is just playing out. They're beating into each other. And, of course, Team Secret with the firepower are able to just, I mean, chop them up, put them in the stew, chew it in your mouth. 6-0. Jit Boys able to find one frag, but that's all he gets. Yeah, pretty expected stuff there in a way. You know, teams get aggressive on the ecos, you know, and so it didn't fool Borkum or Jeremy too much at all, and they're able to just kind of. अच्छी बात है 13-0 कर दो मैं तो बोलता हूँ हाँ ना जल्दी खत्म करो यार वैलो खेलना है यार good energy. Yeah, I'm 6-0. Yeah. Laughs. I heard some laughs in there of that. You know, it's. I feel like it's now or never for Talon. Because if you don't find a round right now, you're just going to be off another eco, and then you buy up again. At that point, what? It's going to be maybe 8-0. Yeah. Likely 7-0. Oh, God. Here we go. Oh, boy. Got the तो ये तो जीजिए ब्रो खत्म करो भाई सरेंडर कर दो भाई तोड़ रहे हैं ये तो तोड़ रहे ब्रो क्या इंटर बना रहे देखना घुस के ये देख ये तो पागल ये तो स्पैम में ही मारे जा रहे हैं पागल हो गया ये हाँ हर किल स्पैम में मार रहा है He says he doesn't like to eat sushi. That is tragic. क्या ही मारेगा यहाँ से ये इस मार दिया तो भाई. Unfortunately, not quite able to strafe his way out of this one. Not to mention Jesse was just right around the back. That's I think he was looking for the knife. Yeah, I think he was. They want another one. They भाई राउंड जीत के वापस तो फिर तो उनका बाय नहीं है ये तो 9-0 तक पहुंच गया. It is surprising. That is something that definitely was. That was probably the most controversial take ever. Yeah, exactly. The most surprising thing for me of this entire year. Well, no, that's not true. Cloud9. That was the most surprising. But outside of that, Sushi Boy is not liking sushi, which is tragic in many ways. First of all, great name, Sushi Boys. This time, इस बार तोड़ा है bro, इस बार तोड़ा है. A sudden triple kill out of nowhere. He's just in a position for it. And Team Secret kind of peeking into him one-on-one. बोला बस हो गया भाई, तुमसे हो नहीं रहा है, मैं करता हूँ. We're back to a 4-on-2. यही बोल के आया होगा. तो जी राउंड भी जीत गए तो 2v5 सैड हो जाएगा फिर तो होपलेस सीन हो जाएगा भाई. बाकी किसी का हो ना हो, फॉक्स का होपलेस सीन हो जाएगा. बोले मैं नहीं खेल रहा भाई. तुम्हारे लिए 3 मार दिए. रो देगा वो तो सही. Third round in a row they fought over the exit of arcade there. I mean it's just absolutely insane. Chaotic if anything. And हो सकता है भाई. ये में हो जाएंगे first week of April. Peeking outside most probably. Dish.
now slowly moving up front. Of course, though, it's going to be Sushi 13-0. Boys as well as Jit Boys expecting this push. होगा या नहीं? I don't know if this Nightfall is going to help all that much. Maybe only towards defender spawn, but you have to deal with Sushi. He's been sitting on site. He's not worried. Look at how he's jumping around the stairs, going back and forth. Oh भाई निकाल लिया सही में, क्या कर रहे हैं? You have to stick with that. 2v5 से 2v2, 2v1, 1v1. Able to find this one-on-one. And then the rolling thunder. GG, bro. And he's not able to deal with this. 2v5 again. 2v5 हारे. I mean, what in the world is going on right now? टूट चुके लो अंदर से. Well. अंदर से टूट चुके भाई वो. Give up सीधा. I mean, just look at this. बढ़िया मारे थे बे तीनों ही shots. वो flash नहीं होता चौथा भी ले जाता वो. Finally, it takes a flash and a swing from Envy to finish the job. Then Jesse gets the long range pick. There's all भाई whiff कर रहे बे और कुछ नहीं. ये वाला तो उसका kill होना था. वो जो top side बैठा था उसका तो kill होना था ये. ओ यार. Surrender का option है क्या भाई? 8-0. We kind of called it a little. Yeah. Surrender करके अगला शुरू करो भाई. 9-0 Clinton. रैंक मैच समझ के वो नहीं भाई आपकी टीम में गंदे अपोनेंट है मतलब गंदे टीममेट है हां भाई सरेंडर इसका लग रहा है एंट्री नहीं दिला पा रहे भाई डिफेंड नहीं हो रहा है क्या नाम उसका फ्लॉक्स क्या नाम उसका फॉक्स बोलेगा मेरे को ड्यूरेशन देने नहीं दिया हां भाई साला ये नहीं और ओ भाई मारा मैं still on one finds the headshot. Jesse Bash though gonna get one of his own. Borkum here. Trying to hold the angle and he's got it. भाई कहाँ बैठा है भाई? अरे बाप रे deleted. नहीं जीतेंगे फिर भी नहीं जीतेंगे. Orbital strike just to melt everything away. What a shot from Cruz though to take that Jeremy's ult out. I mean, talent or Team Secret, excuse me, might as well just throw their ults. You know, every round. Right. They're just so far ahead, they might as well just try to cycle the ult, see if they can get him in one more time. Who cares? The ecos doesn't matter. You're so far ahead, you might as well just keep getting more ahead. You know, it's the old Artosis saying, when you're ahead, get more ahead. That's true. You gotta stay streets ऑफ लगी अब देखते हैं फिर होता है क्या. Otherwise, you're streets behind. Exactly. 13-0 ended. Yeah, I'm a community fan. I get it. Nice. Hopelessing लग रहा है. I don't know. This is like Envy and Jeremy in the morning, पर going drop straight पे into main. Cruz trying to counter this, but I don't like that he's doing it as a controller. You have the utility. You're supposed to sit behind. 5 man भी tough देते थे. Exactly. Up on top of drop. He has an operator. If he doesn't make use of it, his position is weakened. That operator loses value in a retake. A rolling thunder pushes Team Secret back though, and here comes Garnets. Close range with an operator, an entry operator. Support from Jet Boys too. This might be their round. Sushi finds one more. Envy. Can you do this? I don't think so. यार 13-0. All right. There is a big, very important round here for Talon. If they can get two more together, 9-3 curse, guys. 9-3 curse. Half, a potential for finding some success on the other side of the point, and they're on the attacker side again, like you talked about earlier. Very attacker side. मत करो comeback. छोड़ो यार, fanatic मत बनो, रहने दो. It's doable. Finals भी नहीं है ये तो. Somewhat comfortable out of it. So off the back of this rolling thunder, making some great plays. Garnets with just confidence. इसी ने 4 मारे. That I don't understand coming in there point blank with that op. I mean, and still finding value with it. I guess if Game Zimbabwe with a $10. क्या इसके बाद rank push और आज only watch party. Rank push नहीं आज actually Among Us का plan बन रहा है. But that would be a different stream. ये वाली end करनी पड़ेगी. Yeah, because it's an operator, right? ये exclusive stream रखनी है I guess. So इसके बाद stream में भी end करेंगे. नई stream चालू करेंगे. Among Us के time पे. Look at how they are pushing together this time though. Garnets finding dubstep. All they have to do is to collapse on the खेलने का मन तो था वैलो पर ये बहुत लंबा चल गया ना मैच तो Sushi Boys has gotten the spike carrier सीधा अब Among Us में आएंगे all that's left is going to be 9:30 Jesse. को He knows that there's someone on the other side. He's going to turn away from the flash. Daryl spotted, aftershock in his face. Cruz peeking out. 9-3 कर सब है 9-3 कर Talon are starting to find their stride. Yeah, but is it too late? Is it too little too late for the side of एक बार Talon? फॉर्म में आ जाता है Really good rounds here.
that the way they coordinated on that one with that utility at the end, you know, you can see now they're starting to get the communication. Now they're starting to get those protocols working together. Great recognition by Sushi here that somebody was going to try to push his lockdown to take it out. He's perfectly prepared for it. Yeah, like you said, that aftershock right into that swing from Cruz. It's a big kill, and now I'm starting to get a little bit encouraged that maybe we have a map on our hands. Maybe. Starting to fight back. I don't know how, but this operator is working. And again, it's positioned towards the A main angle. If he finds one, I don't know if Team Secret will continue to push off of it. The Prowler, though, is a little bit helpful. The relay bolt just to push them even further back. Team Secret, I think they're going to run back towards the B site. And this is something that we've kind of seen before. Oh, God. All right. I'm okay with this. Borkum is buying time here. Give this rotate a chance for the side of Team Secret. So Cruz is going to do his best. A good Molly. Dubstep's going to disrespect it and win. What? Impact! And just like that, that's the B site open. Everyone's rotating over from defender spawn. This is way too obvious. You've got the Nightfall. Can we turn this into a 10-2? We can't hear anything right now. Talon hiding. As soon as the smokes dissipate, they have to make a move, but surely they don't know Envy is on this off angle. One spray, maybe two. Borkum to help, and the operator gone. Fox has to make this work. He got the triple before. Can he do it again? Borkum's just waiting for him though. Low HP. And here's that tap, goes in for a bit of a spray. Fox, please get off of it. Oh, नहीं हुआ बे. Oh no. Fuck, half भी नहीं हो पाया. Half हो जाता तो हो जाता. The triple, but no time for the defuse. उसने लास्ट सेकंड पे छोड़ा बे पैनिक. पता नहीं. हाफ तक स्टिक कर रहा था. So confident, so clutch, and we've seen this so many times. इसमें तो हाफ कर ही देने का बे. मरने तो मरे मारेंगे. वैसे ही मरने वाला है. So darn well, they're so patient, they're so well timed. There's almost no mistakes. कुछ भी मार दिया. Once the spike is down, everybody knows their job. Everybody understands the timings and how to play these to perfection. And of course, you Rage quit करेगा भाई. Fox alt F4 सोच रहे. तेरी माँ की इंस्टॉल अगली बार करा. ये मेरे लॉबी में मत दिखो. Fox is doing all he can. He's put up some big multi-kill rounds, dude, but it's just not enough. I don't know that 10-2 is enough. Yeah, I don't know that 2 rounds is enough here for Talon. देखते देखो कौन है Among Us में. I would have liked to have seen Garnett's pop his ult. Sorry to just hit me that Garnett's had his ult in that last round and he never got it. Mortal, Millie, Joker, Akshu, Viper, Snacks, Mafia, Zeref, Ankita, Aman, Kash. Yeah, man. अब तक इतने हुए. Forever Palpatine, I don't know. हो जाएगा, लॉबी तो बन जाएगा. But I mean, no, you said it before. I'm gonna say it again. It's Team Secret. Maybe it's Warbirds working wonders for the team, but this is a well-oiled machine. Yeah, everyone's doing their job. Talon, on the other hand, somehow, you know, they managed to find a little bit, but towards this last round, when everyone from Team Secret knows their job and they're doing it perfectly, it's just so tough for Talon, to retake. Yeah, no, it is. You're absolutely correct. I mean, you can see that when there's confidence flowing for Team Secret, it looks like that it's hard to do anything against them because everybody's in the right place at the right time. Everybody's doing their job. You know, everybody knows how to play these situations to near perfection, and it's making it really, really difficult for Talon. You know, sure, they throw a few oddities at you every once in a while. You have some big moments and big plays here and there, but overall, it doesn't really affect the way that Team Secret last time plays. also कौन सी गेम के लिए last पता नहीं यार क्या नाम था उसका. You know, kind of in that round, just okay, Borkum buy time. The rest of us are going the other way. You know, and he successfully does it, and then at the end, he's there for the clutch on the backside. So that's beautiful. You know, bait and switch there from the side of Team Secret. So 13-2 easy. भाई मत करना कमबैक वाला सिस्टम. रहने दो टैलेंट भाई रहने दो. प्लीज भाई. हमारा सारा कमबैक लास्ट गेम से निकल गया है. रहने दो. आप आए सामने हमारे मैचिंग में. हाँ भाई आ जाओ भाई. I feel like that is done. So many people are going to be upset with their match predictions. I'm not. Yeah, I'm feeling good about my map prediction now. Same, buddy. Same. Going off the dish now. Talon trying to coordinate their pushes. It's going to be Garnet's
You gotta go in quick. Someone is here to play against you, and it's gonna be Jesse Vash. Instantly finding the head, and he's not worried at all. The Sky Smoke even pushing them back. Jit Boy's trying to push outside of A main, but I think he's discouraged now. There's just so many rotations onto the A side already. Cruz? दो तो लो है बे गया ये राउंड चलो जल्दी जल्दी 11-2 12-2 I don't know if this is gonna be enough. Sorry, you just you know come back नहीं भाई नहीं चाहिए Dude, come back I gotta real quick just give Jesse Vash a ton of credit. His awareness in that situation to know that there was gonna be the flank from Sushi and Jit Boys. Oh my god, dude. He just turns and just starts Among Us होगा guys 9:30 को Among Us होगा Jesse in this round. Yeah, he goes down, but he goes down swinging. That's 0 points. 30 seconds और या तो मुझे उसके पहले एक कॉफी की जरूरत होगी या एक पावर नैप. There's gonna be hell to pay. It beats Jeremy. One more left to go. Jit Boys flash them backwards. It's gonna be an easy headshot from Dubstep and his Ghost. This is devastating. No doubt. No doubt. That very well may be the map for certain now. It is a lot of nails that are aligned along the coffin. We've got the hammer in the hand, man. We're ready to seal the deal. I don't even know, like, do you force? Yes. No, you have to force. You have to force. Oh, no. 100%. I don't think so. I don't see any other way. There it is. Yep. Yeah. Absolutely right. But what kind of strat are you going to go for? Oh, भाई games evolver with the $100 US. If not bored by challenge streams, then one more. Since you enjoy WWE, challenge name is Defend Your Rank. Plan a 8-hour stream and let's say your highest rank is Immortal 1. You should stay Immortal 1 at the end of the stream. If you fall below Ascendant 3, you lose immediately. Overwhelmed with मतलब stream के end तक ना. अभी मेरा current rank Ascendant 1 है. अगर मैं सारे मैच 8 घंटे में भी जीतूँ ना, तभी Immortal 1 मुश्किल लग रहा है मेरे को, जो कि सारे जीतने नहीं वाला. पर ठीक है. इसके लिए या तो मुझे duo trio stack करना पड़ेगा. 5-man में तो पक्का नहीं होगा, ये मेरे को समझ आ गया. Everyone's kind of banged पर ये आज तो नहीं हो पाएगा यार. आज तो Among Us का ही प्लान है और आज लंबी स्ट्रीम जब तक आज और कल दोनों दिन वॉच पार्टी होने वाली है. तो तब यार स्ट्रीम लंबा वो 8 घंटे वाला स्ट्रीम तब हो नहीं पाएगा क्योंकि वॉच पार्टी में कितने देखो 5.5 घंटे निकले. तो ये स्ट्रीम हम प्लान करते हैं आज कल जी भाई बालो खोल के रखें, आ जाए रैंक खेलते हैं. कल के बाद क्योंकि कल शायद लास्ट है, उसके बाद अगला सीधा नेक्स्ट सैटरडे होगा. तो प्लान तो मस्त है. यस प्लान तो मस्त है. 8 घंटा लंबा वाइट स्ट्रीम होगा. हैवी रैंक पुश और उसके लिए एकदम सीरियस रैंक पुशर्स चाहिए होंगे जिनको मैं इन एडवांस बता के रखूंगा कि भाई रैंक पुश वाला स्ट्रीम है ये, रैंक पुल वाला नहीं. तो प्लीज सीरियस खेलें. वो आजकल सब थ्रो करने के मूड में ना, सब थ्रो करने के मूड में. अरे ये थ्रो कर रहा है, देखो ये भी थ्रोअर है, जेरेमी भी थ्रोअर, सब थ्रो करने के मूड में. बोला ना इनको खत्म नहीं करना है क्या यार? क्या बोला मैं, सब थ्रो करने के मूड में. ऐसे ही थ्रो होता है हमारा भी. देखो 10-2 वाला गेम आ रहे थे ऐसे ही, ऐसे ही 10-2 वाला गेम आ रहे थे, हम कमबैक हो गए. अरे खत्म ही नहीं कर रहा है यार इन लोग, क्या यार. बट यस गाइस, एक बार गेम्स इवॉल्वर ओपन इन द चैट में हो जाए. Look, Team Secret went for it, dude. हो जाए. Why not? You're up 12-2. Oh my kid. You might as well try a little bit of this. You know, a little bit of style. यार ये चैलेंज मेरे को थोड़े दिन पहले मिलता तो मैं इतना लंबा डी रैंक नहीं करा था. मैंने जिस दिन इमॉर्टल 1 से पहला डी रैंक हुआ मैंने होप छोड़ दिया. मैंने फिर ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, जो लंबा हारते गया, जो रेड कारपेट बनाते गया. इमॉर्टल 1 से असिस्टेंट होना आ गया. That I can think of that even close as DRX's versus WGS last year in stage 1 of VCT Korea. That's the only one that comes to mind up right now. वापस इमॉर्टल 1. 2-12.
Let's go. Char. Teams Evolver char. Comeback possibly. Talent certainly hasn't given up yet, and that's something that we can certainly respect. थोड़ा snacks के साथ gym हो जाता. देखो यार. You can see that Talent is shaken a bit. Now they're worried. Now they have to be worried that there's going to be some fast hits, some aggression from the side of Team Secret. But Team Secret is sort of gamble stacked over towards A 1-4, the pseudo gamble. Single Marshall. 8 has arrived. मेरी body बन रही है, वो भी सुमड़ी में बन रही है. तुम लोगों को पता नहीं चल रहा बस. Trust the process, guys. Trust the process. Now, but trying to be careful. ज़्यादा नहीं, बस 5-10 साल रुक जाओ बस. Peaks from Team Secret. And then they rotate over. बाथरूम में कौन सा वर्कआउट करते हो तुम? क्या ये क्या भाई? Without losing anybody else, and they do. So that's a big pickup here for. अरे Games Evolver भाई with another 100. भाई करना तो पड़ेगा लेकिन we'll sync offline, but come on, you know this is interesting one. Obviously, definitely करेंगे, ये वाला तो करेंगे. Plus audience को आपका 18+ मोड देखने मिलेगा hopefully. Jokes apart, but love that intensity when you are angry. Trust me, this will be an interesting stream. Definitely. उसके लिए स्ट्रीम पे अमन का होना बहुत जरूरी होगा फिर. वही एक ट्रिगरिंग फैक्टर है. मेरा अंदर का सारा फ्रस्ट्रेशन अमन के होने से निकल जाता है, पता नहीं. Just locking down this ankle. Oh, the lineup. भाई पर हाँ यार मजा आएगा. One headshot though, and does he have ये वाले में मजा आएगा. करेंगे definitely. This is game over. Finally भाई. अरे भाई इसको डिफ्यूज करने का इरादा नहीं है. बालो खेल रहे हो? नहीं अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके 9:30 को जाऊंगा सीधा. अरे मैं सोया नहीं हूँ ना यार. स्नैक्स मैं रात से सोया नहीं हूँ. मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक पावर नैप लेके आऊँ, वरना मैं सो नहीं पाएगा. हाँ. तुम खेल रहे हो? Somewhat of a fight, but the ideas just weren't quite there. The coordination not nearly as good as Team Secret's, and that's been the name of the game for them today. चलो मिलते हैं 9:30 को फिर. बाय बाय. पूरा मत सो जाना. नहीं मैं सोच रहा हूँ यार अब मैं सो या मैं कॉफी पी के आ जाऊँ. मैं एक काम करता हूँ, मैं डिनर करके आता हूँ. ना कॉफी ना सोना, हम खा के आते हैं. 17 and 10 for Jesse Bash. गुड आइडिया. You know, Team Secret, the old boys. पक्का पूरा सो जाओगे? नहीं यार वैसे तो मतलब बोल के सोऊंगा ना मम्मी को कि उठा देना, तो वैसे तो नहीं सोऊंगा. I know he is. I'm happy. The desk as well. Yeah. डिनर करोगे तो सो जाओगे. हाँ भाई ये बात भी है. पेट में खाना जाते ही हैवी नींद आता है फिर. They're the only, team with the players in their 30s. क्या किया जाए? 30s, so डिसाइड करना पड़ेगा. देखते हैं. Yes. आएंगे पर अभी We're in the same tribe. आते हैं 9:30 को. कितना 1.5 घंटा बचा है? 8 बज रहे ना. 9:30 तक आते हैं. आज लॉबी भी बन गया अमंग अस का. हो गए 12-14 लोग तो हो ही गए. 7-8 आवर्स का पावर नैप. नहीं 1 घंटा आ जाएंगे. पावर नैप प्लस कॉफी आफ्टर वेकिंग अप ना तो थोड़ा ज्यादा हेवी हो जाएगा फिर, और रात में भी नींद नहीं आएगी. लेट नाइट वो हो जाएगा, क्योंकि कल फिर दिन में भी ये करना है, तो आज रात में एटलीस्ट जल्दी सोना है. तो आज अमंग अस के बाद हम सीधा लॉग आउट कर देंगे. हम लॉग आउट एंड फॉरगेट पासवर्ड. फिर कल लॉग इन करेंगे. ठीक है मिलते हैं गाइस 9:30. चलो. Going to be gunning not just for the playoffs but a spot. See you guys in an hour or so, hour and a half. Maybe. Hope you guys enjoyed. Bye bye. Take care. Good night. Go back to that drawing board. Certainly Games Evolver OP जाते जाते. But proving that there's so much See you. potential. Take care. Bye bye. In APAC at the very least, in Pacific, VCT Pacific. Sometimes, we saw these two teams trying to come up with some strategies of their own. It just so happened that they clashed at the right times, and we saw some crazy, crazy moments. We saw that a few times here today. I mean, even with DFM and oh yes, in our previous match at Paper Rex, we saw that too. So yeah, I mean, sometimes these teams are kind of
you know, trying to force things, trying to force the issue, and trying to make micro adaptations in those fights. Even we saw that with the one thing that comes to mind is Genfrey. You know, using his TP